वॉइस फेस्ट 2022 ये है आपका अपना इंडिया वॉइस फेस्ट, इंडियाज बिगेस्ट वॉइस इंडस्ट्री फेस्टिवल। और ये है इंडिया वॉइस फेस्ट का 5वां साल। एक सफर जो शुरू हुआ था 2018 में, एक मुहिम, एक उद्देश्य के साथ कि हम पूरी वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री को एकजुट लाएं, एकजुट करें और पूरे हिंदुस्तान भर के वॉइस एक्टिंग के चाहने वालों को इस कला के बारे में बताएं, उन्हें इस कला से जोड़ें। और आज 5 साल हो गए हैं और हजारों लोग इंडिया वॉइस फेस्ट से जुड़ चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज से लेकर उभरते हुए कलाकार सब इंडिया वॉइस फेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। एंड इट इज ऑल थैंक्स टू द लव दैट ऑल ऑफ यू हैव शावर्ड ऑन ऑल ऑफ अस। India Voice Fest is conceived and curated by yours truly. I am Darpan, produced and organized by Sugar Medias. A big thank you to my team at Sugar Medias for working tirelessly for months and months to bring this 7-day festival together. It is not just India's biggest voice industry festival, it is in every way. And correct me if I'm wrong, India Voice Fest is the world's biggest voice industry festival. The main sponsors for India Voice Fest 2022 are Sound and Vision Studios, the leading company, the pioneers of content localization in India, led by the charismatic and dynamic Mona Shetty. The associate sponsors are Audio Magic, led by Rajashri Sharma and Tarun Sharma, the dynamic duo who run this leading content localization company. Our proud supporters are C Sharp Recording Studio Pune and Mumbai, the Arc Audio Studio from Nasik, Petagaskar. In fact, Petagaskar is a lovely pet grooming salon, chain of salon run by the very charismatic Lisha Motwani, and Skylink Freight and Forwarders Limited, one of India's leading freight forwarding company run by the very dynamic Ronnie Govius. Thank you to all our sponsors, our partners, and thank you to the industry, to each and every one of you. Yes, all of you who are watching this stream right now, who will probably watch it in times to come, and even those who can't watch it, but I know they are loving us, they're supporting us, they're showering their blessing on us. Thank you everyone. आज का दिन, आज की शाम बहुत ज़्यादा ख़ास है, मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा ख़ास है, और वो क्यों, ये मैं कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगा। वैसे इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और हमारा पहला सेशन शुरू होने को है, जिसका नाम है ऑल अबाउट वोकल केयर। तो अगर आप एक वॉइस ओवर या डबिंग आर्टिस्ट हैं, या फिर अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम सब हैं क्योंकि हम सब बोलते हैं, तो आपको ये सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। वेयर आई विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर दीपा सुरवे, a fantastic ENT and voice specialist who will guide us through everything you need to know about voice. और उसके बाद 7 बजे we have a fantastic session called Mad About Voice Acting, where Mona Shetty will lead a panel of an all-women panel. In fact, अब इसे आप 4 more shots please भी कह सकते हैं, क्योंकि it's going to be 4 very, very hot and dynamic and talented and charismatic girls. Mona Shetty, Surbhi Javeri Vyas, Bhumika Jain and Pallavi Bharti. और 8 बजे we are going to have a very unique session called Scripting Your Way to Success, क्योंकि voice industry is not about the voiceover and dubbing artists. Voice industry is so much more. It is about the translators and transcreators who convert the content, who transcreate content from multiple languages, जिसको हम कहते हैं dubbed content. So this session is also about these script writers and translators. The voice industry is about writers, sound engineers, audio producers, people who work in production houses, recordists, supervisors, translators, audio producers. The list is endless. This is a huge industry, and I think we have just begun in showcasing the different facets of the industry. तो अब 1 मिनट का हम जो है वो लेते हैं अल्प विराम, and we'll just play a little promo. And on the other side, I'm going to see you with Dr. Deepa Surve. So hang in there.
Hello, everyone, and welcome to India Voice Fest 2022, India's biggest voice industry festival. और 3 साल बाद इस साल 11 दिसंबर को आवाजें फिर मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक अपने ग्रैंड फिनाले का टिकट नहीं लिया है तो indiavoicefest.com पर जाइए एंड गेट योर ग्रैंड फिनाले टिकट टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप आपने ये प्रोमो देखा, आप समझ ही गए हैं ये सेशन क्या है। इट इज कॉल्ड ऑल अबाउट वोकल केयर और मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपा सुरवे, जिन्हें मैं कुछ ही क्षणों में स्क्रीन पर लाऊंगा। पर उसके पहले लेट मी गिव यू अ क्विक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डॉक्टर दीपा सुरवे. Dr. Surve has done her post graduation in ENT from Nair Hospital in Mumbai, and for the last 17 years, she has been practicing at Sangvi Hospital, Lokhandwala in Andheri West. And she's also attached with Vimla Charitable Center and working in the field of larynx. And she has been guiding patients about vocal care and ear, nose, and throat related problems. One interesting thing and one interesting area that she specializes in is a vertigo. In fact, that is one of her expertise, and she has successfully treated patients who have been troubled with vertigo. And she's also done an advanced allergy course from Bangalore, which has helped her treat many patients who are suffering from allergy issues. एंड ये तो खैर उनका एक औपचारिक इंट्रोडक्शन हुआ, बट मेरे लिए वो क्यों बहुत ज्यादा खास हैं ये मैं आपको बताऊंगा कुछ ही क्षणों में. कैन वी हैव ऑन द स्क्रीन डॉक्टर दीपा सुरवे? Hi. Dr. Survey, good evening. How are you? Hello. Fine, fine. How are लवली. you, सो Darpamita? वेरी वेल, वेरी वेल. मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले हम ड्राई रन कर रहे थे. वी वर डूइंग अ टेक्निकल चेक विद डॉक्टर दीपा सुरवे एंड उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिससे मुझे यकीन हो गया कि जो एक जेन्युइन ईएनटी डॉक्टर होती हैं, यू कैन नेवर टेक द डॉक्टर आउट ऑफ द पर्सन. बिकॉज हम एक ड्राई रन कर रहे थे. वी वर डूइंग अ टेक्निकल चेक, फ्रेम वगैरह, ऑडियो वगैरह चेक कर रहे थे. एंड शी इज लाइक, दर्पण, आई होप यू केप्ट अ बॉटल ऑफ वाटर नेक्स्ट टू यू बिकॉज यू विल बी स्पीकिंग अ लॉट. So that, in a nutshell, is how caring, how genuine Dr. Deepa Surve is. So thank you, Dr. Surve, for joining us at India Voice Fest. I think your Thank you, thank you. I insights. am privileged actually. Oh, You that's gave very kind of me you. the opportunity to talk actually. Oh, please, Hame, I think we should be saying that because we are very privileged to have the opportunity to talk on the microphone. But Dr. Surve, I'm sure you'll agree with me that many of us, including me, have taken this opportunity to talk for granted, and we have suffered because of that. In fact, I was telling a minute back that you are very special to me, especially because I want to tell everyone that Dr. Surve also happens to be my, I don't know, personal ENT is a very privileged statement, but the ENT, my go-to ENT for any voice-related problem. And trust me, I am prone to having some or the other issue. और पिछले साल जो मेरा बहुत बड़ा किस्सा हो गया था, जहाँ पर I had to undergo a vocal operation, a vocal surgery, it was Dr. Surve who was the first one to flag it off as not a mere cough and cold. क्योंकि मैं अपने डिनाइल में रह रहा था. आई वॉज टेलिंग हर दैट नहीं, इट इज ओनली हल्का सा थ्रोट इन्फेक्शन है. बट फ्रॉम डे वन शी वॉज टेलिंग मी दैट इट इज मोर देन योर regular throat infection, and she was right, and she was the one who guided me and who played a very, very important role at that time. She was the hand of God for me, and she guided me through my treatment, and she ensured that I am hale and hearty, and I have the same stupid voice that I used to have before the issue. And so that is Dr. Surve, and that is exactly why I said she is extra special for me. But even for all her patients, she is known to be a very affectionate, very genuine, very caring, and very old school doctor. So today it is indeed our privilege to have her with us. Dr. Surve, I want to begin with the most important uh, issue, or the most important question that all of us have before we get into other details. Uh, why do voiceover artists, or since you deal with them, or singers, do Yeah. you agree that we take our voice for granted? That is because you normally don't know what there are pros and cons depending on how you use your voice. Uh, you feel voice is to be taken lightly as the other parts of the body, but that is the bread and butter, or you might say it is a passionate thing, and without which voiceover artists can't perform.
So that part of the body has to be taken care of utmost. which we do not really, because हम हमें लगता है कि यार चल तो रहा है सब ठीक है, चल रहा है, मगर पता नहीं चलता कब इश्यू हो जाता है. So you know, I And think that, yeah, somebody has to take them from the darkness to the light yeah. and enlighten them how to behave so that their career or whatever the passion is, they can pursue that to a maximum extent. I remember Agree you to that? telling this to me. I remember you telling this to me one when during one of the times that I came to you for a throat issue. You very clearly told me that my endeavor is, it is not something as shallow as just treating it. I want to ensure that you are able to exploit the potential of your voice to the fullest. And I think that is exactly what an ENT, or especially someone specializing in voice, should be looking at. So, Doctor, if we start from the very beginning, I am sure, including me till some time back, very few of us are actually aware about the anatomy of the voice, कि आवाज़ होती क्या है, क्योंकि हमारा इतना इम्पोर्टेंट औजार है, अपैरेटस है, इक्विपमेंट कहिए, या हमारी शरीर का बहुत अहम हिस्सा है. डू यू वांट टू टेक अस थ्रू व्हाट एग्जैक्टली इज द एनाटमी, द फिजिकलिटी ऑफ द वॉइस? Yes, yes, definitely. Most of the times people feel that voice जो आता है वो गले से ही आता है. बट हम लोग जो बात करते हैं, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे आवर बॉडी प्रेजेंट्स टू द अदर पीपल. लाइक द ब्रेन गिव्स कमांड and then only you start speaking. It includes the lungs, the larynx, the pharynx, nasal cavity, the tongue, and the lips. So the anatomy lies in the larynx. Larynx is actually, it lies in your neck. It is a specialized organ which produces the voice. Can I have the slides, please? Yes, you want to add the slides, ma'am? I think you can add the slides from your side. Yeah, they have come actually. Uh, you And I can think see I the can see some slides. questions. So, guys, whoever is writing a question, just I'm going to request that towards the end of the session, while Dr. Surve sets up the slides, towards the end of the session, we can take the questions. तो आप अभी अगर लिख देंगे ना सवाल, तो शायद मैं मिस आउट कर जाऊंगा, स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप 6:45 के आसपास आप सवाल लिख लीजिए. That would be nice. And there's a special call out for Dr. Jain Sampath, who is watching. Hello, Dr. Sampath. Okay, ma'am, please carry on. Yeah. So the larynx lies in the anterior part of the neck, and it is a tubular cavity which is connected to the windpipe lower down, and above it is connected to the pharynx, the tongue, the nasal cavity over here, and your mouth. Larynx is a specialized cavity which has three parts. The glottis, which is very important for everybody, it Okay. contains the vocal cords, and the जो हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं, तो Mhm. this is the vocal cords. Lower down it is the subglottis, and over here there are some mucus secreting glands which moisturize the vocal cords, and above there is this supraglottis, which is the area which contains the false vocal cords. These false vocal cords are also ligaments which are connected to the larynx, and they also help to seal off the laryngeal inlet when you eat. The Okay. epiglottis is lies just above, हम लोग जिसको परजीब बोलते हैं हिंदी में. फर्जी. परजीब, like what do you एपिग्लॉटिस say? तो हमको यही याद है, वो खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, माय नेम इज खान वाला, जो I नुक्ते के know. लिए काम आता है. No, it is actually a small muscular object ओके. or an organ, which is a cartilage, and it is attached to the larynx.
But the important part of epiglottis is that when you are swallowing the food, it just shuts off the laryngeal inlet so that it Correct. does not go into the windpipe. Your food does not go into the windpipe, and Yes. it goes directly into the esophagus. Fantastic. Coming to That the, makes it very clear. Perfect. yeah. The next slide, it contains the larynx. This Hmm. larynx has three cartilages. The Hmm. first is epiglottis, thyroid, and the cricoid. I won't go into the details, but many group of muscles are attached to these cartilages, Okay. and these group of muscles, they are important to us because they help in modulating your voice, and they Ah, help in shaping the vocal cords. okay. So they are important, and means if your vocal cord is lax, you will have a low pitch voice, and if your vocal cord is taut, you will have a shrilled voice. That I will explain Yeah, afterwards. I think that is something that we would like to understand a little better. Yeah. The next slide, I'll Okay. just, yeah, these are the two vocal cords. The Perfect. first one, this is the true vocal cords, and above over here, this is the vestibular fold, that is the false Okay. vocal cords. Okay. Okay. Over this is a laryngeal inlet that is called the glottis, Okay. and normally when you eat, this inlet is shut tight so that the food does not pass into the glottis or the Okay. trachea, sorry. Okay. And this is the anatomy of the larynx, like Okay. the muscles, and there are many vessels also they supply the blood. But the important part for general people is the nerve supply, which there are two nerves, that is the superior laryngeal nerve and the inferior laryngeal nerve, that is superior laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve. So the superior laryngeal nerve actually is it supplies it has two branches, and it supplies the muscles, and the sensory part is also there. Sensory part is much more important because if food goes into the larynx, you have a coughing reflex that is caused by this nerve, हाँ, sensory. कई बार वो खाना हम कहते हैं कि फूड पाइप विंड पाइप में चला गया और खांसी आ जाती है। पानी पीते वक्त भी कई बार ऐसा होता है। Yes, that is the करेक्ट। sensory nerve. The next nerve is the recurrent laryngeal nerve, which is which is supplies the muscles of ओके। the larynx, and which is very important because it comes from the chest. It has two nerves, the right and the ओके। left. And the left laryngeal nerve, it travels from the thorax. If by chance in the lungs, if there is some mass or some other problem like injury, then the muscles, the nerve is cut, then the paralysis happens of the vocal cords. Oh boy. Okay. 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 I'm sure when we talk about the vocal disorders, Yes. the common vocal Yeah. disorders that people suffer from these days, but the layman doesn't even know about it. कि Yes. इस तरह के vocal disorders होते हैं. I'm sure that time you will probably give us a Yes. little more Yes. detail Yes. about that. Yes. Okay. Yes. uh, this is about the anatomy of the larynx, सो हम actually. जब कहते हैं डॉक्टर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट जब हम जब कहते Yeah. हैं कि मैं एकदम मैं लेमैन की भाषा में अगर मैं पूछूं, हम कहते हैं कि आवाज़ पेट से आनी चाहिए, तो ज़्यादा गहरी आवाज़ आती है या ज़्यादा बेटर प्रोजेक्शन आता है, तो उसको अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएं कि ब्रीदिंग पैटर्न कितना इम्पोर्टेंट है स्पीच के लिए, और हाउ डज वन नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग, स्पेशली फॉर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. Yes. Yes. Definitely. Battery. Battery. Uh, the actually the breathing pattern, the voice production actually is uh, like
the sound production, how it happens. The sound production happens by multiple organs: the lungs, then the larynx, the pharynx, the nasal cavity, and the lips and the tongue. One second, I'll show you the next slide. Yeah, how is the voice created? Generally, there is the generator, which is the lungs, Okay. then the Oh, interesting. vibrator, So the that lungs is is. where it is generated. Okay. Yes, yes. The generator is the lungs where आप अगर when आप सोचो कि आप बात करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? आप सांस एक भर लेते हो and then you speak, you start Correct. speaking. So the Correct. air is filled into the lungs. The air just fills into the lungs, your vocal cords then get shut, and the Okay. air in the lungs, it presses the vocal cords from below, and then it comes out in gaps. So this air which comes out from the larynx is a crude sound. It is not an intellectual sound. Okay. This air then just passes from the lungs, the larynx, to the pharynx, and from the pharynx it goes to the nasal cavity. Okay. From the nasal cavity is the next step, which is the resonance, which gives Yeah. resonance. The air just Wow. circulates in your sinuses. Correct. If your sinuses are filled with mucus or polyps, the resonance will be dampened. If you blow in a vessel, okay, if you blow in a vessel, you will have a resonance of that air. But if you blow in a vessel filled with water, Correct. your resonance is dampened. Absolutely. What a Similar wonderful way, example. Yeah. What a wonderful example. yeah, similar way, the if your nose is filled with sinusitis or you have allergies, then this will have an impact on your voice. Of course. Yeah, ऑफ कोर्स and from व्हाट एन this, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन क्योंकि ये हम हमेशा ये हम देखते हैं कि जब गला जब कॉफ होता है या नाक नाक जिसको कहते हैं नाक जाम हो गया या सर्दी भरी है तो आवाज़ बैठ जाती है जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ बैठ गई है yeah, सो व्हाट यू आर सेइंग इज द रेजोनेंस गेट्स अफेक्टेड if you do not have a clear nasal cavity area because that is a very yes, important yes. chamber for the resonance to develop. Okay. Yes, yes. From there, then your tongue, it moves and your lips move and Of course. you articulate the speech and then you speak. Then Correct. it is an intelligent, or you can understand that speech. But the throw comes from your larynx and your Correct. lungs. So the Perfect. main important part is your lungs and building the strength. You said your question that breath control. So it comes from your lungs, and then that comes out from the larynx. ओके आई थिंक ये बड़ा अपने कमाल का एक आई थिंक अगर इसको समराइज करूँ तो हम जब हमेशा बात करते हैं कि ब्रीदिंग अगर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हिसाब से बात करूँ हम सब के हिसाब से सो आई थिंक बाय एक्सप्लेनिंग द एंटायर anatomy and the entire process of the physical creation of voice, I think one thing is very clear that the entire foundation of the voice is your breath. एंड कितना ज़रूरी है अपनी श्वास पर अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर काम करना क्योंकि लाइक यू मेंशन द लंग्स इज वेयर द वॉइस इज जनरेटेड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द जनरेटर और वहीं पर आप Yeah, श्वास yeah, भरते हैं और वही श्वास जितने प्रेशर से ऊपर आती है जितने डायनामिज्म्स के साथ ऊपर आती है और ऊपर आते वक्त आपके वोकल कॉर्ड्स को ये स्पर्ट्स में खोलती है और तब आपका एक फिजिकल yes, साउंड क्रिएट होता है एंड आई थिंक एक आपने yes. बड़ी कमाल की बात कही कि इंटेलिजेंट साउंड नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंस कहीं Yes, ना it कहीं is a मस हाँ वही crude मैं कह रहा हूँ कि voice. इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं मस्तिष्क से भी आती है कि हम सोचते हैं मैं कि हमको क्या क्या बोलना है कैसे बोलना है सॉरी टू इंटरप्ट, और एक ऑर्गन इन्वॉल्व है दर्पण जी, हम्म, दैट इज योर ईयर. हाँ ओके अगर अगर आपने देखा है कि जो बच्चे बचपन से दे आर हियरिंग प्रॉब्लम, दे हैव हियरिंग प्रॉब्लम और हियरिंग डेफिसिट है, दे कैनॉट स्पीक. So that is also one part.
if you hear, then only you can speak properly. Wow. Mhm. That Very is, interesting. yeah, whatever you are listening, then only you can form these syllables and articulate your speech. शायद द फनी थिंग इज डॉक्टर सुर्वे कि हम जब वॉइस ओवर्स की बात करते हैं और वॉइस ओवर ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम हम लोगों से यही कहते हैं कि इफ यू वांट टू स्पीक बेटर, लिसन बेटर, द मोर यू लिसन द Yes. बेटर। हम तो इसको मेडिकल टर्म्स में नहीं कहते हैं, बिकॉज हमारा दैट्स नॉट व्हाट वी स्पेशलाइज इन। वी स्पेशलाइज इन द क्रिएटिव transformation of your speech into something magical, into your voice into a magical element of speech। उसके लिए भी हम Yes. यही कहते हैं कि चाहे आपको भाषा सीखनी है तो सुनिए, अगर आपको मॉड्यूलेशन भी बेहतर करना है तो लिसन मोर। और आज आपने कहा कि मेडिकली भी the element of your ear is very, very critical to the element of your speech। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर आप सुन ही नहीं पाएंगे प्रॉपरली तो आप बात कैसे कर पाओगे? करेक्ट, करेक्ट। हाउ अमेजिंग, इट्स फनी बिकॉज तभी हम लोग कहते हैं ना कि लिसन मोर एंड स्पीक लेस, हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट इज सो अमेजिंग। हम यस हम यस। इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकली भी यही बात कहते हैं ना, सुनो, लिसन मोर स्पीक लेस। गणेश जी को इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं? ताकि ज्यादा सुने और कम बोले। तो ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इट इज सो अमेजिंग। वेरी मच। नाइस। नाउ फॉर द लैरिंग्स, अगर प्रॉब्लम देता है कभी, if your vocal cords or your voice it gives problem, then there are medical ways to detect that. हम लोग जल्दी से अगर किसी को प्रॉब्लम है गले का, तो अगर डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं तो डिटेक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रॉब्लम कैन बी डन बाय टू वेज। दैट इज द लैरिंगोस्कोपी, जैसे जिसको बोलते हैं दूरबीन से देखना। एंड अभी nowadays the laryngoscope is more advanced, that is the stroboscope, which is the recent advancement, जहाँ पे vibration of the vocal cords can be seen and early detection or the early formation of a polyp or a nodule can be detected, which is just starting to form, ओके। and the treatment can be done earliest possible, क्योंकि वो तो ये या टेल हाँ, मी। नहीं, नहीं, तो ये पॉलिप और या पॉलिप होता क्या है? पॉलिप या नोड्यूल? क्योंकि हम लोग बहुत सुनते हैं इसके बारे में। यस यस, पहले मैं आपको जस्ट एक वीडियो दिखा सकती हूँ। हाँ, दिस डू इज वी द हैव द वीडियो? एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स एंड दिस ओके, इज द स्ट्रोबोस्कोप। ओके, लेटेस्ट वन है जो विच हैज अ सिंक्रोनाइज्ड फ्लैशिंग लाइट to visualize the vocal fold vibration. Normally, in laryngoscope, we can only see the laryngoscope and what we can see on the vocal folds or ओके, surrounding area. But the stroboscope, it just catches the vibrations of the vocal folds, and where there is some problem in the vocal fold, there is loss of vibration. Can ओके, we have the video, please? ओके, डू वी हैव द वीडियो? आई थिंक वी हैवंट नहीं, गॉट द वीडियो, डॉक्टर सुरभि। no, you don't have the video. Yeah, we don't have the video. If you can send it as a WhatsApp to us, we'll immediately integrate it. Yeah, yeah. Okay. Just 1 second. I'll just see. Yeah, Or by that time, I'll speak about it. sure. So this, what we Yeah. are seeing, is this the vocal cord? What we are seeing, this image in front Yeah, of yeah. us? It is the vocal cord. It is the Okay, vocal cord, and the this is the stroboscopic image. This is the stroboscopic image, and okay. Okay. the सो एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएं कि स्ट्रोबोस्कोपी होती क्या है, कि उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि आजकल बहुत इट हैज बिकम अ वेरी कॉमन प्रोसीजर। yeah, it is a fiber optic scope which is स्कोप, अच्छा, passed एक पाइप, through. एक पतला सा पाइप होता है यस, बेसिकली। एक पतला सा पाइप रहता है जो नोज में से जाता है, हाँ, एंड इट वो
आपके वोकल कॉर्ड्स को आपको बोलना पड़ता है ई, एंड दैट इज कॉट ऑन द स्क्रीन, जहाँ करेक्ट, पे वाइब्रेशंस कैच किए जाते हैं, एंड दोज वाइब्रेशंस आर कैलकुलेटेड. सो अगर लॉस ऑफ वाइब्रेशन किसी एरिया में है तो वो कैच किया जाता है, एंड दैट इज डायग्नोस्ड एज वोकल फोल्ड, वोकल पॉलिप और नोड्यूल. करेक्ट. तो वो कैच किया जा सकता है. तो बेसिकली कहने की बात ये है कि अगर आपको कोई वोकल इश्यू है और अगर आप किसी ईएनटी के पास जाते हैं और अगर आपको सजेस्ट किया जाता है कि लैरिंगोस्कोपी या स्ट्रोबोस्कोपी कराएं, तो उससे आप मुकरिए मत, उससे हिचकिचाइए मत. और स्ट्रोबोस्कोपी का तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पर भी कई बार स्ट्रोबोस्कोपी हो चुकी है, तो डरने की कोई बात नहीं है. इट इज़ अ वेरी वेरी, एक पाइप होता है जो आपके इट नाक इज एन से आपके वोकल ओपीडी कॉर्ड्स तक. प्रोसीजर. हाँ, इट्स एन ओपीडी, ओपीडी इट्स एन प्रोसीजर. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आप इमीडिएटली जाके करवा सकते हैं. और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, इक्विपमेंट ऐसे आ गए हैं, ये एक पतला सा पाइप होता है जो आपके नाक से जाता है और आपके वोकल कॉर्ड तक जाता है, और वो उसके अंदर एक कैमरा होता है, आप समझ लीजिए, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो वो आपके वोकल कॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करता है, और जो डॉक्टर होते हैं उनको स्क्रीन पर दिखाई देता है और वाइब्रेशंस उनको दिखाई देते हैं, जैसा मैम ने कहा. सो स्ट्रोबोस्कोपी इज़ अ वेरी एडवांस्ड प्रोसेस जहाँ पर मेरे ख्याल से आपके वेन्स वगैरह, म्यूकस, वो सब आपका नोटिस हो जाता है ना मैम? Yes, इस yes, हाँ, yes, yes, करेक्ट, yes, करेक्ट, करेक्ट. yes, तो ये बहुत yes, इंपॉर्टेंट एक definitely. इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, बट इट इज़ द बेस्ट प्रोसीजर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग विथ योर वोकल कॉर्ड्स, एंड व्हाट कैन बी रॉन्ग विद इट इज़ व्हाट डॉक्टर सूर्य विल नाउ टेल यू, कि किस-किस तरह के वोकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. बिफोर आई कम Yes. टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि हमें कब, एक वॉइस आर्टिस्ट को कब एक वार्निंग बेल होनी चाहिए कि भई कुछ तो गड़बड़ है, कि ये मियरली थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है. आई विल कम टू दैट लेटर, बट इस वक्त डॉक्टर सुर्वे इज गोइंग टू टेल अस कि किस तरह के कॉमन वोकल डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल. यस मैम. Yes. Can I have this slide? Yeah. या. Yeah. These are the common disorders. This is the commonest in voiceover artists or the singers or the teachers. That is the vocal cord nodule. The vocal cord nodules are small bumps. If you can see this, यस. yeah, हाँ, this हाँ. is the small bump. Basically, this happens because of voice overuse, और बराबर से अगर केयर नहीं किया गया, वोकल हाइजीन नहीं किया गया, एंड आप काम करते ही गए, इवन इफ यू हैव अ वार्निंग बेल, लाइक कहीं पे आपको गले में खराश है, या आपने कहीं पे बहुत रिहर्सल्स किया, या यू हैव अ वेरी लॉन्ग टायरिंग डे ऑफ वर्क, तो तभी अगर आप कंटिन्यूअस चालू है आपका काम, तो ये वोकल कॉर्ड पे स्वेलिंग्स आ जाते हैं, स्मॉल स्वेलिंग्स आ जाते हैं. एंड जैसे अगर आप कोई चप्पल डालते हैं, शूज डालते हैं, एंड न्यू शूज है, एंड आपको अगर शू काटा, एंड आपने उसको अगर कुछ रिपेयर नहीं किया, लाइक करेक्ट. you don't change that shoe, एंड शू बाइट हो आप जाती उसी है. में चलते जाते हो, तो वहां पे कैलोसिटी हो जाती है, या वो करेक्ट, हार्डेंड हो जाता है. तो करेक्ट, सिमिलर वे, अगर आपने वोकल हाइजीन या वोकल केयर नहीं किया और आपने ओवर यूज करते रहे, तो वोकल नोड्यूल्स हो जाते हैं. The symptoms of vocal nodules are hoarseness of voice. The ओके, patient will have hoarseness of voice, एंड आप अगर बहुत बात करते हो, लाइक टीचर्स, तो उनको एक फटीग आ जाता है. वो नॉर्मली कहते हैं कि मेरा गला दुखने लगता है, या करेक्ट. शाम तक मैं बात नहीं कर पाता हूँ. तो तो ये क्या, दिस ये हैपेंस. सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम पर होता है? क्योंकि इस तरह के लक्षण तो डॉक्टर कई बार हमें नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड में भी होते हैं, तो हाउ डज वन नो कि यार ये दिस कुड बी समथिंग मोर देन समथिंग दैट कैन बी ट्रीटेड इमीडिएटली विद अ एंटीबायोटिक और एन एंटी इन्फ्लेमेटरी और समथिंग लाइक दैट? एक्चुअली वोकल कॉर्ड नोड्यूल के लिए आपको हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, ओके, एंड द बेस्ट थिंग इज वॉइस रेस्ट. वॉइस रेस्ट इन बिटवीन गैप्स, लाइक कंटिन्यूअस आप अगर 6 घंटे 7 घंटे बात कर रहे हैं टू अ बिग ह्यूज क्राउड,
then ultimately the vocal cords are like strings of guitar. Correct. आप छेड़ते जाओगे उसको तो वो बजते जाएगा, बट अल्टीमेटली वो लैक्सिटी आ जाएगी एंड कहीं ना कहीं उसको हार्म पहुंचेगा. So you have Correct. to have a rest somewhere. And Absolutely. I get that. yeah, Yeah. yeah. So this is the vocal cord nodules. इसको Okay. अगर आप चेकिंग करवाते हो तो every vocal cord nodule does not need a surgery. Many a times vocal cord nodules they settle with speech therapy. आप बराबर से बात करना अगर सीखते हो एंड वोकल हाइजीन मेंटेन करते हो तो वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स भी सेटल हो जाते हैं. Okay. Very Okay. small vocal cord nodules they settle down. Okay. Yeah. The And what about next, a polyp? yeah, That is next something one that is is the very close polyp. to my heart. And at Yeah. one point of time, it was also a part of my vocal cord. So please tell us about a polyp. Yeah, the vocal cord epithelium और the covering जो vocal cord पे रहता है वो एकदम पतला रहता है एंड उस पे वापस यही है कि अगर vocal cord trauma हो जाता है like too much too much talking, too loud talking, talking in a noisy environment. Like I tell my patients कि आप अगर पब में जाते हो तो बिल्कुल बात मत करो, या किसी फंक्शन में जाते हो और वहां पे स्टीरियो है तो उसके बाजू में बिल्कुल खड़े रह के बात नहीं करना है. और यू आर रिहर्सिंग, continuously rehearsing, then vocal cords normally they vibrate at 100 to 200 times per second. और आप कंटिन्यूअस कितने सारे घंटे अगर रिहर्स करते हो तो मिलियन टाइम्स हो जाता है उसका वाइब्रेशन. तो Correct. आप इमेजिन करो कि उसको कितना इंजरी हो जाएगा. So this polyp is actually a small mass of the mucosa which just Okay. gets elongated because of trauma, and it becomes a little bit pedunculated. Mostly polyps they appear pinkish, Okay. and क्या होता है कि vocal cord फिर close नहीं हो पाता है properly. अगर Correct. ये पॉलिप रहेगा तो आप बात बराबर से अगर क्लोजर नहीं, जैसे मैंने बोला, जब एयर फिल होती है लंग में तो आपके वोकल कॉर्ड्स टाइट क्लोज होने चाहिए तभी आप बात कर पाओगे. तो अगर ये पॉलिप रहेगा तो आपके वोकल कॉर्ड्स क्लोज नहीं होंगे. देयर विल बी एस्केप ऑफ एयर थ्रू द वोकल Correct. कॉर्ड्स एंड देयर विल बी होर्सनेस ऑफ वॉइस. पिछले एंड साल द की अगर पेश वीडियो आप लोग देखेंगे, जो लोग देख रहे हैं, पिछले साल का अगर वीडियो देखेंगे मेरा इंडिया वॉइस फेस्ट का, तो मेरी आवाज़ वाज़ दैट वॉइस व्हिच हैड अ पॉलिप. और जो मेरे वोकल कॉर्ड बंद नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से आवाज़ में होर्सनेस भी थी और मेरे जो लोअर नोट्स हैं आवाज़ के, वो गायब हो गए थे और टूट-टूट के आवाज़ आ रही थी. तो जो मैम बता रही हैं, उसकी जो सिम्पटम्स बता रही हैं, वो दैट इज़ एब्सोल्यूटली ऑन पॉइंट. येस मैम. Yeah, so normally this polyp it does not go off with medications. So the treatment is earliest detection, and और ज़्यादा दूसरी तरफ उसका इफेक्ट ना आए इसके लिए डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करना पड़ता है. लाइक सर्जरी is करेक्ट. the only treatment for polyp. And after surgery normally हम लोग you have to learn to speak या. so that again this problem does not happen. Speaking properly and maintaining vocal hygiene, then या. only the recurrence of the polyp does not happen. बहुत लोगों को ऐसे एब्सोल्युटली. लगता है एक बार निकल गया तो अभी वापस कुछ नहीं होने वाला है, बट द थिंग इज दे डोंट इम्प्रूव, एंड वापस अगर होर्सनेस हो गया तो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है. Yeah, the next slide is very much common in all general public. That is the ओके. laryngopharyngeal reflux. Laryngopharyngeal Laryngo, reflux. Okay. yeah. So this is actually the reflux of the acids from the stomach. And if you have heard GERD,
GERD is actually a reflux only, but that is from the stomach, it just comes up to the esophagus and you have a heartburn. जैसे जिसको जलन हम कहते होती हैं है सीने एसिड में. एसिड रिफ्लक्स, लेमैन लैंग्वेज में या कहते हैं, या छाती यस में जलन यस हो रही है, एसिड जलन होती रिफ्लक्स है. हो गया है। तो आप बट ये कह रही हैं ये कि वो वो बहुत नहीं है. इंपॉर्टेंट है गले के लिए? ये वो नहीं है. अच्छा, ये ये वो नहीं है। उप, ये एसिड्स ऊपर आ जाते हैं. इसमें एसिड्स ऊपर आ जाते हैं. इसमें ऊपर वाला इसोफेगस का जो स्पिंक्टर रहता है वो बराबर से बंद नहीं होता है और ऊपर आ जाते हैं एंड जी, टू द लैरिंग्स, द फेरिंग्स एंड द नेजल कैविटी. ओके, तो आपके मुंह में ऐसा बिटर टेस्ट आता है एंड आपके वोकल कॉर्ड्स पे वो एसिड्स वॉश होते हैं आफ्टर स्टमक एसिड्स आर कहीं ना that causes the congestion of the vocal cords ओके, and the vocal cords पे mucus collect होता है, redness आता है ओके, and the ओके, uh, voice of the patient becomes hoarse, like उनको हमेशा ओके। clearing of the throat करना पड़ता है. this type of करना पड़ता है हमेशा. करेक्ट, करेक्ट। तो इसका इलाज ये है कि आपको बराबर से बात करनी चाहिए and you have to take anti-acidity medicines. ओके। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि आमतौर पर लोग गले को गले की तरह देखते हैं और उन्हें लगता है कि गले की खराश की दवाई लो या गले के लिए कुछ दवाई लो। पर आप ये कह रही हैं कि हमारी बॉडी का एसिड जो रिफ्लक्स होता है इस तरह का जो आपने कहा, दिस मतलब गले गले को ठीक रखने के लिए समटाइम्स यू नीड टू टेक एसिडिटी की दवाई। सो ये आप में से जो लोग इस एसिडिटी बारे की में नहीं दवाई जानते लेना थे, पड़ेगा, पर हाँ, एसिडिटी इमेजिन की दवाई आप कितना ले पाओगे? कितना आपको ले पाएंगे? करेक्ट, आपके लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा. करेक्ट, लाइफस्टाइल में सुधार करना है यानी बहुत सारा पानी पीना है. आपको एसिडिटी वाला फूड कम खाना है, ऑयली स्पाइसी फूड कम खाना है. फिर वेरी आपको इंपॉर्टेंट, आपका मील अर्ली रखना है, यानी रात का खाना आपको थोड़ा जल्दी खाना है. आपके करेक्ट। प्रोफेशन में आई नो इट इज वेरी हे वायर. आपका प्रोफेशन डिमांड्स लाइक नाइट ड्यूटीज एंड ऑल, बट नहीं, इफ नहीं, यू ऐसा ऐसा मेंटेन. कुछ नहीं है। मैडम ये ना ये बहुत दिस इज़ बाय वेरी ओवररेटेड। ऐसा कुछ नहीं है, नाइट ड्यूटी वाले वॉचमैन अब हम लोग नहीं रहे और सब मज़े से सॉरी. सब हम लोग ध्यान रख सकते हैं, रखने को मैं भी यही काम करता हूँ और मेरा बहुत ही बैलेंस लाइफ़स्टाइल है, वक़्त पे खाता हूँ, वक़्त पे सोता हूँ और वक़्त पे काम भी करता हूँ। तो ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ योर ओन प्रायोरिटी। तो आप जो कह रही हैं वो एकदम सही है। इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव दैट पीपल टेक केयर ऑफ देयर लाइफ़स्टाइल एंड the food is what you are saying, that the food plays a very, very important role. यस यस डेफिनेटली. चॉकलेट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये अगर आप प्रिवेंट करोगे या स्पाइसी ऑयली फूड प्रिवेंट करोगे तो आपका ये रिफ्लक्स ये कम हो सकता है डेफिनेटली. एंड Okay, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ मस्ट. fantastic. I दी think these are very important points, guys. कि इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही, एक तो ऑब्वियसली ऑयली फूड कम खाना चाहिए गले के लिए और पेट के लिए, जो कनेक्टेड है एक तरीके से। बट इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही, स्मोकिंग। सो डॉक्टर सर्वे, ऑन दिस नोट आई वांट टू आस्क यू इफ यू कैन टेल अस इन ब्रीफ कि हम में से कई लोग हैं, नॉट मी, आई एम आस्किंग फॉर अ फ्रेंड एंड definitely not me, I don't smoke at all, but a lot of people, especially वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उनके मन में एक गलत धारणा है कि स्मोक करने से भारी आवाज़ हो जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी। तो मैं तो जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, पर अगर आप बताएंगी लोगों को कि आवाज़ के लिए स्मोक क्यों नहीं करना चाहिए, आई थिंक दैट विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेशन। सो प्लीज टेल अस व्हाई अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुड नॉट स्मोक। See, a smoking is ultimately taking fumes inside your larynx. That fumes are of nicotine and they will cause erosion of your vocal cords and the surrounding area. Ultimately, over the years, your vocal cords will become, they won't have the mucus on it. It has a thin layer of mucus on it. And because of that mucus, the vocal cords, they slide or glide properly. अगर ये म्यूकस ही नहीं रहा, उसका ल्यूब्रिकेशन नहीं रहा, तो आपका आवाज होर्स हो जाएगा.
you will have a chronic cough. The cough will ultimately, chronic cough will have the swelling of the vocal cords, and then you will have these polyp or nodule or cyst एंड हिमरेज. अगर बहुत सारा कफ आने लगा, ड्राई कफ होता है, स्मोकर्स कफ इज अ ड्राई कफ, तो आपको हिमरेज भी हो सकता है. तो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स विच इज बेस्ड वेयर यू विल हैव टू स्पीक. तो आपको स्मोकिंग तो रुकवाना ही पड़ेगा, बी इट एन एक्टिव स्मोकिंग और अ पैसिव स्मोकिंग. I to tell patients don't stand where there is some passive smoking or in a pub where there is lot of smoke. You should not. The on that note, other things are like the heat spray or good night, which have secrete fumes, or your deos for that matter, which are fumes. They directly hit your chest and you will have allergies. Allergies will lead to mucus creations, and ultimately the vocal cords will have inflammation and hoarseness of voice. Fair, fair, fair. I think that's a very very important point. One question that I also had was, like I was asking you earlier, a very practical question. When does one know ki, how when does one know that one needs a medical intervention for the voice, which is beyond your regular. Usually people go to a general practitioner, which is not wrong. It is the most natural thing to do, to go to a GP, as we say. कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है. When should one come to you? When should one come to a self voice specialist? inspection self inspection is like, if you say you are well versed with the notes, if you cannot reach a certain note, like the higher notes you cannot reach, like in the vocal cord nodule, if you say happy birthday and you continuously say happy birthday and you cannot reach that note, it is a sign of going to a doctor, a Okay. specialist. And a hoarseness where all the treatments have been done in the first week, you are not taking rest, you even if you have taken rest for 7 days and still the hoarseness persists, then we say that we need to see the vocal cords. Yeah, that's a very practical, way to understand कि अगर हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है और आपका गला ठीक नहीं हो रहा है, होर्सनेस है, और जैसा इन्होंने कहा कि अगर आप अपना जो आपका पोटेंशियल जो रेंज है, जो रेगुलर रेंज ऑफ या वोकल रेंज जिसको हम कहते हैं, अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करें, तो आपको लग रहा है कि आप वो उन रेंज पे नहीं जा पा रहे हैं, देन इट इज़ टाइम टू विजिट एन ENT. एंड आई थिंक हमारे लिए एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट or a dubbing artist or a narrator, it is so important for all of us. I think traditionally हम लोग denial में रहते आए हैं, पर आज I think it is so important, और इसीलिए ये सेशन बड़ा important है. थैंक यू सुभव. सुभव बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं. उन्होंने बहुत प्यारी लाइन लिखी कि इतना अच्छा लग रहा है कि एक 360 डिग्री होलिस्टिक वे ऑफ होलिस्टिक सेशंस हो रहे हैं, जहाँ पर ना सिर्फ वॉइस ओवर्स की बातें हो रही है, बल्कि हेल्थ और वेलनेस की भी बात हो रही है वॉइस की. सो आई थिंक वन थिंग दैट is very important to understand, thanks to Dr. Surve, is that one needs to become uh, accepting of visiting an ENT. Visiting an ENT should not be a red flag. It should be as normal as going to a general practitioner for a बुखार के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसी तरह गले के लिए ENT के पास जाना चाहिए आपको. एक बात कहना चाहूंगी कि आप वॉइस को सिर्फ वॉइस में ठीक रखूंगा ऐसे मत सोचो. यू Okay. हैव टू कीप योर बॉडी परफेक्ट, देन ओनली योर वॉइस विल बी परफेक्ट. This we How go true? to the How vocal, true? yeah, so this we go to the vocal care. Can we go to the vocal care now? Sure, Like sure, sure. yeah, because that is more important for y'all. Of course. Yeah, this is just a common thing, that is the vocal cyst Okay. and vocal hemorrhage, where I told if you have a very अगर आप बहुत गुस्सा हो एंड आप एकदम से ब्लर्ट आउट करते हो या Mhm. बहुत लॉन्ग आप बात करते हो, तो हिमरेज हो सकता है. जहाँ Mhm. पे पेशेंट्स नॉर्मली से कि एक कर्टेन आ गया, मैं बात कर रहा था और मेरे आवाज पे एक कर्टेन आ गया,
तो वोकल कॉर्ड हेमरेज में पेशेंट्स ऑलवेज द आर्टिस्ट दे से कर्टेन आ जाता है. तो अगर दिस डिटेक्शन हैपेंस ओनली विद द स्पेशलिस्ट, ओनली विद द स्ट्रोबोस्कोप या एंडोस्कोपी, Okay. then the vocal cord paralysis happens due to the nerves, the and the viral also. वायरस में भी वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है, बट वायरस में रिकवरी भी हो जाती है. इट इज नॉट अ पैरालिसिस एग्जैक्टली, बट पैरासिस हो जाता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स दे बिकम वीक. Okay. एंड नर्व्स में अगर सर्जिकल या कोई मास है लंग्स में, तो नर्व्स पैरालिसिस हो जाता है जहाँ पे पेशेंट बात नहीं कर पाता है. तो इसका ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी होता है, एंड होर्सनेस हो जाता है, या फिर एस्पिरेशन हो जाता है, यानी कुछ भी पानी पीता है तो गले लंग्स में चला जाता है, उसको खांसी Okay. आने लगती है. तो Okay. डिटेक्शन इज ओनली बाय दिस एंडोस्कोपी. Okay. And now coming to your basic thing, that is the vocal Very, very cord important. hygiene. Everyone who is watching, please pay attention to the do's and don'ts. क्योंकि सब लोग ये पूछ रहे हैं कैसे ध्यान रखें, क्या करें. So I guess ये तो slide है, but it will be nice if अगर आप if you can Yes, yes, say I it. will definitely speak about it. Yeah. Voice is, you should remember, voiceover artist should definitely remember that voice is like an instrument fitted in your body. जो इंस्ट्रूमेंट आपको एक ही बार मिलता है, आपको बार बार रिप्लेस करने से वो नहीं मिलेगा. तो Correct. आपको वो इंस्ट्रूमेंट का बहुत बहुत केयर रखना है. देयर इज द डूज ऑफ द वोकल केयर इज दैट आपको बहुत सारा हाइड्रेशन रखना है वॉइस का और योर बॉडी. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, आप पानी की बॉटल हमेशा साथ में रखिए. यू हैव टू ड्रिंक 8 glasses of 8 glasses of water the whole day. एंड पानी इसके लिए जरूरी है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स पे एक थिन म्यूकस लेयर रहता है. तो पानी जब आप पीते हो तो वो म्यूकस लेयर थिनर हो जाता है, एंड दिस म्यूकस over the vocal cords it just slips off into your esophagus. तो आपको वॉइस क्लियर भी नहीं करना पड़ता है हमेशा. इट विल बिकम मॉइस्चराइज एंड योर वॉइस क्वालिटी विल इम्प्रूव. So water is a very much important part. Okay, and I also keep water with me every time because I also speak. अभी खत्म हुई है बॉटल, एक और आ रही. Yeah. वाटर जनरली पीपल से कि हम लोग बहुत सारा लिक्विड्स पीते हैं, लाइक कैफीन. Coffee is a trend nowadays, but caffeine is not a replacement for water because caffeine causes dehydration of the vocal cords. And फिर आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है. तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत सारा कॉफी इज वेरी हार्मफुल. कॉफी, अल्कोहल, यू शुड लिमिट योर सेल्फ. एंड दी पानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो योर वोकल हाइजीन विल बी मेंटेन्ड और आपका आवाज क्लियर आ जाएगा. इफ यू हैव Okay. सीन जो क्लासिकल सिंगर्स हैं वो हमेशा बाजू में एक पानी का लोटा या पानी का ग्लास रखते थे, बिकॉज दे हैव टू सिप इट टू कीप इट मॉइस्चराइज्ड. Yeah, so this is for the internal body. Externally hydration कैसे रखोगे? Like अगर आपका ड्राई एरिया है जहाँ पे आप हो, तो आपको लाइक डेजर्ट्स और समवेयर तो बहुत सारा ड्राइनेस होता है, या अभी भी बहुत सारा ड्राइनेस है, तो आपको ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो आपके यहाँ पे जहाँ पे आप बात करते हो. Okay. Then for a moisturizer you can always have steam जो रहता है, steam inhalation, that will Steam also inhalation, yeah. liquefy. या पर आप गैस पे रखा हुआ बर्तन में से स्टीम नहीं लेना, Okay. वो बर्न करेगा. Okay. फिर अगर Interesting. Okay. वार्म आपका क्लॉथ है तो वो आप अगर माउथ पे रखोगे तो दैट ऑल्सो विल हेल्प टू मॉइस्चराइज योर वोकल कॉर्ड्स. इमेजिन, ये तो हम कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि कीपिंग अ वार्म क्लॉथ ऑन योर माउथ
It will help. It Yeah, will help you. mouth may, Wow. and you Okay. breathe through it, so that will Wow. also help. And this is for the hydration. Okay. You can eat lots of fruits like strawberry, blueberries, cucumber, melons. They have lots of water. You can increase that intake, reduce alcohol intake, and coming to the next point, this is hydration. The next point is to do is to have frequent gaps in your if you are speaking quite a bit, you have to have frequent gaps Yeah. in your speech आई थिंक where इसको you will लेकर ही एक सवाल है सुजाना का कि ये लिख रही हैं शी इज़ अ फ्रेंच टीचर शी स्पीक्स फॉर 5 to 7 hours एवरी डे और ये पूछ रही हैं कि क्या कोई लिमिट है कि कितनी देर आदमी बात करना चाहिए तो आई थिंक आपको इस आई एम नॉट श्योर कि कोई लिमिट होती है ऐसी बट आई थिंक व्हाट द डॉक्टर लिमिट इज तो नहीं सजेस्टिंग है, इज गिव बट गैप्स यू विल हैव टू हैव वार्म अप ऑफ योर वॉइस। या वार्म अप एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे आपको। लाइक देर इज जैसे बचपन में बच्चे लोग स्कूटर ऐसे ट्रिल ब्रेस करके ब्रिम करके करते हैं, तो दैट इज करेक्ट द वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज। द लाइक अ अदर वोकल एक्सरसाइज इज लाइक अ लिप ट्रिल और अ yeah टंग ट्रिल yeah इज yeah दैट yeah व्हाट yeah 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 that warm up exercise you will have to do every या day, 2 to 3 minutes in a day. And before she goes for the teaching, she should keep a water bottle, she should take small sips of water, and before starting she should have this warm up exercises. Then every day she should do this ओके stretching and this stretching also, ओके ये स्ट्रेच करना चाहिए। एंड एक्सरसाइज ऑफ द लंग्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये उनको जरूरी है। एंड गैप्स शी शुड टेक, द बेस्ट वे is to ask the students to answer so she can keep quiet in between rather than एक speak in हाँ, और एक चीज मैं interactive नोटिस करता हूँ दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एक चीज नोटिस करता हूँ टीचर्स टेंड टू स्पीक एट अ वेरी हाई नोट आदत पड़ जाती है ऊंचे नोट पे बात करने की क्योंकि सामने बहुत स्टूडेंट्स हैं microphone हाँ तो microphone ये चीजें बड़ी जरूरी हैं microphone is आ, there, and you can always uh, there is don'ts, इसमें don't एक है कि 1 arm के distance के आगे आप बात नहीं करना है। हाँ मतलब वाह दैट इज अमेजिंग one ये आपने बड़े yeah कमाल की one बात बोली है arm yeah कि आप yeah one इमेजिन arm कीजिए के कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपके एक हाथ के डिस्टेंस पे खड़ा है और आपको उस नोट पर बात करना है ताकि उतना तक yes उस डिस्टेंस पर आदमी को सुनाई दे ये बहुत इंपॉर्टेंट दिस इज सच अ प्रेशियस पॉइंट आई थिंक इससे आप जिस नोट पे बात करते हैं जितना आप स्ट्रेस देते हैं जैसे इस वक्त अगर आप देखें हम जो बात कर रहे हैं कहने को मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ-कहाँ देश के किस कोने में हैं, पर मैं तो जैसे पहले ज़माने में जब अमेरिका से फ़ोन आता था, तो लोग अलग ही नोट पे चिल्ला के बात करते थे कि एसटीडी, आईएसडी फ़ोन है। तो वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी आवाज़ अमेरिका तक जाएगी। आपको बात तो फ़ोन के अंदर ही करनी है, कि फ़ोन को सुनाई दे। उसी तरह आई थिंक व्हाट डॉक्टर सुरवे इज़ सेइंग कि अपने नोट को सँभालिए, डोंट स्पीक एट अ वेरी हाई नोट फ़िज़ूल में, वरना यू विल ओनली टायर योर वॉइस। yes across the room, in a noisy room you should not be speaking। करेक्ट। आपको अगर किसी पर्सन से बात करनी है अक्रॉस द रूम, देन यू विल हैव टू कॉल दैट पर्सन नियर बाय क्लैपिंग और बाय अदर मीन्स, एंड देन ओनली स्पीक। इफ यू आर इन अ नॉइजी रूम और अ गैदरिंग, put a earplug in your ears and then speak, so you will know how loudly you're speaking, हाँ, ये because इंटरेस्टिंग कई without बार ऐसा होता है हमने हेडफ़ोन पहने होते हैं और हम ऊँचा बोलने लग जाते हैं क्योंकि वी कांट या तो एक ही म्यूज़िक कान सुन में के। रखो, एक ही हाँ, कान में रखो, तो एक ही कान में आपको हेडफ़ोन आपका करेक्ट। आपका वॉइस आप बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज ओह! यू कैन नॉट बैलेंस दैट। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी या इंटरेस्टिंग। यस Uh, देन मैम दी राजीव sorry, yeah, please. या यू कैन No, there's जस्ट a आस्क। viewer Rajiv is asking is and I think that's an interesting question. Is an energy drink good for the throat of a voice artist? सी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं अच्छे हैं। द ओनली थिंग यू कैन ड्रिंक इज द देर आर सम स्वीट शुगर ड्रिंक्स, यू कैन ड्रिंक दैट,
बट आई डोंट थिंक सो एनर्जी ड्रिंक्स उसमें भी केमिकल रहेंगे. Once in a while you can drink, but not regularly. हाँ, तो राजीव, अगर आपको जवाब मिल गया, अगर आप मिक्सर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो गो ईज़ी ऑन इट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी में लो, बिल्कुल पानी में नहीं. लो। रादर सिर्फ पानी लो, सिर्फ पानी, नीट वाटर, दैट्स इट। See, alcohol also will cause, over a long period, it will cause a reflux ऑफ कोर्स। and acidity. So I feel so you should take care. I think so the bigger artists, they must be taking care of all this. Sleep is a very good asset. आपको बहुत अच्छी sleep होनी ही चाहिए. Can I see my slide? या Last slide, do's and don'ts. या सी दर्पण जी, मैंने इसमें लिखा है कि लास्ट में कि आपको यू हैव टू हैव मेडिटेशन एंड योगा. मेडिटेशन एंड योगा इसके लिए बोल रही हूँ कि यू विल हैव कंट्रोल ऑन योर एंगर. when you करेक्ट। are angry or in a brawl with somebody, कोई भी आके आपकी गाड़ी ठोकता है और आप जाके झगड़ा करने लगते हो, या with a slight thing you want to speak out, you blurt out. Over there you are building pressure in your lungs and blurting out. This is very harmful for your vocal cords. This will cause a very bad injury like a hemorrhage, or it will cause a vocal nodule or polyp. तो सो जिसकी दैट्स वजह से दैट्स अ वेरी आपको इंपॉर्टेंट, दैट्स एन आपको इंपॉर्टेंट डोंट। एंगर बहुत कंट्रोल में रखना है. करेक्ट। या So what you're saying is, what I think, if I try to summarize this, especially this segment, I think in a nutshell, what you are saying is, uh, vocal care is a very holistic subject, and vocal care यस is not limited to taking care of this physical of the tissue or the physical vocal cord, or what you call the voice. Your vocal care is a part of your entire being, your entire personality, whether it is taking care of your physical fitness, or whether taking care of your mental fitness. The more calmer you are, the more in control, the more quieter your mind is, the more better control you will have over your speech, and the better your breathing pattern is, the better your voice control will be. I think that's a very very interesting way to put this. Ma'am, someone asked, is tea also as harmful as coffee? tea will cause acidity. If a person Okay. is having migraine, I normally tell avoid tea, chocolates, caffeine, and tur dal, and early Tur sleeping dal. over. Yeah, yeah, tur dal also triggers acidity, so you अरे, ये तो have बड़े to कमाल की limit. बात, तुअर दाल गाइस, तुअर दाल, who could have Yes, imagined? yes, This is coming from yes, Dr. yes. Deepa Survey. Tuar dal should be avoided for vocal Yes, yes. If you hygiene. have migraine or acid reflux, you will have to avoid that, because with migraine, you tend to have recurrent acidity, and that will cause harm to your vocal cords. Okay, Sleep very is very very much interesting. important. Sleep is very much important. आप सोचो, आप अगर काम हो तो ही आप वॉइस को अच्छे से थ्रो कर सकते हो. करेक्ट, एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, सोना तो बहुत कमाल की चीज़ है। मैं कई बार जोक करता हूँ कि सोना मेरा शौक है और पैशन भी। मुझे बहुत पसंद है। मैं हर रोज़ रात को सोता हूँ और बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सुनने में बड़ा फ़नी लगेगा कि रात को सोता हूँ, बट कई लोग हैं जो रातों को नहीं सोते हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन दैट लिटिल बायोलॉजिकल थिंग ऑफ स्लीपिंग, ऑफ हैविंग अ गुड नाइट्स स्लीप, एंड इट डज़ वंडर्स टू योर एंटायर बीइंग एंड टू द वॉइस आल्सो मैम। एब्सोल्युटली। Uh, to mug up, Darpanji, diaphragmatic breathing is much more important for voiceover artists. या, Voiceover artists should learn diaphragmatic breathing, not from the lungs, but from the diaphragm. So your posture has to be erect. Your shoulders should be very straight, and you should breathe from your abdomen. दिस प्रैक्टिस हैज टू बी डन. अगर बैठे बैठे नहीं हो पाता है तो आप लेट जाओ स्ट्रेट, एक बुक रखो आपके एब्डोमेन पे, और वो बुक मूव होना चाहिए. यू हैव टू लर्न दैट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सो दैट द प्रेशर डज नॉट हैपन ऑन योर चेस्ट एंड द वोकल कॉर्ड. जब दैट्स अ आप वंडरफुल डायफ्रामेटिक. एक्सरसाइज। या, या दैट्स अ या वंडरफुल दैट पैटर्न दैट इज. यू आर सेइंग कि लेट के किताब रखें अपने बेली पर,
और देखें जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो जैसे बलून फूंकता है वैसे कहीं ना कहीं आपका 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 जो बेली हल्का सा ऊपर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो जैसे बलून डिफ्लेट होता है, दैट वे योर बेली शुड डिफ्लेट एंड यू शुड डू दैट अ फ्यू यस, टाइम्स। ये एक्सरसाइज आपको एवरी डे करनी चाहिए. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू द वन विच स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आई टोल्ड यू. देन द अदर एक्सरसाइज इज द प्रिल एक्सरसाइज. एंड आपको एवरी डे नोट्स बराबर, लाइक यू हैव टू मेंटेन अ पैटर्न, लाइक this I cannot, I am not used to it, but you राइट। definitely will know that this note has to be maintained. And आप एवरी डे अगर ये एक्सरसाइज करोगे तो योर नोट्स यू कैन मेंटेन दैट ब्रेथ फॉर दिस नोट. या और नोट करें, आप नोट करें कि उस नोट को आप क्या ड्यूरेशन तक मेंटेन कर रहे हैं। अ, यस. अपने ब्रेथ को कंस्ट्रेंट नहीं करें, डोंट मेक इट लाइक गले को दबाइए मत। एक अच्छी सी श्वास लीजिए और उसी सांस को आप छोड़ते हुए एक नोट को एक्सेल कीजिए और देखिए अपने स्टॉप वॉच में फोन पर आप देखिए कि उस नोट को आप कितने सेकंड तक एक्सेल कर रहे हैं। और ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दैट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल नॉट हैपन इन वन डे, इट विल नॉट हैपन इन वन वीक, it will happen gradually over a period of time. You will realize that you are able to sustain that note for a longer period of time. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमें कई बार बहुत तेज बोलना पड़ता है, बहुत कम टाइम में काफ़ी सारे शब्दों को स्क्वीज करना पड़ता है डब करते वक्त या वॉइस ओवर करते वक्त। तो ऐसे में इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन इन वन ब्रेथ, इफ यू आर एबल टू से more words, I think it means that you have good control over your breath. Is that correct, ma'am? Yes, and the other thing is that there is resonance in your chest. Like if you place your hand on your chest, there is. If you say you have a Yeah, resonating effect, then correct. your larynx, you will have to say this exercise also. You will have to do oh this also. And when it comes to the pharynx, then you will have to do again the same way. Then it goes to your nose, nasal. अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि Oh, उसके लिए आप हायर नोट पे करें, थोड़ा हायर नोट पे करें। yes, ओके। yes. But this exercise also you will have to do every day. ऑफ कोर्स। I'll just take a few questions that are here, ma'am. एक Yeah. तो इन किसी ने पूछा है कि chewing gum, does it help keep the throat moist? Is there Chewing gum थोड़े देर के लिए moist रखेगा, but water cannot be replaced by water anything is the else. elixir of life? So Yes. chewing gum ये कह Water. रही है कि शॉर्ट टर्म And the इलाज है, but it is second not a moisturizing thing is to keep quiet. आप correct. अगर चुप बैठोगे तो आपका सलाइवा बिल्टअप होता जाएगा, योर वॉइस और योर माउथ वोंट ड्राई. जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं हवा ले रही हूँ मुंह में, माई माउथ इज गेटिंग ड्राई. सो Correct. सिमिलर वे आप भी रिहर्स करते हो, आप भी बात करते हो, तो योर वॉइस विल गेट ड्राई. सो इन बिटवीन द क्रक्स इज दैट यू हैव टू हैव ब्रेक्स, साइलेंट. You have to have silence Yeah. in Silence between. is as important for your voice as you think speaking is. So that is also important. किसी ने पूछा है कि da 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 कि breathing from the diaphragm makes me feel a little lightheaded or kind of dizzy. Is it normal? You will get adapted to it. आपको Yeah. proper way of breathing सीखना पड़ेगा. आप शायद जोर से कर रहे हैं, हाँ बहुत जोर से ना करें, हाँ relaxed way में करें. हाँ, Relax ये your बात समझनी बहुत muscles. ज़रूरी है। हाँ, ये बात या ये आपने अगर बड़ी आप कमाल बहुत की बात जोर कही जोर कि से ब्रीथ हाँ करोगे तो अल्टीमेटली हाँ, यू विल गेट अत्याचार मत करिए। एग्जॉस्टेड. हाँ, अत्याचार मत करिए, कोई ये कसरत नहीं है, इसको बहुत एक मेडिटेटिव तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से आपका शरीर, आपकी साँस है, तो उसको आप जैसे कई बार करते हैं ना वो बहुत बहुत अग्रेसिव तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। तो मुझे मेरी एक वोकल कोच ने बहुत कमाल की बात कही थी कि यार जब हम लोग नॉर्मल साँस लेते हैं, दिन में जो हम साँस तो सब लेते हैं ना, तो हम थोड़ी इस तरह से साँस नहीं लेते हैं। तो अगर आपको अपने साँस पर काम करना है तो उसी तरह करिए जैसे आप साँस लेते हैं। वो बहुत ही एक सबलाइम लेवल पर होना चाहिए। हम सब बात करें, हम साँस तो ले रहे हैं, साँस रोक के तो बात नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मैम ने सही कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो टेक इट ईज़ी।
कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई जल्दी मत करिए। मैम एक सवाल मेरे से मिस आउट हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दही, ये मैं जानता हूँ कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि इज़ हैविंग कर्ड गुड फॉर द वॉइस, इज़ इट बैड फॉर द वॉइस? सी दही अल्टीमेटली आपका वोकल कॉर्ड्स पे नहीं जाने वाला है. इफ अ पर्सन इज एलर्जिक टू दही, लाइक उसमें प्रोटीन्स रहता है, तो अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही यानी दूध का दही, ना कि आप मलाई वाला दही खाएं, तो आपको एलर्जीज नहीं होंगे. और फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही यानी पहले वाले रात को भी लगाएं और दूसरे दिन आप सुबह खाएं, तो आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम हो सकता है. पर अगर जिनको लैक्टोजन एलर्जी है दे शुड अवॉइड, क्योंकि खांसी हो जाएगी, खांसी हो गई तो फिर साइनोसाइटिस हो जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा फिर. ओके, 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 लवली। अ, जिन्होंने पूछा था ये लाइट हेडेड का, उन्होंने कहा ठीक है मैं अब से अत्याचार नहीं करूंगा। और यार हंसा करो, हंसो, खिलखिलाओ, लाइफ में सिंसियर होना चाहिए, सीरियस नहीं। और या मैंने आई तो नो. डॉक्टर सुरभि से बहुत कुछ सीखा है ओवर द इयर्स। और बट आई थिंक मुझे सबसे स्ट्राइकिंग बात इनकी ये लगती है, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ किसी वॉइस रिलेटेड या थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम से, सो शी इज़ दैट टिपिकल वेरी ओल्ड स्कूल डॉक्टर। बहुत बड़े रेयर ब्रीड है ये आज की तारीख में, जहाँ पर हर फोकस इज नेवर ऑन मेडिसिन। इस पूरे कॉन्वर्जेशन में हम एक सवा घंटा हो गया है, एक बार भी हमने दवाई की बात नहीं की है, जबकि सारे इश्यूज की बात की। इनका जोर हमेशा रहता है ऑन होलिस्टिक वेलनेस, और ये हमेशा कहती हैं मेडिटेट करो, अच्छे से सो, शांत रहो, और लुक एट your voice as a part of your entire being. You cannot look at voice in isolation. But दर्पण जी, yes. एक बात बोलना चाहूंगी कि आई हैव ऑलवेज लर्न टू बी पोलाइट एंड टू मेडिसिन से ज़्यादा आधी बीमारी आपकी बात करने से ख़त्म हो जाती है. दिस आई हैव लर्न फ्रॉम माई टीचर्स. सो आई हैव मेड माई सेल्फ टॉक लाइक दैट वे, या वो एक अभी आदत सी हो गई है कि पहला हिस्ट्री लो पेशेंट्स का, उनसे प्यार से बात करो, तभी उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, How उनको sweet, ma'am. कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हाउ वंडरफुल। आई थिंक इससे बेहतर तरीके से हम आज के इस कॉन्वर्जेशन का समापन नहीं कर सकते थे। आपने अपने टीचर से ये सीखा है, और आज आप हम सबके लिए एक टीचर के तौर पर आई हैं। और इतना वी हैड सच अ वंडरफुल होलिस्टिक डिस्कशन अबाउट अबाउट वॉइस। एंड वो इतने सारे जो पचासों पचासों कमेंट्स आ रहे हैं, और इतना लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, दैट पीपल आर एंजॉयिंग दिस सेशन सो मच, एंड हाउ मच दे आर थैंकिंग अस, ऑल ऑफ अस, एंड स्पेशली यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टू डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस। एंड आप में से जो लोग देख रहे हैं, आपको बता दूं कि 11 तारीख को डॉक्टर दीपा सुरवे विल बी विद अस फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट एट रंगशारदा। तो आप में से जिनको उनका ऑटोग्राफ लेना है, या जिनको उनसे कंसल्ट करने के लिए उनका नंबर लेना है, आप लोग अगर आप रंग शारदा में होंगे तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट हर। एंड ma'am, if people want to consult you, what is the best way to reach you? My telephone number, and Okay, yeah, so I tell my telephone number, like, absolutely, absolutely, yeah, please. 9892 625970. This is my telephone number. लवली, लवली। सो ऑल ऑफ यू गॉट दैट। और हम क्या करेंगे ना, हम इसको डाल देंगे हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम हमारे कैप्शन में डाल देंगे, अब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो आप में से जो लोग डॉक्टर दीपा सुरवे को कंसल्ट करना चाहें, शी प्रैक्टिसेस इन मुंबई, इन अंधेरी, in Lokhandwala, and you can connect with her. She's one of the most amazing doctors that I have known in my life, not just as an ENT, but doctor as a person. And it has been my absolute privilege, Dr. Survey, to have you with us for India Voice Fest, and I cannot thank you Thank enough. you, thank you, thank you, And I'm thank looking you very forward much. to see you on the 11th of December at Rangshada. Please join us. We would like to Yes, thank you surely. on stage, and it'll be wonderful to meet you once again, and not in your clinic. So Thank you, thank you. I would say that voiceover artists are doing a wonderful job. You should do with a passionate. You should have a passion, and with passionately, you should work about. Have a positive attitude. Keep calm. If you have a concert, please keep
silent before your concert, so that you will sail through very properly with your voice. How wonderful! How wonderful! That's a great way to end this session. And I'm sorry to the panelists of the next session. Hum thoda sa, we Sorry. overshot the time that we had. But I think everyone, I'm sure, even the panelists who are already backstage in the studio, I'm sure everyone enjoyed this insightful, this very learned session that we had with you today. So thank you, ma'am. I'll see you Thank you on very the 11th much. of December. Thank you for being a Sure. part of India Voice Fest. Thank you once again. Bye Thank you. bye. Thank you. Bye. That was Dr. Deepa Surve with this beautiful session all about vocal care. I will join you in just a moment with the panelists for our next session. This is India Voice Fest 2022, and we are having a fantastic time. This is India's biggest voice industry festival. I'll see you in just a moment. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to India Voice Fest 2022, जहां आवाजें फिर मिलेंगी. This is India's biggest voice industry festival. India Voice Fest is conceived and curated by yours truly. I am Darpan. This is produced and organized by Sugar Medias. Thank you to my team at Sugar Medias. The main sponsors for India Voice Fest 2022 are Sound and Vision Studios, associate sponsors Audio Magic, our proud supporters C Sharp Recording Studio, Mumbai and Pune, the Arc Audio, the studio from Nasik, Skylink Freight Forwarders Private Limited, and Petagaska, the beautiful, wonderful pet salon, the chain of pet grooming salons. Okay, guys, so this is time for our next session. और ये बड़ा ही कमाल का सेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली मुझे अब लग रहा है इसका नाम मैड अबाउट वॉइस एक्टिंग की जगह 4 more shots प्लीज रखना चाहिए था, बट दैट वाज ऑलरेडी टेकन. सो दिस ऑल वुमेन पैनल इज गोइंग टू बी one fantastic time with 4 girls chatting about their common passion, voice acting. I'm going to bring on screen the first panelist who is also going to moderate this session, the one and the only, someone I call the Zarina of the voice industry, Mona Shetty. Mona, hi. I can't hear Mona. Can you just set my earphones, please? Sorry, that was my Is- bad. I was can on hear you mute. now, Mona. I'm I can hear sorry, you now. I'm Hi, sorry, Mona. I'm sorry. How are you doing? I'm good. I've been entertaining myself reading the comments. What fun. अरे बड़ा कमाल, बड़े मजे आते हैं. तो सबसे कमाल की बात ये, कमेंट्स की खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं. कभी कभी बड़ा मजा आता है. तो हमारे जो व्यूअर्स हैं बड़े कमाल के हैं. एक बंदा क्वेश्चन पूछता है मुझसे, दूसरा बंदा उसका जवाब भी दे देता है, हाँ, और तीसरा एक बंदा ने उस पर पूछा नाराज वो भी हो do's जाता है, and चौथा don'ts वाला था, बंदा एक ने मना भी लेता पूछा- है. एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. एक ने पूछा डूज एंड डोंट्स क्या था, मैं भूल गया हूँ.
उसने बोला कि ये करना है, लेकिन पहले तुम खजूर खाना शुरू करो, बादाम खाना शुरू करो याददाश्त के लिए. These Oh my comments are the God. funniest. I think they are the cutest, yeah. So They're amazing. amazing. They are the ones who are keeping us thoroughly entertained. Absolutely. So Mona, are you excited for this session? For this, किसका नाम होना चाहिए ना? 4 more shots, please. Totally, totally. I love the idea. I know. So, Mona, as all of you know, Mona Shetty, who doesn't know Mona Shetty, ये जो मैं कहता हूँ Zarina, ये इसका IP मेरे पास है, Mona. I call you. I was the first one who started calling you the Zarina of the voice industry. Darpan, you always embarrass me with all these introductions. Can we please introduce the real panelists for this evening? That's exactly what I'm doing. So Mona Shetty, everyone. Mona has been a voice artist yeah, for the longest time. I think she started off very early under the mentorship of her mom, Leela Ghosh. Leela ji, for everyone in the industry, the true pioneer of content localization. I think जब इंडिया में शुरुआत हुई थी dubbed फिल्मों की और dubbed content की, लीला जी was the pioneer who started. And I think तकरीबन 70-80% जो इंडस्ट्री की हम सब ने शुरुआत साउंड एंड विजन से ही की है. साउंड एंड विजन इज नॉट जस्ट प्रोडक्शन हाउस. आज वालों के लिए शायद आज जो नए नए आ रहे हैं कहते हैं अरे हमें साउंड एंड विजन में काम करना है, बट हमारे लिए साउंड एंड विजन इज लाइक घर जैसी बात है. हम सब ने साउंड एंड विजन से ही शुरुआत की. इट यूज्ड टू बी होम फॉर अस व्हेन वी बिगैन. एंड मोना वाज अ लिटिल गर्ल एट दैट टाइम, वेरी spunky, very dynamic, and she used to be the most gorgeous female voice talent in the industry, and she still is. और अब उन्होंने बहुत सारे रूप धारण कर लिए हैं. अब वो इतनी बड़ी, शी इज बिकम लाइक दिस बिग शॉट एंटरप्रेन्योर ऑफ साउंड एंड विजन. But for me, Mona is still Mona. This fantastic voiceover artist, dubbing artist that we used to be so inspired from. कि यार मोना घोष होती थी तब तो. मोना घोष, I mean, oh my God, she was such a big star as Mona Ghosh, and she is such a big star as Mona Shetty. एंड आज आप लोग इनको साउंड एंड विजन की हेड के तौर पर जानते हैं, बट इनकी आवाज़ ने बहुत बड़े बड़े चेहरों के परफॉर्मेंस को निखारा है. आई एम श्योर आप सब जानते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, जो फिल्म थी ओम शांति ओम, दीपिका पादुकोण की आवाज़ हो, रानी मुखर्जी की आवाज़ हो, कटरीना कैफ की आवाज़ हो, और आई एम श्योर कितनी और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी आवाज़ के बारे में बात नहीं कर सकती फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस, बट देन शी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस एंटरप्रेन्योर दैट शी इज़. लीला जी के जाने के बाद मोना ने साउंड एंड विजन को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है, और आज she is absolutely at the pinnacle, at the peak of her game as an entrepreneur. और अभी हाल ही में जब पद्मावत आई थी तो उसमें जो वॉइस ओवर था, दैट फैंटास्टिक वॉइस, द नरेटर्स वॉइस वाज द वन एंड ओनली मोना शेट्टी. तो मुझे हमेशा लगता है कि हम मोना को क्यों सिर्फ साउंड एंड विजन की हेड के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मोना आप एक वॉइस आर्टिस्ट हो, आप एक परफॉर्मर हो, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. और आज इस सेशन में जिसका नाम है मैड अबाउट वॉइस एक्टिंग, वी आर नॉट टॉकिंग टू मोना शेट्टी द प्रेसिडेंट ऑफ साउंड एंड विजन. नो, वी आर टॉकिंग टू मोना शेट्टी द वॉइस आर्टिस्ट, मोना शेट्टी द परफॉर्मर, समवन हु इज magic on the microphone. So, ladies and gentlemen, the first panelist, Mona Shetty. I want to now bring on the screen the next panelist, Pallavi Bharti. Hi, Pallavi. How are you doing? I'm sorry, I was on mute. Hello. Mona ji, big fan. Darpan ji, big fan. Thank you for having me. And what a beautiful platform. And many, many congratulations to India Voice Fest and to the entire team, to Sugar Medias, and to everybody involved. I mean, I'm so blessed to be a part of this. Thank you. And yeah. Thank you, Pallavi. Thank you so much, Pallavi. For everyone, Pallavi जानी जाती हैं as the दिल्ली वाली voice. But ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, obviously. She's been a radio anchor, voice artist and an actor for more than 30 years now. तो आपने क्या 1-2 साल में ही शुरू कर दिया था? 1 साल की थी आपने तभी शुरू कर दिया था? दो साल की थी दर्पण जी. I started when I was 2, and since then, by God's grace, no looking back. Imagine, no looking back. Absolutely. She is the promo voice for a lot of TV channels, National Geographic, Star Sports, Colors. She has a wonderful podcast called Dil Se with Pallavi, which recently crossed 1.5 million listens on, what do you say, listens? What do you say for that? Listens. Yes, listens on Ghana.
जी She's also dubbed for celebrities like Madhuri Dixit, Farah Khan, Angelina Jolie, Princess Diana, and she has command over multiple languages, including Hindi, English, and Urdu and Punjabi. And she records TV commercials, and she has also recorded a fantastic documentary. In fact, this is one of my favorites, Kedarnath. मुझे नहीं पता था कि जी केदारनाथ में आवाज आपकी है पल्लवी. And also जी जी Mega जी Structures is another very popular series, I think, on जी National one of the very Geographic or popular. Discovery, one of जी those, जी no? absolutely. That चैनल तो geographic. पता नहीं जी. था, मेगा स्ट्रक्चर जरूर पता है. So amazing. And Pallavi is a fantastic voice, and I'm so glad that we have you here with us. Thank you, Pallavi. Thank you for joining in. Thank you, thank you, thank And you so now I'm much. going to call upon our next panelist, the next female of this four more shots, please session, Surbhi Javeri Vyas. Can we have Surbhi on screen, please? Hello, everybody. Can you hear me? Of Hello. course, सुरभि इतनी प्यारी जगह पर आप हो, ये जगह जानी पहचानी है. Oh, क्या yes, बात है, क्या yes. क्या I'm गजब at the का, Sugar क्या गजब की जगह Medias. है यार ये. Oh my God, what a fantastic place, studio, whatever this is. I'm so Oh well my lit. God, what is this place? Are you somewhere out of India? I'm at the Oh Sugar my God, what a Medias. place. Oh my God, बताना मत किसी को कौन सी जगह है. So Thank you so everyone, much, everybody. So glad to be here. एवरीवन, सुरभि जवेरी व्यास सिर्फ एक आवाज नहीं, एक बहुत प्यारा और बहुत ही मशहूर चेहरा भी हैं. एंड शी स्टार्टेड ऑफ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड हैज आल्सो बीन अ लीड इन साउथ इंडियन फिल्म्स एज एन एक्टर. She has given her voice in Powerpuff Girls, Dexter's Lab. She received an award for the film Nine Strangers. She has also been the voice of Nine Alicia perfect Sierra in strangers. Money Yes. Heist, and she has obviously been the voice for many, many, many OTT series and films. Surbhi Javeri Vyas is a legitimate veteran. She's been a voice and an actor since बचपन से, and she also belongs to a very illustrious family. परिवार में सारे के सारे बहुत गजब के परफॉर्मर्स हैं. फॉर द अनइनिशिएटेड, सुरभि व्यास, सुरभि जवेरी व्यास में जो व्यास है वो धर्मेश व्यास वाला व्यास है. धर्मेश जो खुद एक बहुत ही प्रख्यात एक्टर हैं, बहुत मशहूर एक्टर हैं गुजराती फिल्मों में और शोज में स्पेशली. और सुरभि व्यास के जो, सुरभि जवेरी व्यास के जो भाई हैं, उनका भी आपने नाम सुना होगा. छोटे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, उनका नाम अंकुर जवेरी है. I like that. छोटे से इसलिए क्योंकि छोटे से दिखते हैं वो, बाकी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े आदमी भी हैं वो. उनसे बात नहीं कर पाता हूँ मैं. Munna, munna. बहुत बड़े आदमी हैं अंकुर. अंकुर सर, कभी आप मुझे फोन कीजिए. नो, मैं Oh, लड़की yeah. नहीं हूँ, पर इसके लिए मेरा ये चलेगा नहीं, यहाँ पे काम नहीं करेगा. अंकुर सर प्लीज कभी फोन कीजिए ना कभी मुझे. कभी फोन नहीं करते हैं वो, सिर्फ वो वॉइस नोट भेजते हैं या मुझे वो मैसेज करते हैं. तो अंकुर जवेरी जो है इनके भाई हैं. तो सुरभि जवेरी व्यास is our panelist today. I'm so delighted to have you on this session, Surbhi. Thank you so much for joining. Thank you, Darpan. Thank you for your kind words. And we have the next and the last panelist on this all-women panel, Bhumika Jain. Hi. Hello, everyone. Hello. Hi, Bhumika. Thank you for Hello. joining. I think Bhumika सबसे उम्र में सबसे कम है इस पैनल में. ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा बोल के I don't want to draw the ire of the other girls. Look, मोना का चेहरा freeze हो गया. Yes. I love it, Mona. You know that joke ना, बस में बहुत भीड़ थी तो लोगों को जगह नहीं थी बैठने की, तो कंडक्टर ने कहा कि जो एक ही सीट खाली थी, तो कंडक्टर ने कहा जो सबसे ज्यादा उम्र की लेडी हैं वो बैठ जाएं. एक, not one girl sat on that seat. She's the youngest. तो ये बात है. But jokes aside, Bhumika is again a very young, very promising voice artist. In fact, आप उन्हें जानते हैं. You know that voice, especially she is the voice of Dayaben in the series Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Correct. Is that correct, Bhumika? Yeah. Correct. How lovely. She started as a radio host, and she has a graduation in mass communication. And in fact, she realized the dream of becoming an artist when she was in school. I didn't know that. Amazing. And she has done tons of TV commercials, and she's recorded for actors like Aishwarya Rai Bachchan in the film 2.0, Shilpa Shetty and Tamanna Bhatia. Amazing. So a fantastic body of work at such a young age, Bhumika. Amazing to have you here. And Thank I'm you going so to much. stop How blabbering nice. now, and I'm going to hand over the panel to Mona. Mona, over to you. I'll see you on the other side. I'll take a break क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टूडियो में बहुत गजब की पानीपुरी आई हुई है और मैं आप सबको बहुत जलाऊंगा. पानीपुरी, ऐसी पानीपुरी आई है कि मैं क्या बताऊं. और और सुरभि ये इमेजिन मैं एक तुमसे नहीं मिलने वाला है सवा घंटे से मुझे लगा पड़ा मिलने हूँ वाला सेशंस में, है. जबकि पानीपुरी मेरे सामने है. खत्म कर देंगे बाय द टाइम
हम जब तक चपड़ चपड़ करते रहेंगे. आप लोग चपड़ चपड़ you करिए, मैं better. तब तक चट कर जाता हूँ पानी पूरी. शायद सुरभि को मिलेगी पानी पूरी, कैसे मिलेगी ये मैं नहीं बताऊंगा, पर इस वक्त ओवर टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. बाय बाय. Bye. Bye, Darpan. Hello, girls. Shall we get ready for our shots? Oh, Yes. yeah. Hello. Shots. Super Always excited. fun to have an all-girl panel. So I'm And gonna. such a privilege to be on the panel with you. Oh my Totally God, it's honored. my privilege to be on the panel with all of you too. So let's get right into it since we are already half an hour down. And I want to get enough time to speak to each of you individually. The most interesting question that I have faced in my life, and I think it's the most interesting when I speak to people also, is that how did you become a voice actor? Because it's not a natural career choice. It's not something you study to be or you work towards. So, ye kaise hua? Pallavi, can I start with you? Sure, Monaji. So, I was 4 when I got approved in All India Radio. So it was actually, I think my dad dragged me to the studio and he said audition. So I auditioned, and then by my seniors, Grace and everybody, I got through. And so I started recording All India Radio dramas. And wahi se, I think I Best way started, to and learn. Gee, best place to learn. And I remember there used to be a patla, chota sa aisa stool sa, because the microphone was like Khade hone ke liye. exactly. So I used to like, there used to be one patla on top of another, and then I used to stand on that patla and then reach the mic somehow and then record. And with all the seniors around, and so much to learn. Mera basics were learnt there only. So I think that's how I started. And I find this more challenging than the TV medium. And ये जो बहुत gradual एक learning process होता है बचपन से, and through watching people, through performing with people, that is an invaluable learning. ये मतलब किसी I course में agree. या किसी training में सिखाया नहीं जा सकता, कितना भी कोशिश I कर ले. agree. I agree. Really, really amazing. How about you, Bhumika? Well, my realization of my dream of becoming an artist started when I was in school, because I was a very active child. So I used to participate in every activity in school, be it extempore, debates, annual function. And I'm so thankful to my teachers that they had faith in me, and they encouraged me. Later, I did mass communication. And while I was pursuing mass communication, I got an opportunity from a radio channel. So in radio, I learned different aspects of audio medium and obviously other things. And while I was in radio, I thought I should explore the other aspects of performing arts. So that is how I made my demo reel, and I shared with a few production houses, and I started getting work. And after that, there's no looking back, thankfully. So I remember my very, very first series, which I dubbed, was for Disney. Disney back then in 2012, it was called Disney UTV. And the very first commercial I recorded was Idea Cellular, which I recorded for Globe Studios. So yeah, so far so good. Wow, fantastic. That's been quite a journey then. And radio also in a way is a great teacher because you just do so much Exactly. work in radio. Exactly. It's so non-stop that you really Exactly. have to think on your feet, ना बहुत On your toes, मुझे yes. बहुत मुश्किल लगता है जो काम आरजेस Mhm. करते हैं, क्योंकि मैंने कभी वो काम किया नहीं है. So Surbhi, you tell me. My story is pretty similar to Pallavi. Always wanting to be an actor. So my dad said कि अगर अच्छी acting करनी है, तो voice diction and voice modulation is very much a part of acting. तो आप वो भी करो. So he was the one who took us, to for voicing, for dubbing, and of course, yes, All India Radio, doing plays. That's what it is. And वहाँ से बहुत कुछ सीखा और realize किया कि कैसे आप voice variate कर सकते हो और use कर सकते हो acting के लिए. So yeah, that's how we basically started. Me and my brother both. Oh, that's fantastic. And that is again, coming back to what Pallavi said, it's an invaluable way to learn voice acting. Absolutely, because you had so many seniors around you, और आप पहले तो awe में होते हो और आप देखते हो, सीखते हो, आप छोटे हो तो
तुरंत ग्रास्प भी कर लेते हो कि ये लोग Yeah. कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी उतना करना है, कैसे बोलते हैं, माइक कहाँ पे है, कैसे अगर चिल्लाना भी है, तो you learn all these things very early in your life, so which was a Yeah. great learning lesson. Yes. Yes, yes. So, tell me, each of you, what is it that makes you mad about voice acting? ये जो हमारा title of our session. What is it that makes you mad about voice acting? And what about voice acting makes you mad? दोनों Very amazing दोनों मुझे question. बताओ. Very interesting. पल्लवी? Hanji. So I think what makes me mad about voice acting, Monaji, is that the deadlines are crazy and every client's work is important and the deadlines are like unreal. आपको सारा काम अभी ही देना है वो वाले जो clients होते हैं ना, that's really like that. I get super annoyed with that. फिर आपका काम भी important है, आपका भी important है, तो फिर कैसे क्या करना है? I get crazy about that. हमें डॉक्टर दीपा Voice सुरभि का मंथली मेंबरशिप चाहिए होता है. Totally. I'll take her number from Kiran, maybe. And voice, Mona ji, and everybody, it's always been my passion. I started early. I was 2 when I started doing TV commercials and TV. But when at 4 I got approved, I was so fascinated कि सिर्फ आवाज से कैसे इवोट कर देते हैं and कैसे आपका कैरेक्टर आप सिर्फ आवाज से बता देते हैं. So I saw magic in front of my eyes and then I got so drawn and so pulled. और मुझे लगा कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट एक्टिंग, टीवी एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट वॉइस एक्टिंग है. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग दैट इज मोर चैलेंजिंग, सो आई जस्ट started doing voiceovers and then dheere pages started flipping and I saw kitni layers into voice acting and then I'm still learning and I think I think that's my passion for voice and that's keeping me hooked to it. What about you, Bhumika? What are the pros and cons? I think I like everything about voicing and voice acting. In fact, the most important part which I like is how interesting it would be to you to play you. As in, for actors, usually the inspiration is the script and the emotion and the emotion they bring into a scene. For us, voice actors also, the inspiration is the scene and how accurately you can enact somebody's voice. So when I'm recording, I'm really fortunate to have recorded few leading actors. So whenever I'm recording an actor, I just listen to them and I try and bring that voice in a manner. I try and listen to them, how do they normally talk, their conversations, where do they pause. And when I'm recording the actor, I would not go on mic unless and until I'm very sure that my head has started rehearsing the dialogues in their voice. So yes, and what makes me passionate about this craft is I don't differentiate whether I'm recording a VO or a character voice, or I'm recording audiobook, or I'm recording from my setup or in the studio. Every project which you're recording is important, and I try and give my 100% to it. Oh, that's excellent. Excellent. Surbhi? Well, I get mad when, say, the dubbing director or somebody who does not know their job or does not know what they want. I'll share an experience. I was dubbing for a film, the Netflix film, an original film, and there were so many people there. There was the assistant director, there was an engineer, of course, we need one. There was a dubbing director and one more person, and they were just shooting all different ideas to me. Acha, aise try karo, waise try karo. I'm like, hello, I have sent you my voice audition and you all have approved. That was the voice and that was the take we were supposed to be doing. And yeah, they didn't know what they want. So they had taken half an hour to 45 minutes. It was a very important character. And we took around 2 hours. I was called again. And then luckily I had somebody who knew what they wanted out of me, and I was out of the studio in half an hour. So yeah, sometimes when the opposite person does not know what they want to get out of you, that
gets me mad. And I am mad about the creative satisfaction that I get. Like Pallavi rightly said, that, when you're acting, you have your face, you have your eyes, you have your body and everything, where you can portray so many emotions. But here, Yeah, it's just your voice. And yeah. voice, where we are, you know, हिंदी टू इंग्लिश होता है, इंग्लिश टू हिंदी होता है आजकल, स्पेनिश टू हिंदी, जापानीज टू हिंदी, नाउ वी आर डूइंग सो मेनी अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो वो सारा कल्चर भी अपने आवाज में लाना, वो कैसे आप डिपिक्ट कर सकते हो, वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिलता है, आई एम मैड अबाउट दैट. So many different kinds of characterization, so many different cultures, so many different styles of acting also, na? Exactly. See, I Totally. started out sultry, sensuous, and now I'm doing something which is more animatic. Yeah, a person who has bipolar disease, so she's going to, oh yeah, really, acha. So, my God, it's so satisfying when you see it's come across so well. Yeah, it's Yeah. fantastic. Give me a quick career highlight, each of you. Pallavi? For me, it was it's very interesting that I started doing dubbing for Doraemon and Shinchan. It started at UTV, and I was doing several characters in Doraemon and Shinchan. I played the mother and the little infant, the baby. So it's so interesting that whoever got to know that I'm dubbing, they used to come and say कि अरे ये characters के पीछे आवाज आप लोग देते हैं, ये आवाजें मतलब human आवाजें होती हैं. So I was like, "Arey, matlab, people are not aware only of the industry. Back then they were not. Now, so it's all it's a Awareness booming काफी बढ़ गया industry. है ना अभी? क्या कह रहे हैं आप? Sorry, I Awareness काफी बढ़ गया है ना अभी? काफी awareness. Jay, absolutely, people are now. But it was so funny that the moms used to come to me and say कि शिनचान को कुछ सिखाते क्यों नहीं हो आप? डोरेमोन वाले गैजेट्स मेरा बच्चा मांगता है, मैं किधर all that so interesting. फिर मैं कहती थी बिल्कुल मतलब मैं बोलूंगी उसको अगली बार. Bhumika, what is the highlight for what has been the highlight for you so far? I think the very first feature film that I dubbed 2.0, that was a career highlight because I was recording for Aishwarya Rai Bachchan, and secondly, I saw that in newspapers before the movie was released. It was in every damn newspaper that she's a part of the film. So I thought probably they have not retained my voice. She's done her part. So I was like disappointed कि मेरा voice नहीं होगा शायद film में. And when I went to the theater first day, first show, and listening to myself was like wow. And then I saw the name in the credits too. At times, producers and directors do not want to tell the audience that it is the part has been dubbed by an artist because then the audience feel cheated. So that was a major career highlight, I guess. And currently, I'm recording for Tarak Mehta Ka Chota Chashma, so it's fun journey. Yeah, in what language? Hindi. Hindi. Okay. Yes. Okay. What fun that must be. Yeah. Surbhi, So career highlight? Sorry, Uh, Bhumika. Sorry, yeah, Bhumika. You Bhumika. were saying something? no, you Okay. continue. Okay. Surbhi, career highlight? Well, I have the privilege. I've had the privilege to work with Leela ji. So the film which I dubbed with her, "The World Is Not Enough." Mona, you remember that one? You James were Bond. playing. Yes, yes. So that was really a big career highlight for me. And coming back to my second inning, which I have started about now, is Lucifer, Maid, Nine Perfect Strangers, which I got an award for last year. Or Abhi, I'm dubbing for Marvelous Mrs. Maisel. No, 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 no. No, sorry. Maid, again, Maid was something I really, really enjoyed. Yeah. Yeah, great. So what would you say has been like the best or the worst advice you got at the start of your career? Hmm. So yeah, please. Bolo, Yeah. bolo, Pallavi.
We'll keep going Um, keep going in the same order. I feel like I'm yeah, doing sure. rapid fire now because वक्त इतना कम हो गया है और मुझे इतना कुछ जानना है आप लोगों से कि अभी मतलब I can't help it. I have to do rapid fire only now. Yeah, तो we'll वैसे we'll बोलते जाएंगे. And we'll also say like that. Yes. जी, so start of my career तो नहीं मोना जी, but I was recording for a client and she was stuck on this one word and she wanted to make me say it in a particular fashion and I said no, but that's wrong pronunciation. So I really got stuck. That word was coming like 500 times in the script and I was just not okay with the pronunciation she was throwing at me. And I was like, but that's wrong. And so that VO I said no to eventually. I said, I'm not going to record wrong. So the agency got back to me and said ki Pallavi dekho this is one advice that we want to share with you. Client is always right and you really turned down this VO and it's not going to work and stuff like that in the long run. So I was like, okay. But I felt that I did not take that advice because I feel that if we're collaborating on a project and having been in the industry for so long, and if you're educated about something and the client is not, it is my moral duty being part of that project to sort of share my knowledge and educate the client and एक साथ collaborate करके bring the best. But so that advice I never took. I'm glad. Um, but the best advice was to never put all eggs in one basket. I was told to learn. There's so many streams to our art, our craft. There's dubbing, there's animation, there's movie dubbing, there's corporate views, and commercials and whatnot, podcasts now, running your own YouTube show and whatnot. So, training to get trained in every field is important so that you're diversifying your craft and then you're never sitting without work. And that advice I really, really follow, and I love every part of my craft. So I'm constantly learning also. So yeah, I that. so agree with you. Pallavi, मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि किसी भी काम को ना मत कहना. जी Because you जी never know कौन सा काम तुम्हें कहाँ पहुंचा देगा या what you'll get out of it, what Correct. you learn out of it. बहुत किसी चीज को ना या बोलना. true. So it's बहुत amazing that सुंदर बात है. work teaches you so much. Daily, जी जी. working daily. How about you, Bhumika? Some fun advice you got, or great advice, or terrible advice? I think it's related to the same thing. The worst and the best advice I got at the start of my career was few people told me don't charge much because you're a newcomer, and it's like who knows you, and I was like, yeah, who knows me. And then later I met few people who advised me against it, but now I feel in case you're good and you have faith in your work, you should never undermine yourself. Right. And how about any great advice you got? Great advice is like you said, say yes to every project you get at the beginning of your career. Yes, so 5 years I said yes to every recording, every project I got. I did not differentiate whether I'm recording it for a commercial, I'm recording it for TV or digital film, or I'm recording or narrating an audiobook, or I'm dubbing a character. So, yes, I think that's the greatest advice, saying yes to every project you get. Totally agree. I think there's no better way to start. Any opportunity, just grab it. So, Correct. all of you listening online, please, this is, I think, the best piece of advice anyone can give you. Grab every opportunity to learn, to network, to be out there, to meet people. It's amazing. That's how you'll integrate yourself into the industry also. Surbi, how about you? Well, my biggest and the greatest advice which I follow to date is from Leela ji herself. When I started dubbing for Young and the Restless and Bold and the Beautiful, I would come dub, go. She noticed it and she called me. And Were you a bit disinterested then? no, that's exactly what I'm coming to. So she said, Subi, why are you dubbing? Give me an answer. And Leela ji, I could do a whole session on how she would always be so personal with all her dubbing artists and always talk to them. So उन्होंने मुझे पूछा कि आप dubbing क्यों कर रहे हो मुझे ये बताओ.
I did not have an answer. I said, नहीं वो क्या है कि अभी एक्टिंग थोड़ा लल है तो मैं कर रही हूँ. She said, no, ऐसा मत करो. अगर आपको डबिंग करनी है तो पूरी शिद्दत से करो क्योंकि वो दिखता है. So this goes out to everybody who's starting out or is already there, just about beginning or wanting to start out. Please don't take dubbing as a part-time thing. It's a full-time. You have to give your everything to it. You just can't say, हाँ चलो जाके dubbing करके आते हैं, देखते क्या है. नहीं. Which is what my attitude was back then. और फिर जब मैंने ज़्यादा concentrate किया और अब तो like, I'm totally head on, leg, everything on. It's giving me so much in return, so much in return. I'm so happy internally. I'm receiving awards for that. So yeah, that was the biggest advice. Ki, don't do anything half-hearted. Yeah, don't do ki, हाँ चलो कर लेते हैं. No, you have to give it your best. Concentrate, learn, evolve, and it is going to return. It is going to return. So that was the advice given to me. Bad advice nahi mili aaj tak, touch wood. Thank God for that. Absolutely. I have all you around me, lovely people. So no bad advice coming my way. No, I want to ask Mona ji, did you receive any bad advice ever? ये तो हमेशा कई बार recordings में मिलता ही रहता है, जैसे how you said ना, experiences. Okay, sometimes you're asked to do things that you don't want to do. Yeah. Or sometimes you're asked to pronounce things a certain way or enact Correct. things a certain way, which is not coming to you naturally, or which True. you feel is gelling with the character, and yet you have to do it just because the client is paying you to do it. And कभी कभी it's uncomfortable, लेकिन बोलना पड़ता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं बोलूंगी. So जी. it's not advice, but yeah, sometimes things go into the wrong direction and it makes you very uncomfortable in the middle of a record. And at that moment it's very tricky. It's a tricky situation कि what level are you at to really handle that situation, क्योंकि हर कोई तो ये बोल नहीं. If you're a very new artist, it's very difficult to say कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी. So Right. maybe a veteran can say it more easily, or a famous personality can say it more easily. But हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो बोल दे कि मैं ये नहीं करूंगी, या मेरे से ये नहीं हो रहा है, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या ये गलत है. ये तो बोलना मतलब Right. बात है. So so I think those are the difficulties that most people have, and we have to find a gentle way, or a kind way to express ourselves, I think, in those situations. True. Definitely. Oh yeah. Where a lot of the times in our career also, all of us are here. हम दर्पण ने हमारे इतने glowing introductions दिए हैं, so we needn't really talk much about our successes. But how do you handle failure? Is something that I feel I want to know, and a lot of people online also want to know, because there are so many people now wanting to get into voice acting. And even Right. for us, even today, it's important for people online to know, or the people listening to us to know, that even today I would get rejected for a job. It's not that just because you are well known now that you're going to get accepted for everything, or that you're perfect for everything. And it does definitely hurt. So how do you handle failure? Mona ji, I've hit rock bottom once, and it was a bad space, obviously. And but then gradually, when I was bouncing back, I realized that failure teaches you so much more and such important lessons. Success is important. It is also very beautiful, but failure is the biggest teacher. And yes, rejections. बुरे तो लगते ही हैं, मतलब if the work goes to somebody else, you do feel bad, but I think it's a journey. It's a failures and successes, वो तो part of the journey है. But I feel failure sort of gets me, my reality check in order. It sort of tells me कि देखो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है. You have to keep your head down, be humble, focused, and
I feel failure teaches me to unlearn because we tend to get so repetitive. एक ही तरह से pause लेना, एक ही तरह से शब्द उठाना, एक ही तरह से sentence छोड़ना, एक ही style पकड़ लेना. I think वो आपको check में रखता है failure. So failure is slightly closer to me than success. Yeah, failure is a big teacher also. Mhm. Bhumika? I think the best part about being voice artist is it's a new journey every day. So one day you're in studio A, the other day you are in studio B, Monday you're recording with team A, Tuesday you're with team B, and there are several instances that in the same day you're working with different teams on different projects. So no one is going to remember what you did yesterday. Every day you have to prove yourself, and every day is a new challenge. So for me, failure or success is in case your voice is working for any project, it's a success. In case your voice doesn't work, it's a failure. So it works, it doesn't work, it doesn't work. But uh, for me, I don't take success or failures personally because at times the other voice is better fit for any commercial or any character. So I don't take it personally, but having said that, I try and give my 100% to any project I work for. Right. Okay. Yes, of course. I mean, we have to do irrespective, Correct. because that's what will reduce the failures. Hopefully. Bring True more that. success. Sylvie, how about Absolutely. you? Mona, if you remember, when I started my so-called second innings, when I started, the very first film that I was dubbing for was a very talky film. Okay, and the first day of the dubbing, I was taking too many takes, click sounds, blows. And when I finished my dubbing, which was like, say it was 3 hours, I took 4 to 5 hours, and the film was not complete. And came out, and I could sense the air was so dense. Or I asked the director, I was meeting him for the first time, "To kaisa raha aaj ka din?" And he was like, "Acha tha, ma'am, acha tha." So I'm like, oh my God, what is happening? I went back home and I told my husband, Dharmesh, it is not working. Something's going wrong. I think I've forgotten how to dub and I don't know if I should continue. So I went back again. He says, no, you have to do it. So next day again, okay. And it was still bad. So then I spoke to Kalpesh Pareka, HOD at Sound and Vision. I said, Kalpesh, what is going wrong? Have I forgotten how to dub? He's saying, you are too tensed, you're too stressed. So hence you're not being able to deliver. And I said, but I'm taking too many takes. So he says, that's okay. It's okay if you take a few or more number of takes. You needn't be like, oh, first take, okay. Nahi. It has to be a perfect take. So for me, failure is more like not being rejected for a voice. I think I can handle that. But when I'm not doing a job properly, then it plays up onto my mind. I want to give it my perfect. I want to be the best that I can do within the frame of the actor, the character, and all of that. So that's when you feel that you are not doing well, I started talking to people around. Mona, I spoke to you too, and you said, play it by the ear. Hear her again and again and again, and then you will get it. You will not have to work so much because you're listening to her voice so much. And like I think Bhumika also said, that it is there in your head. So that's how you give the best. So for me, that is what it is. That's how I would handle my failure, by learning, by unlearning, by evolving. I think all our past sessions, also all the panelists and everybody is saying, learn, evolve, evolve, evolve. So that's what it is. And I think this is a great tip for everybody listening also. Okay, ours is a very a profession that grows purely out of practice. So, the True. more you practice, the more you're at it, the more you get proficient at it also. You become good Yes, at it. absolutely, So absolutely. even if you're not working, you have to constantly keep practicing, because that's what will get you work at the end of the day. तो ये Yes. भी तुमने ब्रेक क्यों लिया था, और ये सेकंड Ooh, इनिंग कैसे हुआ? second innings were all because of you. We वो met at ब्रेक a क्यों लिया था? break. Personal reasons. Uh, yeah, so I was not doing anything. I was not even acting then. 3 to 4 years, Oh, just nothing. Yeah, yeah. okay, So okay. yeah. But it's great to have you back. I don't know what we'd do without you, what we were Oh, doing please. without I you. still remember you just dragging me. We met at not a very happy place, a somber occasion. And you said, what are you doing? I said,
I'm chilling, I'm not doing anything. And Mona goes, what? You can't do this. She's literally animated. She's saying, we are working, we have deadlines, and you're doing nothing. You're enjoying life. No, 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 that doesn't happen. She's saying, I'm jealous of anybody who does nothing. Honestly, I'm very jealous. she told me, I have something in mind for you, and you have to come and start dubbing for me. So I'm like, okay, Mona, I'll think about it and whatever. And then we parted ways. I see her stepping out, and within 5 minutes, I get a call from Sound and Vision. Ma'am, aapka time chahiye. Ma'am, aapka time chahiye. I'm like, hello, wait. So yeah, that's how it began, and I'm not regretting one bit of it, not at all. Yeah, that's great. That's Good, great. That's it's great. good to be back, What do you Mona. think is a great misconception about being a voice actor, Pallavi? मुझे That तो it लोग is easy. मैं बताऊं, मुझे तो लोग पूछते थे please. तुम करती क्या हो तो आई यूज्ड टू से कि मैं वॉइस एक्टिंग करती हूँ मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ मतलब सिर्फ बोलना है It's so true. सिर्फ बोलना है मतलब तो देन इट वाज लाइक इसके पैसे मिलते हैं And I'm, हाँ पैसे मिलते हैं मैं क्या करूँ fun misconceptions you guys have come across in your career? Same, I think ये same story. क्या करती हो? वॉइस ओवर करती हूँ. क्या होते हैं वॉइस ओवर? ये आप टीवी पे आवाज सुनते हो ना, रेडियो पे सुनते हो. अच्छा वो करती हो तो अच्छा तो बोलना ही है. तो मेरा बेटा भी बड़ा अच्छा बोल लेता है. मेरी बहन भी बहुत अच्छा बोलती है. तो फिर बताओ फिर कभी. Okay. They think it's easy work, easy buck, and बोलना ही but तो I है. just ना बोलना है क्या करना है खड़े होके बोलते ही तो हो तुम लोग. But it's hard work, people. It is very, very hard work. You have to constantly learn, unlearn, practice. और बहुत सारी चीजें सिर्फ आवाज होना और सिर्फ बोल आप अगर बहुत टॉकेटिव है बहुत बोलना आपको अच्छा लगता है सिर्फ वही काफी नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं इस क्राफ्ट में और लोगों को लगता है कि अच्छा फिर आप इतनी अच्छी आवाज है आप टीवी में भी और रेडियो में भी बोलते हैं तो खट्टा नहीं खाती होंगी अचार नहीं खाती होंगी ठंडा पानी नहीं पीती होंगी रियाज करना पड़ता होगा बहुत सारा तो ये सब तो नहीं करती हूँ. I don't know if I should be saying this but I eat everything. Dr. Survi is not going to like it. Come back to the same point. I should zip. I'll zip. नहीं ये Thank जो हम you कह for रहे थे कि as is a practicing profession, you know, and हम जितना काम करते हैं उससे हमारा काम बढ़ता भी है. Then you don't need to do this kind of ये जो रियाज और ये सब जो लोग बोलते हैं. That is more for people who are coming, fresh into the profession, I would say. Right. But जो लोग regular, yeah, agreed. This is a common question, so I would like to answer it कि हाँ ये सब करना पड़ता है नए लोगों को. जो लोग रोज काम कर रहे हैं वॉइसिंग पे उनका वॉइस ऑलरेडी इतना एक्सर्ट हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि उसके बाद भी हम रियाज करते रहें और वोकल एक्सरसाइजेस करते रहें और ऑल काइंड्स ऑफ. हाँ थोड़ा सा टेकिंग केयर तो करना पड़ता है. यू हैव टू बी केयरफुल हाउ यू यूज योर वॉइस. गला फाड़ना नहीं है. ठंडा गरम खट्टा ऑल दीज थिंग्स जो आई एम श्योर डॉक्टर दीपा सुर्वे ने कहा होगा पिछले सेशन में. सो ऑल दोज थिंग्स ऑफ कोर्स वन हैज टू कीप इन माइंड. बट बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक it's necessary to constantly do practice when you're working every day. But yeah, what are the peculiar misconceptions you've dealt with, Bhumika? Like you said and like Pallavi said, मुझे भी बहुत बार ऐसा बोला गया आप कार्टून्स के लिए वॉइस करते हो. You do mimicry ना. And people think that anyone with good diction or good voice can become a voiceover artist. So over the years I've realized that people don't understand what voicing is. It is not just about reading script or it is not just about modulating your voice. It takes a lot of effort and perseverance and skill and practice to dub a character, and that is a 3-hour long character. It's not that easy. Similarly, it takes a lot of creativity and practice and skill to understand and add copy. So each time you have to be different and yet maintain same zeal and enthusiasm for all your projects. And when we are recording an animation project, the skill is different. When we are recording
A voiceover, the skill has to be different. So we can't merge the two. So we can't say that अगर आप animation कर रहे हो तो आप voice artist हो, या audio books record कर रहे हो तो voice artist हो. Voicing is so much more than that. Am I right? Absolutely. Yeah. My mic is back. Surbi? या मेरे घर वाले कहते हैं मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो मुझे डबिंग करना है. मुझे सिर्फ नेटफ्लिक्स पे डबिंग करना है. मुझे एक्टिंग में Oh. इतने पैसे मिलते हैं तो मुझे डबिंग में ना मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो ही मैं डबिंग करूंगी. I'm like, yeah, sure, come. Yeah. I tell them, listen, this is not the way we've started. सीधा नेटफ्लिक्स में जॉब नहीं मिलेगा, आपको क्राउड डबिंग करनी होगी. एंड नाउ तो आई टेल देम कि आपको बकायदा क्लासेस में जाना पड़ेगा. आई गिव एवरीबॉडी हु इज टेकिंग क्लासेस गिव देयर नंबर्स. आई सेड गो देयर, लर्न योर क्राफ्ट, एंड देन इफ यू आर गुड दे विल पिक यू अप. सेकेंडली, आपको आवाज अच्छी लगती है अपनी, और मॉम एंड डैड को अच्छी लगती है, बट इट इज द वे यू साउंड इन द ऑन माइक, और आप कैसे पोर्ट्रे करते हो कैरेक्टर. और जरूरी नहीं है कि सीधा ही आपको नेटफ्लिक्स या अमेजोन या ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. You have to come from step 1, from the ladder. You have to climb the ladder. You just can't straight away go to the 10th step, right? So नहीं फिर इतना सब है तो नहीं हो पाएगा, रहने दो. I said हाँ, रहने दो. You know, they don't understand the concept of crowd dub or all of that, because they feel, oh, immediately we'll get down, oh, voice sayings, glamorous, or पैसे आने आ जाए, मिलने लगेंगे, and all of that, you know. They don't know how we also started. I mean, I started with voicing with the crowd and all of that. So yes, you have to learn the ropes before you go anywhere. They just feel कि अरे वाह, it's glamorous, it's अच्छा है, पैसा है. ये एक तुमने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही अभी सुरभि की. ये जो क्राउड डबिंग हम करते हैं, इट इज अ ग्रेट टीचर. हम सब कर चुके हैं. एंड कभी कभी कुछ लोग जो ट्रेनिंग कोर्सेज से आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने इतना कोर्स किया है, इतना लंबा कोर्स किया है, मैं क्राउड डबिंग नहीं करूंगा, मैं तो कैरेक्टर्स करूंगा. it's I think personally it's a wrong attitude to have, because it is invaluable. This learning is invaluable, and it gives the dubbing directors a chance to see what you're capable of. And coming to dubbing directors are my favorite people, because they are the unsung of the dubbing industry, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है. But there is a very interesting question from Shyam. Oh, no, I want to add one more thing. Sorry, over here. Very, very sorry to interrupt. You know, after dubbing the James Bond film and all that, I get another call from Sound and Vision saying, "Okay, we need your whole day." I said, "Okay, for what?" Say, crowd dubbing karna hai. I'm like, yeah. I was little taken aback. They're saying, "हाँ, Leela ji ने कहा है that she wants you to do this crowd dubbing." So I said, if Leela ji said, then yes. So I go to Aradhana Studios and I walk in. I see Shobini ji. I don't know. I mean, she was a veteran. She was the voice back then. I see Geeta ji. I see Madhuri ji, Prachi Save. I said, इन लोग का अभी पहले डबिंग होने वाला है, फिर बाद में हमारा डबिंग होगा क्राउड का, या कैसे है? And I was told, नहीं, वो लोग सब क्राउड डबिंग के लिए आए हैं. Wow. So imagine. And that was the fifth element. Again, Mona, do you remember that? Yeah, that was such a fun film. My God. Yes. And imagine you had stalwarts coming and doing the crowd dub. Geeta Kapoor and all of them. It was like, wow. Yeah. So that is how you learn. That is how you You learn. mustn't undermine the work of crowd dubbing. It's a very important Not at all. aspect of dubbing. Exactly. It's a very big teacher. Very big teacher. True. Again. So I was coming to this question that Shamal is asking. She's saying that, can you share your experiences with different types of dubbing directors? Which kind of directors do you feel it is easier working with? And do they do dubbing directors perform the scene first, or do they only give you a brief? Pallavi? No, so dubbing directors are very, very important. So they've mostly when I go to dub a film, sometimes I've seen the film, sometimes I don't know about it. So वो उनका इतना सारा काम होता है, उनका सारा homework होता है. They pick the voice which best suits the character.
sometimes you audition also, but वो पूरी film देख के बैठ के जान के समझ के बैठे होते हैं, and they direct you. They don't normally enact the scene for you. जैसे जैसे आप डबिंग सीखेंगे वैसे वैसे आप रियलाइज करेंगे कि जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो टोन है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर है, जर्क है, पॉजेज हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे जैसे जैसे डबिंग सीखेंगे. इट्स अ वेरी बिग craft, and dubbing is a very big part of it. पर डबिंग डायरेक्टर्स कई बार आप कहीं अटक जाते हैं तो वो आपको दिखाते भी हैं. आई थिंक डबिंग डायरेक्टर इज अ वेरी बिग एक्टर हिमसेल्फ. वो खुद भी एक्टर होते हैं, तो या आई थिंक कई बार दिखाते भी हैं करके सीन, कई बार नहीं दिखाते, कई बार आपको समझाते हैं आप जहाँ गलत जा रहे हैं आपको सही डायरेक्शन में मोड़ने का काम, उनका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो बहुत सारे डबिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया. मेरा सपना था कि मैं लीला मैम के साथ काम करूं, वो नहीं हो पाया. मैं दिल्ली में हूँ, लीला मैम बॉम्बे में थी, पर मैंने उनके बारे में इतना इतना सुना, और मोना मैम के साथ काम करने का मेरा सपना है, और आई थिंक एक दिन पूरा होगा. प्लीज बॉम्बे आ जाओ. मैं आती हूँ मैम, क्विकली. फटाफट सपना पूरा कर देंगे. डन. थैंक यू. और भूमिका बताओ. I think dubbing directors are very, very, very important. They are the captain of the ship. Like Pallavi said, अगर आप गलत जा रहे हो तो डायरेक्शन देने वाले डबिंग डायरेक्टर्स ही होते हैं. There are two best friends in the studio. One is your sound engineer, and primary dubbing directors are your best friends. So बहुत बार ऐसा होता है दैट यू डू नॉट रियलाइज कि आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए. मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी वॉइस प्रॉब्ली कैसी साउंड करिए, यू डोंट रियलाइज, एंड डबिंग डायरेक्टर्स एग्जैक्टली टेल यू आपको ऐसे बोलना है. सो दे आर इन अ वे एक्टर्स ऑल्सो. I have seen dubbing directors enact the scene in front of me, and they give your work so much of variety. You might think in certain manner and they'll tell you, no, it can be like this also. So they are very important. I personally want to be a director's voice artist. So yeah, I always love my dubbing directors to be around me. Yeah. मेरा सपना है that I can work for any series with you. अरे तुरंत, ये तो पूरा हो जाएगा तुरंत. उर्फी ने बोला ना 5 मिनट लगते हैं हमें. थैंकफुली मेरा वो सपना पूरा हो चुका है. वो नहीं आया, थैंकफुली वो पैनल पे नहीं है. But yeah, Surbhi, tell me about your experience with dubbing directors. See, I love to work with friends who have become directors who become friends. But like over the years, जब आप काम करते रहते हैं, आपकी आवाज, आपका बोलने का ढंग, आप जिस तरह से कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं, वो कहीं मोनोटोनस हो सकता है. So director is the one who breaks that monotony. वो बोलता है कि नहीं, ये कैरेक्टर हम ऐसे करेंगे और इसमें कुछ नयापन लाते हैं. So I just love that because I feel that's when you unlearn whatever you have learned और यहाँ आके कुछ नया करते हैं. So even when you're working with a new director, I like that whole feel of this nervous energy that what is he going to say or what is she going to say, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, and all of that. So yes, because you're learning new stuff every day. You're learning to approach or use your voice in a different way. हालांकि voice वही है और आप हर एक कैरेक्टर को उतना ही शिद्दत से निभाना चाहते हो और करते हो, पर एक डायरेक्टर लाइक भूमिका ऑल्सो राइटली सेड कि वो डायरेक्टर है जो आपको एक डायरेक्शन देता है कि नहीं ये ऐसे भी ट्राई करें या कुछ और नया करते हैं. सो यस, नीड गुड डायरेक्टर्स एंड लकीली वी डू हैव देम. कल्पेश पूछ रहा है एनी टिप्स फॉर डबिंग डायरेक्टर्स. Ooh, you just be by our side, Kalpesh. I have something very interesting. If we have time, I have to talk about Kalpesh. A very funny anecdote. बोलो जल्दी बोलो. Time is up. You know, we come from the times, Mona, where we were not allowed to say kutta, doggy, and a lot of bad words, right? And in comes the show Orange is the New Black. Yeah. Where you were saying everything and
everything. Okay, तो लैंग्वेज और भाषा तो हम लोग ने हा क्या गालियां दी है. आई वॉज सो टू से इनिशिएटेड इन दैट सीरीज के ओ गाली देंगे. दे वर ऑल एक्साइटेड. ओ सुरभि मैम गाली देने वाली है, चलो चलो चलो. Now this character of mine, Alaida, is a Spanish woman. She's a sex worker, she's a drug peddler, and of course that's the reason why she was in jail. And she is obscene when she talks. She describes this particular scene, she describes how she pleases her client. Okay, and it was explicit. She was just gesticulating and everything, gestures yahan wahan everywhere. तो आई सॉ दैट एंड आई सेड अरे बाप रे, ये करना है, ये जो लिखा है ये बोलना है. तो बोले हाँ. तो आई सेड कल्पेश या कोई है तो प्लीज बुलाओ. सर हाँ बुलाते. कल्पेश के में सेइंग यस मैम क्या हुआ. तो आई यू कैन सी देम. आई सेड कैन यू जस्ट सी दिस और टेल मी इफ वी कैन चेंज समथिंग. ये बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से. तो वो देख रहा है एंड देन slowly I see him out of my vision because this scene was so explicit. I mean, I can't even say what all it said. Yeah. And he said, "Okay, talk back off, karo. I cannot say these things in front of Survi ji." He was so embarrassed. Yeah. And he was like, 5 minutes, he comes back on and he sings, "Surbi ji, मैंने lines लिख ली है. मैंने खुद सिंग करके देख लिया है. सब कुछ ठीक है. आप प्लीज बोल के करके चले जाइए." So see the respect that you have for one another. So that is Yeah. also another thing which transpires, and you feel that, oh my god, I cannot say this in front of them. And he was like, okay. और जैसे ही सब खत्म हुआ, we were all like, okay, हम लोग जा रहे हैं, bye bye, goodbye. So yeah. Yeah. No, I mean, we come across great situations, really fun, really funny situations during our dub. Some very stressful situations, some very, like Pallavi said, some very hard deadlines कि जल्दी करो, खत्म करना है, a lot of stress. ये भी है. But yeah, I mean, ultimately, it's our passion for our work. And, thanks to the environment, the engineers we work with, the dubbing directors we work with, everybody kinds of tries to make it easier for us, hopefully. So Yes, before they we do. wrap up, I want a quick word. We never got a chance to speak about a few things that I wanted to touch upon, like, what is it like to be a woman in the industry? Do you feel that there's anything different that women experience in our industry? Then, what are the typically what are the qualities that a voice actor should have, especially a newcomer? What are the qualities that make let's say that make a great voice actor? And what would be your advice to any aspiring voice actors? Let's have a quick wrap up, Pallavi. Sure. Mona ji, I think a woman in the industry, it's a relevant question. I think in the past I've faced issues like, अरे इतना पैसा आप मांग रही हैं, हम तो वो हमारे जो मेल एक्टर है वो भी इतना नहीं चार्ज करते. So I think वो जैसे like in any other trade वो pay disparity था पहले, but now I think it's diminishing a little. And there are clients who ask specifically for you and they choose you over any male actor. So that's really good. The change is coming slowly. And I think if you're an aspiring voice actor, आपके सामने बोलना बनता नहीं है मोना जी, but since you asked me, I'm saying this. I think you have to be an actor first. थोड़ा बहुत acting आना चाहिए, because we're doing so much of, like, the craft is so diverse और इतने सारे streams हैं that you have to be an actor to fit all the roles. Modulation and then command over language, जो भी है, regional artists के लिए भी बहुत सारा काम है. हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप कर रहे हो उस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, so that the pronunciation is clear. थोड़ा सा I think COVID has taught us कि technology भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि you're not dependent on people, you can run your own show. तो थोड़ा बहुत क्या सॉफ्टवेयर है, क्या माइक है, थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, पंच इन पंच आउट आना चाहिए. और आई थिंक यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट, फोकस्ड. ऐसा नहीं है कि एक दिन किया नहीं जमा तो अगले दिन छोड़ के भाग गए. थोड़ा हार्ड वर्क है. सो वो सब. और लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका मोना जी? एस्पायरिंग आर्टिस्ट Advice. The advice is to keep learning and unlearning.
अनलर्निंग इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हम लोग बोलते बोलते इतना हैबिचुअल हो जाते हैं, वी ट्राई एंड say things in a particular style and then we stick to it. तो थोड़ा सा unlearn करना आना चाहिए, and you have to be focused and keep learning. Like you said, Mona ji, it's an evolving craft. तो हर दिन to be in sync with the times थोड़ा जरूरी है, और हर दिन सीखना है, हर दिन practice करना है to get great at your craft. Okay, lovely. Bhumika? Your first question, I would like to say it's a male dominated world. Oops. So it's always 65 to 35%, car commercials, male voiceover, client led AVs, male voiceover. Forget about that. I like Fair and Mona ji's Lovely face. है अब men's Fair and Lovely. So beauty products also male voiceover. So where are we? हमें क्या मिलता है? Higher paychecks, male voiceover. I'm just kidding. Actually, till the time we have champs like you, I think there's no comparison. There's no comparison. They do their work, we do our work. Champs like Yeah. you and Surbi. Thank And you. advice I would like to say, never ever give up on your dreams. In case you're starting, you should have somebody to guide you that this is correct and this is not. Because initially आप studios में जाओगे तो people will not have time to guide you and hand hold you कि ये सही है और ये सही नहीं है. So initially your practice is only going to help you. You should get somebody to correct your pronunciations, diction, and modulations. You should know, like Pallavi said, you should know how to. Technically, in case your sound, you can record your own voice. You can record your own voice on phone, and in case you know languages, then that's a plus. So there are many things, and in this journey, you be ready that you're going to face challenges, but never give up. Look at the big picture and aim for the sky, but meet the stars. Excellent. Surbi? Uh, it's strange, but I don't feel, or I have never felt this disparity. Maybe because of our industry, we have Sound and Vision, which is led by Mona Ghosh. Audio Magic is by Rajshri, and we have so many other women who are ruling the game. It started with Leela ji, so there was never, I have never felt it that, oh, men versus women. As far as paychecks were also concerned, it was not that, oh, the men will get it more or the women. It is what part do you have in a particular series or a film or whatever. If you're doing a bigger part, you get a better pay. And so be it. And even if it was say a senior doing a smaller part, it's not that he's going to get paid that much more if you're playing the lead. So I think I'm blessed that way, yes. And yeah, the advice I would like to give people is that don't be scared to start from, say, rock bottom or the scratch, because that's how you're going to get better. If when you hone your talent, you will really get higher and higher. And yeah, like she said, Bhumika said that practice, even record on the mobile, hear how you sound. Oh, sometimes you feel you're doing a good job, but you're not. So once you hear yourself again and again and again, you will know where you're making your mistakes and learn the craft. If there are classes you can attend to, do that. Even at home, if you can think, if you think you can lip sync something, Correct. write the scene, lip sync, do that. Because essentially, I mean, for our industry, it is, the syncing is very important. So you can do that. And then another very nice conversation I'd had with Mona and Manini is like, when over a period of time, it's my voice. I am trying to change, but still trying to be different or sounding different and not myself. That's very difficult. And that is what every actor or a voice actor aspires to be. So once you learn that, you can really reach the heights. Yes. Yeah. Great. I think we've had some great conversation today. Thank you, ladies. It looks like we didn't need those shots after all. Oh, yes. Totally. It was lovely talking to you Thank all. you, I would Mona love to, ji, for leading this. and Thank you. You are saying. I hope to see you on Sunday at the India Voice Awards. And thank you So so looking much for forward to it. chatting with me. I'd Yes. love to do more rapid fire. I have lots of questions planned, but unfortunately, Darpan has Darpan, are arrived. you listening? We could come back again.
We need more time. You put 4 women on a show, okay? I'm in such great company. And who said that it is a man's world? At Oh, least yes. the voiceover industry, the dubbing industry especially, is run by women. My Yes. life is Yes. run by women. The whole world is run by women. What are we Yes. talking about? Yeah. Yes. Yeah. क्या I बात couldn't करते agree हैं? more. What are you talking about? It has been I such a always fantastic discussion. I mean, it was more like friends chatting. तो मेरा मन नहीं किया कि मैं आ जाऊं वापस बैड न्यूज़ लेकर के। यार हमको उसको खत्म करना पड़ेगा सेशन को, क्योंकि अगले वाले जो हमारे 4 दिग्गज, और दिग्गज मतलब बड़े यंग हैं कुछ तो, वो वेट कर रहे हैं। और अगला जो सेशन है, सिंस यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन एंड राइटिंग, अमेजिंग दैट यू गाइस टच्ड अपॉन सो मेनी एरियाज। कल्पेश वाज आस्किंग कि यार डबिंग डायरेक्शन के बारे में कुछ बताओ, तो मुझे बड़ा फनी लगा। ये सबसे सबसे कमाल का जोक वाला कमेंट था, कल्पेश पारेख आस्किंग मैडम कैन यू से समथिंग अबाउट डबिंग डायरेक्शन। कल्पेश He wanted to make a dig at me, I'm sure. Ankur Javeri says a very good looking and insightful session indeed. अंकुर या तो YouTube के कमेंट पे दिखता है, या फिर ऐसा कुछ मैसेज आता है, या कुछ वॉइस नोट आता है. He is that mythical figure, Ooh. the ghost who walks, और सिर्फ रिकॉर्डिंग omnipresent, करता है बस. omnipresent. I wish I could say Lovely that. guys, thank you so much girls, and it has been an absolute delight. And Sunday ko we are catching Pleasure. up, and I hope all of you are going to start getting ready for the red carpet from Saturday, especially Mona. We do I not think need so much of time, पूरे जो Darpan. 500-600 लोग आने वाले हैं वो एक तरफ और मोना एक मतलब तरफ. अर्पण, do you have a problem with the way I dress and the way I look? जो इतना तुम स्ट्रेस कर रहे हो इस बात पे कि ढंग के कपड़े पहन के आना भाई. ये बहुत कम मौके मिलते हैं हमारी इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि हम लोग तो बड़े आदत है ना हमको कि यार ठीक है, we hardly have any such events or get togethers where the entire industry comes True. together. In fact, इंडस्ट्री के मायने जो है इंडिया वॉइस फेस्ट ने कई हद तक बदल दिए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बम्बई नहीं है, इंडस्ट्री मुंबई नहीं है, इंडस्ट्री पूरा देश है। और जो देश के सैकड़ों हजारों लोग आज इस काम से अलग अलग तौर पर जुड़े हैं, चाहे आप उभरते हुए कलाकार हो, चाहे आप किसी छोटे शहर में छोटा मोटा काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, या फिर आप इनमें से कोई दिग्गज हो, बम्बई में काम कर रहे हो। मैं जानता हूँ मुंबई तो ऑब्वियसली इज द मेका फॉर द वॉइस इंडस्ट्री, बट the whole idea of this platform, Mona, you know about it, कि the whole इसका ध्येय यही था, उद्देश्य यही था कि हम इन सब बंदिशों को, भाषा की और जियोग्राफिकल लिमिट्स को तोड़ें, और कोई ग्रुप नहीं हो, कोई एक कैंप नहीं हो कि यही इंडस्ट्री है, यही कुछ लोग इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है। अब इंडिया वॉइस फेस्ट ने आज ये प्रूव कर दिया है कि पूरा देश हमारी इंडस्ट्री है, और दिस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक forum, very democratic platform where anyone and everyone who is interested in the craft will get something or the other to learn. And I think that is the true essence of any such platform, of any industry, especially of performing art, that we get out of the shackles of campism and groupism and embrace everyone. Obviously, everyone has to go through the grind. Embrace का मतलब ये नहीं है कि सर पे आ जाए कोई भी, वो नहीं हो सकता। रातों रात कोई सक्सेस नहीं मिलती है। जस्ट बिकॉज आप इन लोगों को इतनी आसानी से देख पा रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन जैसा कल बन जाएंगे। तो वो उस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। ये इनका बड़प्पन है दैट एवरीवन, द एंटायर इंडस्ट्री, जितने दिग्गज हैं, दे आर शेयरिंग दिस विद सच जेनरोसिटी। पर अगर आपको, जो आप लोग देख रहे हैं, और आप में से जो लोग इस काम में या इस कला में आना चाहते हैं, तो ये इसको एक कला की तरह देखिए। ये जितने लोग बैठे हैं सामने, जो महिलाएं बैठी हैं, कलेक्टिवली 100 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है इनका। तो ये काम, ये कला, ये 1-2 दिन, हफ्ते 10 दिन में पूरा होने वाला नहीं है, और इस बात को ध्यान रखिए। मोना का सिर्फ 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मोना ने भी शुरुआत की 10 साल पहले की। Yes, she still has so much more to give. हाँ, मतलब ये क्या कर और रहे हो मोना तुम? के लिए एक स्पेशल हमने क्या किया है, 11 तारीख को रेड कार्पेट पे एक एरिया है मोना के ऑटोग्राफ सीकर्स के लिए, एंड वी गोना हैव अ सेपरेट like a section, like a nice little, like a selfie section, like a that stall where selfie with Mona ji. Mona's autograph, और मैं वहाँ खड़ा रहूंगा आगे, और मैं सबसे वसूलूंगा रोकड़ा, और उसके एवज में आपको मोना शेट्टी ऑटोग्राफ देंगी, क्योंकि इंडिया वॉइस और उसके साथ मेरा ऑटोग्राफ फ्री में मिलेगा, फ्री फ्री फ्री।
बट ये मेरा बड़ा सपना रहा है शुरू से। एक सपना ये था कि हमारी इंडस्ट्री के जो इतने आप जैसे दिग्गज हैं, आप लोगों को वो स्टार का दर्जा मिले जिसको आप डिजर्व करते हैं। दूसरा ये कि बहुत जल्द आई एम श्योर ये होना शुरू हो गया है, पर ये आम बात हो जाए कि वॉइस आर्टिस्ट के ऑटोग्राफ लिए जाएं। और तीसरा ये कि वॉइस आर्टिस्ट के सोवेनियर्स वगैरह, मर्चेंडाइज वगैरह लोग रखने लगें। तो धीरे धीरे ये सब हो जाएगा। आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम सब साथ में इस तरह के मंच को स्ट्रेंथन करेंगे तो ये टाइम भी आएगा। आज इंडिया वॉइस फेस्ट दरअसल एक एस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म बन गया है, जो लोग इंतजार करते हैं। उसका कारण ये है कि हम सब ने इतनी मेहनत की इतने सालों तक, और हम सब अपने अपने तौर पर जुड़े हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो। हम सब ने मेहनत की है, एंड आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, ऑल ऑफ यू। And Mona obviously has a very special place. And thank you so much, everyone, for this evening. And I'll see Darpan, you I want to all. take 1 minute, please, if you can allow me. Hello? Yes, please. आपको अलाउ I इसलिए किया जा रहा है really, क्योंकि अभी तक really, खुद जगह पर बैठे हो। I really, really want to thank you for this India Voice Fest, is because जब हम पहले काम करते थे, I think अच्छा काम करते थे, अप्रिसिएशन इन आवर फ्रेटर्निटी मिलता था, बाहर से भी कुछ लोग बोलते थे कि हाँ अच्छा हो रहा है, ऑल ऑफ दैट, अरे इसमें डब किया है, उसमें डब किया है, वेरी नाइस। बट नाउ वी आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड, वी आर बीइंग सेलिब्रेटेड, और इट फील्स सो गुड, सो गुड। कई बार मुझे लोग पूछते भी हैं कि आप अपनी एंट्री क्यों डालते हो, आप तो जैसे यू हैव पुट मी लाइक इनटू द वेटरन थिंग। आई सेड नो, बिकॉज आई वांट टू फील गुड व्हेन आई गेट दैट अवार्ड, बिकॉज इतने सालों की मेहनत जो है अभी लोग देख रहे हैं, और इतना सब फैल रहा है, यू कैन से दैट। तो आई वांट दैट, आई वांट टू फील दैट, एंड आई कुडंट थैंक यू इनफ for doing this for all of us, for our industry. Thank you so very much. Feel so appreciated. How sweet, how sweet. Thank you, Surbi. Thank you, Surbi. और इसके लिए मैं जानता हूँ कि आप जो पानी पूरी हम लोग खा रहे थे, आप भी चाहते हो कि आप वो खा सको, और इसके लिए Got आपने me. भी तारीफ की। तो 2 मिनट रुकिए। आप जब उस कमरे से बाहर निकल के हमारे साथ बैठेंगे तो आप भी उस पानी पूरी को एंजॉय कर पाएंगे, और बाकी 3 लड़कियां नहीं एंजॉय करेंगी। We'll miss Yeah. Pani Puri. Lovely. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. It has been Thank beautiful. you. Thank you, have Darpan amazing ji. experience. Bye, girls. Thank you. Bye-bye. Thank Bye-bye, you. Thank you. everybody. Bye. 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 Okay, everyone, that was this lovely session, mad about voice acting, and I'm going to come back in just a moment with the fantastic people of our next session, जिसका नाम है Scripting a Success Story, after this short Pani Puri break. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to India Voice Fest 2022, जहां आवाज़ें फिर मिलेंगी, बल्कि अब तो मिलने लग गई हैं, और 11 तारीख को ग्रैंड फिनाले में सारी आवाज़ें मिलेंगी. I am looking forward to see you at Rangshad Auditorium on the 11th of December, 4 p.m. onwards for the grand finale. अगर आपने अभी तक टिकट नहीं लिया है तो किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है. This is the right time to book your ticket. Log on to indiavoicefest.com and get your ticket. This is India Voice Fest 2022, conceived and curated by yours truly. मैं हूँ दर्पण.
produced and organized by Sugar Medias. Our main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsors Audio Magic, proud supporters C Sharp Recording Studio, The Audio Arc, Madagascar, and Skylink Freight Forwarders Private Limited. आज है तीसरा दिन और बड़े मज़े की शाम बीत रही है। मज़े इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमने शुरुआत की विद डॉक्टर दीपा सुरवे, ENT वॉइस स्पेशलिस्ट, जिन्होंने एक बड़ा ही एजुकेशनल सेशन किया, बहुत बड़ी इंसाइट्स दी अबाउट आवर वॉइस और बड़ा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट वॉइस केयर। और उसके बाद वी हैड दिस फैंटास्टिक सेशन विद दीज 4 गॉर्जियस वुमेन इन द सेशन कॉल्ड मैड अबाउट वॉइस एक्टिंग। और अब टाइम आ गया है एक बड़े अनोखे सेशन का। इस सेशन का नाम है स्क्रिप्टिंग अ सक्सेस स्टोरी, स्क्रिप्टिंग एज इन स्क्रिप्टिंग। और मुझे लगता है कि कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि जिन आवाज़ों को आप सुन रहे हैं उन आवाज़ों को शब्द देने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इफ़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वॉइसेस। और वो हैं हमारी इंडस्ट्री के ट्रांसक्रिएटर्स, लैंग्वेज डबिंग के राइटर्स और ट्रांसक्रिएटर्स, ट्रांसलेटर्स। ट्रांसक्रिएटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महज अंग्रेज़ी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेज़ी या तमिल से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से कई बार स्क्रिप्ट को एक नए आयाम देते हैं, एक नया कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देते हैं। और कई बार जो बड़े फेमस डायलॉग आप हिंदी में सुनते हैं अंग्रेज़ी फिल्मों के या तमिल फिल्मों के, वो डायलॉग को लिखा गया है, रचा गया है इन राइटर्स के ज़रिए। सो इनका बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया वॉइस फेस्ट पर हम वॉइस इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स को एक तरीके से शोकेस कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्सक्यूज मी। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली पैनलिस्ट से, जो इस सेशन को एज अ मॉडरेटर भी लीड करेंगी। समवन आई लव डीपली, रिस्पेक्ट अ लॉट, a very dear friend, Swati Subramaniam ji. Swati ji, hi, good evening. Very good evening, very good evening. Darpan, it's such a pleasure to be here on this panel. और एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है क्योंकि हर वॉइस आर्टिस्ट को शब्दों की ज़रूरत होती है। आज मैं थोड़ी सी लॉस्ट हूँ क्योंकि मुझे अपने शब्द बनाने हैं। I think we could not have had a better or a more apt veteran to lead this as the moderator, क्योंकि स्वाति जी ने सारे रोल्स प्ले किए हैं। स्वाति जी इज़ एन एब्सोल्यूट स्टॉलवर्ट, हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही चहेती कलाकार हैं, अदाकारा हैं। और इन्होंने डबिंग डायरेक्शन का भी काम किया है अरसों से। खुद बहुत बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट हैं और खुद राइटर भी हैं। हिंदी मराठी दोनों में पारंगत हैं और पूरी तरह से एक परिपक्व और परिपूर्ण कलाकार हैं। आई थिंक स्वाति जी को तो हम सब जानते हैं, वैसे पूरी इंडस्ट्री जानती है, मगर जो हमसे जुड़े हुए हैं लोग और जो आने वाले समय में जुड़ेंगे उनके लिए मैं एक स्वाति जी का एक थोड़ा सा छोटा सा तारुफ या छोटा सा इंट्रोडक्शन कराऊँ। स्वाति जी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर मैनी डेकेड्स नाउ। देख के लगता नहीं है, but the fact is that she has been around for a very long time. She has been a part of thousands of radio programs. ये जो sponsored programs आते हैं आज भी हजारों ऐसे radio programs का हिस्सा रह चुकी हैं as a voice, as a director, as a writer. She has, in terms of dubbing direction, जो शनिवार वाड़ा जो पुणे का जो लाइट एंड साउंड शो है, वो ड्रामा जो हिंदी में है वो स्वाति जी ने किया है। डबिंग डायरेक्शन में MS धोनी की जो मूवी बनी थी वो हिंदी से मराठी में को डायरेक्ट स्वाति जी ने किया है डबिंग को। और बिलियन ड्रीम्स जो सचिन की मूवी है उसे भी मराठी में स्वाति जी ने उसकी डबिंग को डायरेक्ट किया है। और एज अ वॉइस ऑब्वियसली स्वाति जी इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, चाहे वो मनी हाइस्ट हो, चाहे मॉडर्न लव हैदराबाद हो, जामतारा सीरीज हो, कॉल माई एजेंट हो, इंडियन प्रेडेटर हो, स्वाति जी इज़ राइट अप देयर एज अ वॉइस आर्टिस्ट. In terms of writing, she is also the one who has written the Marathi version of the movie MS Dhoni and Sachin. और ये तो बहुत छोटा सा छोटा सा पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करने जाऊँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। बट आई थिंक इतने से मैं आपको पता चल गया है कि जो जो आपके सामने हैं ये कितनी महान गज़ब की लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री की। और मुझे अच्छा इस बात का लग रहा है कि जिस ध्येय के साथ और जिस उद्देश्य के साथ हमने ये मंच शुरू किया था वो ये था, सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हमारी इंडस्ट्री के जो दिग्गज कलाकार हैं उनको न सिर्फ चेहरा दिया जाए बल्कि उनके काम को और उनके व्यक्तित्व को सेलिब्रेट किया जाए। और हर चीज़ जो हम करते हैं वो उसी के इर्द गिर्द होती है। So Swati ji, thank you for joining us, and I will move on to the next panelist now. I am going to invite Shanur Mirza on screen. मुझे अभी भी शानूर मिर्ज़ा बोलते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो मेरे सामने था छोटा सा बच्चा था और जिसको हम लोग गोल्डी गोल्डी कहते थे,
वो आज इतना वेटरन, उसके लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, वेटरन डबिंग डायरेक्टर, वेटरन वेटरन राइटर एंड वेटरन वॉइस आर्टिस्ट। गाइस, शानूर और शानूर के बड़े भाई शादाब, ये लोग जो हैं, ये दोनों जो है इतने वेटरन्स हैं इंडस्ट्री के। बल्कि जब मैंने शुरुआत की थी तब तो गोल्डी बड़ा छोटा सा बच्चा था, बट तब से वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। ही हैज़ बीन अ वॉइस आर्टिस्ट। इनफैक्ट शायद ज़्यादा लोग शानूर को एज अ वॉइस आर्टिस्ट जानते हैं। इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर वॉइस आर्टिस्ट हैं और बहुत शाय किस्म का है। मुझे बड़ी मुश्किल से आई गॉट हिम टू अग्री टू कम ऑन इंडिया वॉइस फेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि यू कैन बी शाय बट यू शुड ऑल्सो नॉट शाय अवे फ्रॉम बीइंग इन द लाइमलाइट। दोनों अलग चीज़ें हैं। So you deserve all Yes. the limelight, Goldie, and I'm glad that we are able to play a small role in that. Shanur is obviously has been, अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री में कितने साल से, विश्वास नहीं करोगे, जो 15-18 साल का लड़का लगता है, he has been in the industry for more than 30 years now. तो and he has been a part of, he has, I mean, as a writer, अगर मैं as a voice, तो he has been a part of hundreds and hundreds of shows, series, films. But as a writer, ये जो फहरिस्त है मेरे पास, जो लिस्ट है बड़ी लंबी है डिज्नी के, चाहे ब्यूटी एंड द बीस्ट हो, कार्स, कोको, जंगल क्रूज, Aquaman, Birds of Prey, Suicide Squad, Wonder Woman 2, Batman, Tom and Jerry movie, Star Wars, Last Jedi, Star Wars, Rogue One, Star Wars, Boba Fett, Marvel's Moon Knight, Marvel's Wakanda Forever, Black Panther 2. The list is absolutely endless. So this, ये जो थोड़ा अंकुर जवेरी टाइप का जो जो चॉकलेट बॉय लुक जो है, अंकुर जवेरी इज द सिनोनिम हमारी इंडस्ट्री में के चॉकलेट बॉय इज इक्वल टू अंकुर जवेरी। वो खुद बेचारा 55 साल से इंडस्ट्री में, बट आज भी उम्र बचपन की लगती है। So Shanur, is that chocolate boy of the industry, and he's a very, very lovable person and a fantastic artist. And I'm so glad that Shanur agreed to be here in his capacity as a writer today, because he is an equally accomplished voice artist. So I'm happy that he took pride in the fact that, no, as a writer, I'm going to present my opinions as a writer. Very, very bright writer, someone who has earned a lot of respect from his seniors. So thank you, Shanur, for joining in. And I'm now going to call on our next panelist is Sumita Ganguly. Sumita Ganguly, hi, good evening. Good evening, sir. सुमिता गांगुली, इतनी प्यारा सा जो चेहरा है और इतना प्यारा बोलती है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट पर्सन। सुमिता को भी ये काम विरासत में मिला है। सुमिता के फादर इज द लेजेंडरी स्टॉलवर्ड दीनपाल गांगुली। Incidentally, Deenpal Da भी कल फीचर हो रहे हैं ऑन इंडिया वॉइस फेस्ट ऑन अ सेशन कॉल्ड द स्टॉलवर्ट वॉइसेस। और सुमिता ने भी उनकी धरोहर को संभाला है। और सुमिता इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड ट्रांसक्रिएटर, डबिंग राइटर, आप जो कहें। मैं ट्रांसक्रिएटर वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन और क्रिएशन का एक तरह से समन्वय होता है इस काम में। सुमिता, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। Yes, yes. और सुमिता ने, मैं सुमिता का जब इंट्रोडक्शन देख रहा था और जो मैं इनकी फहरिस्त से गुजर रहा था, पूरी जो इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, दैट आई डिडंट नो दैट सुमिता हैज रिटन एमिली इन पेरिस इन हिंदी Yes. for I think for Mayuki, Anju and Pinky. Yes. And I think Yes. it's so wonderful क्योंकि Emily in Paris मेरे सबसे पसंदीदा shows में से एक है। And I didn't know that you've written it in Hindi. It's so amazing. And she's also written Stranger Things, guys. She's a writer of Stranger Things in Hindi. How cool is that? So, and obviously उसके अलावा तो movies like Conjuring, Annabelle, The Nun, Lyle Lyle Crocodile, Scoob, writing songs for Disney, Netflix, and movies like Encanto, Beauty and the Beast, an original Disney series called Bhagam Bhag, Budbak, Banduk and Budbak, I think, Band Bud Bud and and Budbak. the list is endless. And what an amazing, repository of great work, Sumita. और Thank बड़ा you. बड़ा अच्छा लगा। And thank you so much for joining us. And I hope you Pleasure is enjoyed all this mine. session. Sure, sir, definitely. Lovely, Sumita. Thank you. And now I'm going to call upon our next panelist and the last panelist on the show, the veteran Amar Valentine. Amar ji, कैसे हैं आप? Good evening and welcome to India Voice Fest 2022 and thank you for joining us. मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा। हमने हमारे कॉन्वर्जेशंस को एक चेहरा दिया है और 11 तारीख को हम इस चेहरे को इस कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकाल कर हम रूबरू मिलेंगे, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेम हियर। अमर जी की बात करें, अमर जी एक तो
growing up, I don't know, Amarji, what kind of fun and what kind of masti did you have in life with the surname Amar Valentine? It's Valentine. Is that Valentine. Valentine or Valentine? Valentine. वैलेंटाइन होना Valentine. चाहिए ना, मैं Same as वैलेंटाइन Valentine's Day. कर रहा हूँ, तो वैलेंटाइन है तब तो और जलवे। आपकी जिंदगी में एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे। Exactly. I'm born Valentine. यू आर बॉर्न वैलेंटाइन, यार ये जो नाम है ये हमको चाहिए। Maybe. Lovely, Amarji. Amarji has been a part of the industry for more than 25 years now. And interestingly, he started off as a lyricist for the legendary Brij Bhushan ji. God willing, Brij ji will Yes. be there with us on the 11th of December. Unki tabiyat thodi si nasaaz hai, but he is such a sweetheart. He's so loving, so supportive of India Voice Fest. I have a very strong feeling that Madhurji and Brij ji will be there with us on the 11th. And so that's where Amarji started. And in fact, he says that it was Bridgie who spotted his talent in writing and encouraged him to write scripts. He's written more than 600 to 700 programs for Discovery and has also directed them as a dubbing director. He's written around 7 theater movies for Warner Brothers, for Eliza Lewis. For all of you who do not know, Ellie or Eliza Lewis is one of the most respected, most loved, most looked up to dubbing director and dubbing producers in the industry. Someone I love to a fault. I just respect her and love her so much. That's Eliza Lewis, Ellie ma'am, for everyone. And he's written all Bond movies on TV channels and the latest series Hunters for Amazon Prime and the movie White Noise for Netflix. He's also been a voice. He's been a Pinocchio for Tom Hanks and Black Adam for Pierce Brosnan, the theater release. So Amar Valentine ji is an absolute multifaceted personality, writer, dubbing director, and today he's here in his capacity as a trans creator. And I can't thank all four of you enough. So I'm going to stop blabbering now. And स्वाति जी आप टेक ओवर करिए और अगले 1 घंटे में हम आप चारों से आपके किस्से सुनना चाहेंगे, आपके आपके तजुर्बों आपके तजुर्बे सुनना चाहेंगे, उनसे सीखना चाहेंगे और बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं and I think everyone is waiting for me to stop speaking and for all of you to start. Thank you. I'll see you on the other side. Thank you. Thank you, Darpan. Thank you, Darpan, so much. Hello, everyone. Hi. Hi, Swati. Hi. Hi, Amarji. Hi, Shanur. Hi, Shanur. Amarji. Hi. हाय हाय शमिता। अच्छा, मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, लिखी हुई अच्छी है, तो प्रोजेक्ट बहुत आसान हो जाता है डबिंग डायरेक्टर के लिए, वॉइस एक्टर के लिए, ओवरऑल निखर आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले तो आप मुझे ये बताइए, लोगों को बताइए कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन में क्या फर्क है, क्योंकि अभी दर्पण यही कह रहा था कि इट्स नॉट अ मियर ट्रांसलेशन, के जैसे आपके पास किसी इंग्लिश फिल्म आई है, उसको बरहुकुम आपने हिंदी में लिख दिया, वैसे नहीं है। तो ट्रांसक्रिएशन आपके मायने क्या रखते हैं अमर जी? सबसे पहले मुझे जब पहली बार डबिंग डायरेक्शन का मौका मिला था डिस्कवरी के लिए, तो उन दिनों शायद आवा का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये मेरे छोटे भाई शानूर जी और अमान, इन दोनों ने उस होस्ट का काम किया था। और जब मैंने राइटर की लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने हाथ में ली थी, एंड आई जस्ट रेड अ फ्यू लाइन एंड आई थ्रो इट आउट। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी लिखी जाती है स्क्रिप्ट। सो आई सेड शानूर, हमने जो भी करना है अभी आपस में मिलजुल के, आई विल टेल यू व्हाट टू से एंड यू जस्ट से इट, and we are not going to follow the script at all. It was something about races between animals, who is the fastest animal on earth, something like that. I don't remember, it's a very long time back now. So when we dubbed the program and finally sent it for QC, यज्ञ शर्मा जी उन दिनों QC हुआ करते थे डिस्कवरी के, तो he saw the program, he QC'd it, और एंड में उन्होंने कमेंट लिखा कि ये डब्ड प्रोग्राम प्लीज उस राइटर को जरूर भेजना और उनसे कहना कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी जाती है। So this is what I would say is transcreation. What he had done was literal translation. Translation. Yes. So, and what we did was exactly what we could see on the visual, the screen. यार अगर ये यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे भाग रहा है तो ये ऐसे थोड़ी बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा। तो उसको हमने इतना इंटरेस्टिंग बनाया। I hope Shanur, you may be remembering this. I think so. We had done it in version मधुर ध्वनि में। So this is translation according to me.
जो जितना नेचुरल लगे, जो उस हिंदी भाषा में जो सहज लगे, जो आपकी बोलचाल की भाषा में हो, करेक्ट। है ना? एग्जैक्टली। शानूर, आपको क्या लगता है? आप तो इतनी सारी ढेर सारी फिल्में लिखते हो, बोलते हो, तो ट्रांसक्रिएशन मतलब आप क्या करते हो आपके हिसाब से? शानू, यू आर ऑन म्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शानूर। म्यूट म्यूट निकाल दो, माइक को ऑन करो। अच्छा, आई कम बैक बिफोर यू सॉल्व दिस। आई गो टू शुमी। शुमी, मैंने आपके साथ काफी एज अ डबिंग डायरेक्टर, मेरा सौभाग्य रहा साउंड एंड विजन में काम करने का एज अ डबिंग डायरेक्टर. दैट वाज अ totally new journey for me, and I thank Mona for that because she gave me a complete new insight of this dubbing world, because I was much into ad films and radio programs and all. Shumi, आप जब एक प्रोजेक्ट आपके पास आता है, इंग्लिश में आता है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज में भी होता है, तो उसको आप इंडियन फ्लेवर कैसे देते हो? पहले तो मैं देख लेती हूँ कि व्हाट इट इज़ अबाउट एंड हाउ आई कैन व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई कैन गिव टू इट। अगर वो कॉमेडी जॉनर है तो हम उस तरह से अगर किसी कैरेक्टर को कलर देना चाहे तो कलर दे देते हैं। कुछ तकिया कलाम, कुछ प्रोवर्ब्स यूज़ करना है तो वो यूज़ कर लेते हैं। और उसको बेसिकली माय एम इज़ ऑलवेज़ कि अगर आप वो प्रोडक्ट देख रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप भूल जाए कि वो एक डब्ड प्रोडक्ट है। आप उसको एन्जॉय करने लगे, आप उसमें इतना एनग्रॉस हो जाए कि आपको लगे कि आप अपना ही कोई मतलब अपनी ही लैंग्वेज में कुछ देख रहे हैं एंड आपको वो इक्वली आपको उतना ही अच्छा लगे जितना ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो उसमें जो ह्यूमर है वो मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। उसमें जो ड्रामा है, जो भी मतलब इंटेंसिटी है, जिस तरह से कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर अलग होता है, उनके डायलॉग्स अलग होते हैं, उनके बात करने का तरीका अलग होता है। तो आई हाँ, ट्राई टू गिव दैट कलर जो भी इंग्लिश में है या जो भी रीजनल लैंग्वेजेस में है, मैं उसको हाँ, मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ और हिंदी में वही मतलब फ्लेवर आए। और अगर अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़े, अगर उनका जोक अगर हम ट्रांसक्रिएट करने पर नहीं वो आ रहा है, वो सामने अगर वो नहीं आ रहा है, वो अच्छा नहीं साउंड कर रहा है, तो उसको टोटली बदल भी देते हैं। नॉट क्रिएटिव इंटेंट को नहीं बदलते हैं, स्टोरी लाइन को नहीं बदलते हैं, बट जितना हमारी कैपेसिटी में होता है कि हम उसको बदल कर उसको और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इंडियन ऑडियंस के लिए, तो हम उस तरह से उसको थोड़ा सा बदल भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रांसलेशन डज नॉट वर्क, ट्रांसलेशन डज नॉट नहीं, वर्क क्योंकि वो इतना एट ऑल। फनी लगता है। मुझे याद है जो हाँ पुरानी फिल्में हुआ करती थी जिसमें लिटरल मतलब व्हाट आर यू जी। डूइंग, तो उसका भी क्या कर रहे हो आप, इट यूज्ड टू बी सो फनी। एंड बट ट्रांसलेटिंग अब मुझे एवरी लगता वर्ड है लाइक आई थिंक, मुझे लगता है, और वो मुझे मतलब लगता है ट्रेन जितनी लंबी लाइन हो जाएगी वो कभी लिप्स पे फिट नहीं आएगी। जो अभी इतना सहज लगता है ना, अभी देखने के लिए बहुत मजा आता है। लगता ही नहीं कि आप इंग्लिश या स्पेनिश कंटेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्जैक्टली। देख रहे हो। शानूर, मुझे लगता है आपने बोलने का आपकी आवाज नहीं। अम, अम, ओके, अम, आपके पास मैं फिर से आती हूँ। अमर जी, जी। अम, आपको क्या लगता है कि जब आप लोकलाइजेशन करते हो किसी भी वेब सीरीज को या किसी भी फिल्म को, तो उसके की कंटेंट होते हैं? जैसे मैंने एक फिल्म की थी जिसमें स्पेनिश था, और मेरिल स्ट्रीप की फिल्म थी जिसमें वो स्पेनिश भी है फिर अंग्रेजी है, तो उसको एक तरह का लहजा देना पड़ा हमें कि स्पेनिश हिंदी मतलब वो हिंदी के नजदीक ना रखे, उसे गुजराती टोन दे, या तो आप कैसे, अगर किसी कैरेक्टर को आप कुछ लहजा देना चाहते हैं, तो वो की फैक्टर्स आप क्या सोचते हो उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं मूवी को स्टडी करता हूँ, जी। फिर उसमें पॉसिबिलिटीज देखता हूँ कि मैं किस कैरेक्टर को किस तरीके से अलग तरीके से पेश कर सकता हूँ। लाइक विच कैरेक्टर कैन बी गिवन अ लिटिल एक्सेंट, विच जी। कैरेक्टर कैन बी, जैसे सुमी जी ने बताया कि किसी को एक तकिया कलाम दे सकते हैं, किसी को थोड़ा सा हाँ, स्टैमर करवा सकते हैं, किसी को थोड़ा तोतला बना सकते हैं। हाँ, तो ये सबसे पहले तो फिल्म देख के ये समझने की सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। Another जी, thing what you can never forget is that this film is in English or maybe any other language, and हम जी, इसको इसलिए डब कर रहे हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश या वो दूसरी लैंग्वेज आती नहीं है। So समझती they हूँ। are more used to
hearing anything that is in Hindi, they are most comfortable with this language. सबसे पहली बात तो ये समझ नहीं होती। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना होता है कि इन्होंने शुरू से आखिर तक आज तक सिर्फ बॉलीवुड देखा है। टीवी का मीडियम अभी जैसे इनके पास आया तो मैक्सिमम सीरियल्स वगैरह जो इनके टीवी में देखते होंगे ये तो हिंदी में ही आते हैं। So there is nothing. This is something which has come from foreign, which they are not used to watching very regularly. So they would definitely look for the same thing what they've been watching all their lives. जी। उस तरीके से उसको कैसे मैं अडेप्ट करूं, क्योंकि जैसे अमेरिकन ह्यूमर है वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन ह्यूमर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अमेरिकन अगर कोई एक आदमी ने अगर एक डायलॉग बोला है और दूसरे दो बंदे उस डायलॉग पे बड़ी जोर से हंसते हैं, नॉट नेसेसरी कि किसी इंडियन आदमी को भी उस पर हंसी आएगी। उस पे हंसी आए। मुझे ऐसी एक ह्यूमरस लाइन बनानी ही पड़ती है जिससे इंडियन को वो समझ में आया और उसको जस्टिफाई हो कि उन दोनों का हंसना अब जस्टिफाई हुआ। फॉर दैट आई नीड टू रियली वॉच द विजुअल्स वेरी प्रॉपर्ली कि कहाँ इसकी उंगली जा रही है, कहाँ इसका हाथ जा रहा है, कहाँ इसने आंख मारी, कहाँ इसका हाथ गया, सर खुजाया या क्या जेस्चर्स उसके जो थे स्टडी करके देन। और ह्यूमर वैसे भी मेरा जॉनर है तो मैं उसको क्रिएट कर पाता हूँ किसी तरह से। एंड आई बीन जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। यू मे हैव हर्ड अबाउट एन इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर कॉल्ड वेन रूनी। जी। ही वाज एन इंग्लिश फुटबॉलर, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर। उसके बारे में मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था कि वो अनपढ़ था। ओके। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, बट ऊंचाई जो उसने फुटबॉल में छुई है वो तो कमाल की थी। तो यू नो जस्ट वाचिंग अ प्रोग्राम, एक साउंड इंजीनियर भी मेरे पास बैठा था और वो उसका इंटरव्यू चल रहा था। वो साउंड इंजीनियर भी एक्चुअली अनपढ़ ही था, वो पता नहीं कैसे सीख गया था। तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा था। तो मैंने कहा यार ये आदमी कहाँ पहुंचा है, ऊंचाइयों पे, किस ऊंचाइयों पे पहुंचा है जबकि अनपढ़ है। तो मुझसे कहता अमर जी क्या बोल रहे हो आप, अनपढ़, इतनी अच्छी इंग्लिश तो बोल रहा है। तो ऐसा होता है, मतलब यहाँ लोगों को जो कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वो पढ़ा लिखा है, तो उसको ये नहीं पता कि उसकी देश की मातृभाषा इंग्लिश है तो वो बोलेगा इंग्लिश। बिल्कुल। देयर आर सच कैरेक्टर्स आल्सो जिनको दिमाग में रखना पड़ेगा। इनको इसी बात पे हंसी आएगी, इसी बात पे इनको रोना आएगा, इसी बात पे ये इमोशनल होंगे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज। बिल्कुल बिल्कुल। शुमिता, शुमी मुझे ये बताओ कि आप भी जब ये इसको लोकलाइज करते हो, जैसे कोई स्पेनिश ह्यूमर है या कोई चाइनीज ह्यूमर है, तो उसको आपको पूरा इंडियनाइज करना है, उसको लोकलाइज करना है, साथ में लिपसिंग का भी आपको ध्यान रखना पड़ रहा है ना। जो जिस मीटर में उसने बोला है वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कैसे उसे पेश करती है, मतलब कैसे लिखती है उसे? जनरली कहीं ना कहीं से आइडिया मिल जाता है। जैसे उसके ऊपर की कुछ लाइनें होती है, वो लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो टॉपिक वो जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने में, या बॉडी लैंग्वेज का हेल्प मिल जाती है कि कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा कर दिया कि जिससे हम बोल देंगे और सामने वाला उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। उसका रिएक्शन देखकर कोई एक लाइन तब देखकर समझ में आ जाती है कि हाँ ये अगर हम बोलेंगे तो इस तरह से ये फिट भी हो जाएगा लिप सिंक में, और एज ए लाइन अगर जो भी लाइन हम बोल रहे हैं वो ह्यूमरस भी लगेगी, अगर जो भी ह्यूमर है, बिकॉज वी हैव टू कम्प्लीटली चेंज इट अगर वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को समझ में नहीं आने वाली है तो। मुझे याद है अभी काफी कैच लाइंस बनती हैं, यू नो, जैसे डेडपूल फिल्म है, पुष्पा है, जिसमें काफी सारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हमें शोले के डायलॉग्स याद हैं, यू नो, कि कितने आदमी थे। तो आज जो हमारा डब्ड कंटेंट है उसके भी लाइंस, वन लाइनर्स बहुत फेमस हो रहे हैं। जैसे पुष्पा की तो मतलब पुष्पा आंटे फ्लावर लंचिंगेला फायर, तो ये तमिल में है। तेलुगु में वो कहता है पुष्पा अंटे फ्लावर अनकोंटिवा फायर। उसको हिंदी में कितना अच्छा उन्होंने कहा। अभी जो उनका फायर में जो एक झोल था उसके लिए फ्लावर फायर है मैं, यू नो। सो ये जो राइटर्स सोचते हैं, तो क्या अमर जी आप ऐसा कुछ करते हैं? आपकी ऐसी कोई कैच लाइन जो फेमस हुई आप बता सकते हैं, या ऐसे कुछ कैरेक्टर को आपने एक अलग ही शेड दी, ऐसे कभी हुआ? हाँ, एक फिल्म थी, इट वाज अ साउथ तमिल टू हिंदी आई थिंक सो जी, जिसमें उन्होंने उसको एक
काउबॉय मूवी बनाया था, Okay. Tamilians. Each and every character in that movie was a cowboy, you know, wearing a cowboy hat and riding a Hat horse and and उस तरीके अच्छा से। तो मेरे हाथ में वो फिल्म आई कि वो एक्चुअली उन दिनों क्या होता था कि वो सबटाइटल्स भी नहीं होते थे। तो some South Indian person, like a Tamilian or somebody, would hear the dialogues and then हाँ translate. So that was only for reference. वो असली डायलॉग नहीं होते थे, कुछ नहीं होता, हमको सिर्फ इतना पता होता था कि यहाँ ये चीज बोली गई है, since we don't know Tamil. तो जब मेरे हाथ में आई, मैंने वो पूरी फिल्म देखी, तो मुझे ऐसे लगा कि यार इस पूरी फिल्म को एक नया फ्लेवर दिया जा सकता है। हाँ तो मैंने उसको पूरी फिल्म को बदल दिया। कैसे बदला? मैंने स्टार्टिंग में अपनी आवाज में, गब्बर सिंह की आवाज में एक ऐसा वीओ किया कि सारी दुनिया ये समझती है कि काउबॉयज तो टेक्सास से आए हैं। दरअसल ये बात किसी को पता नहीं कि काउबॉयज का जन्म तो हिंदुस्तान से हुआ है। हमारा एक हिंदुस्तान, एक राज्य जो हमारे हिंदुस्तान में, वहां से ये काउबॉयज आते हैं। और जितने डबिंग आर्टिस्ट उसमें डब कर रहे थे, जैसे चुमी जी के पापा दिनपाल जी, ही इज फ्रॉम बंगाल, सो आई मेड हिम अ बंगाली काउबॉय। Sumit Kaul was from Kashmir, so I made him a Kashmiri cowboy. Then late Sandeep Karnik was in Maharashtrian, so I made him a Maharashtrian cowboy. तो मराठी cowboy. इतने सारे accents मिला के वाह फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग बनी। और जो मेन विलन था नजीर साहब, वो मैंने दत्त साहब को दे दिया एज अ सरदार इन अ पंजाबी टोन। अनिल दत्त जी अनिल दत्त जी। ओके। तो जब आउटकम चैनल ने देखा, बोला यार हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार ऐसी फिल्म को आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी। तो ऐसा भी किया है मैंने। कितनी मजे की बात है ना ऐसे सब क्रिएट करने में, और उसको क्रिएशन है, लोकलाइज, टोटल ट्रांसक्रिएशन। बिल्कुल। समटाइम्स एक्सेंट, समटाइम्स डायलेक्ट्स, कभी डायलेक्ट दे देते किसी। हाँ हाँ। तो ये प्रोसेस कितना बढ़िया होता है, यू नो। और इस प्रोसेस की वजह से ही मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी आज हो रहा है, लोग देखने लगे हैं। क्योंकि पहले तो थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन होता था कि अच्छा हिंदी में है, ओके, नहीं कुछ मजा नहीं है, ओरिजिनल में हमें देखने में मजा आता है, जो इंग्लिश में मजा है वो हिंदी में कहाँ, यू नो, ऐसे कहा जाता था। पर ओवर द पीरियड आप सारे राइटर्स ने मिलके, डायरेक्टर्स ने मिलके एक माहौल बना दिया है सच में। शुमी, आपको कुछ ऐसा याद है कि आपने किसी कैरेक्टर को एक अलग ही लहजा दिया और पूरी यू नो वो कैरेक्टर बदल गई? ऐसी कई मूवीज है डिज्नी की, जैसे हमने ब्रेव फिल्म की थी, उसमें फॉर ऑडियो मैजिक, उसमें हमने अलग अलग देशों के राजा वगैरह थे, तो उनको अलग अलग डायलेक्ट दिया था। वी वर नॉट प्लेड ऑन एक्सेंट्स, वी प्लेड विद द डायलेक्ट्स। तो किसी को मध्य प्रदेश थोड़ा सा उस तरह का डायलेक्ट दिया था, किसी को हैदराबादी थोड़ा सा डायलेक्ट दिया था, और अवधी डायलेक्ट दिया था। तो उस तरह से हमने मतलब स्टडी किया था एक्चुअली, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि किस तरह से बोलते हैं। तो आई एक्चुअली वेंट ऑन यूट्यूब एंड गूगल एंड फाउंड आउट, कुछ क्लिप्स देखे कि ये किस तरह से बोलते हैं, इनको क्या हम लोग दे सकते हैं। और जिस तरह से हम अगर लाइक विजुअल प्रेजेंस ऑफ द कैरेक्टर, अगर कोई कैरेक्टर दिखने में अगर कोई उसका जो अटायर है वो ऐसा लग रहा है, जैसा भी मैं एक लिख रही हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए एक थिएटर रिलीज लिख रही हूँ, उसमें मुझे दिख रहा है कि वो कैरेक्टर थोड़ा सा धोती कुर्ता टाइप पहना है या कुछ, तो मैंने उसको गांव वाले का एक्सेंट मतलब प्रपोज किया है। और प्लस रेफरेंस देते हैं हम व्हेन वी हैव अ क्रिएटिव डिस्कशन की, लाइक ओके वी कैन यू नो गिव हिम लगान के आमिर खान जैसे वो बात करेगा, तो इट्स इजियर फॉर द क्रिएटिव जो हेड्स होते हैं चैनल के या प्रोडक्शन हाउसेस के, कि उनके लिए समझना कि व्हाट वी आर थिंकिंग, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट कैरेक्टर। तो उस तरह के, और हर एक किंगडम को अलग अलग फ्लेवर दे रही हूँ, जिससे मतलब लगे कि वो अलग ही किंगडम है, वहाँ के लोग उसी तरह से बात करते हैं, वहाँ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं। और कुछ अगर विलन है तो उनको बहुत हैवी ड्रामेटिक डायलॉग्स, समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द यू नो मूवीज ऑल्सो। अगर कुछ कॉमेडी है तो भी आई like you know I have used lines from movies like जो बापू सेहत के लिए हानिकारक है वो, या लड़की हो क्या,
मतलब इस तरह के जो डायलॉग्स फेमस होते हैं मूवीज के, वो भी हम कभी कभी अगर सिचुएशन वैसा है और अगर स्टोरी लाइन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, अगर कैरेक्टर पे और नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम वो सब उनको मतलब लिख देते हैं कि इस तरह से यू कैन ट्रीट दिस कैरेक्टर और यू कैन गिव इट मोर कलर। और एनिमेशन में तो डेफिनेटली देते हैं, बिकॉज यू हैव दैट मच स्कोप। लाइव एक्शन में उतना Scope. स्कोप नहीं होता है कि उनके फेस पे शायद नहीं जाए, बिकॉज एक अंग्रेज Character. बोल रहा है और उसको आप अगर कोई गांव वाले का डायलेक्ट दे दे या कुछ दे दे तो वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा उसके ऊपर। उनको वहां पर हम डायलॉग्स के साथ प्ले करते हैं, वहां पर हम तकिया कलाम के साथ प्ले करते हैं या डायलॉग्स को इंटरेस्टिंग रखते हैं, ताकि वो मतलब ऑडियंस को ग्रिप में रख सके कि जब उनके कन्वर्सेशन के दौरान। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, हमारे भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, डायलेक्ट्स हैं, अवधी है, जी। महाराष्ट्र में भी, हिंदी में भी इतने सारे डायलेक्ट्स हैं। तो इतना रिच कंटेंट अपने पास होता है, दैन डूइंग अ लिटरल ट्रांसलेशन, उसको एक अलग से फ्लेवर देके हर एक जो हिंदी भाषी है या जो रीजनल लैंग्वेज जो देखता है, फिल्म देखना चाहता है या सीरीज देखना चाहता है, उसके दिल के नजदीक वो काम जाए, वो दिखने को, सुनने को अपना लगे, है ना। तो मेरे ख्याल से शानूर अभी तक ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं। अमर जी, जी राइटिंग, इवन शुमी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लिखना बहुत लोनली काम होता है। जी। हम वॉइस एक्टर्स जो होते हैं, जाते हैं, आपने कुछ लिखा है वो पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाय पानी पीते हैं। राइटिंग इज अ वेरी लोनली जॉब। तो अमर जी, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब आप उसको कैसे लिखना पसंद करते हैं कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये जो काम है वो इतना एनग्रॉस्ड कर देता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस वो सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कई बार रिजेक्ट होके स्क्रिप्ट आती है, नहीं नहीं ये लिखा सही नहीं है, जरा इसको ठीक करके भेजिए, तो ये काम आप कैसे करते हो? आप अकेले बैठ के एक कॉर्नर में लिखते हो, या सब कुछ हो रहा है, या कुछ गाना हो रहा है, कुछ हो रहा है और आप लिखते हो, और घर के लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं? First of all, I don't agree. First of all, I don't agree that writing is a lonely job. It is not. Okay. At all. Okay. Okay. क्योंकि जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने फिल्म देखी है, and then I have to refer to some scenes when I'm writing a particular scene. यार यहाँ पे इसने उंगली यहाँ तो नहीं रखी थी, वहां तो नहीं, so I'm so involved in it. वो loneliness तो कहीं है ही नहीं, I am a part of it. वो तो मैं उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, मैं lonely तो हो ही नहीं। जी हाँ, नहीं, वो कैरेक्टर्स आपके आसपास होते हैं, पर आप एक रूम में अकेले होते हो। हाँ ठीक है, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन कैरेक्टर्स को आप आपके आसपास पाते हो, पर लिखना तो आपको अकेले में ही है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक कैरेक्टर मेरी समझ में आ गया, ओह माय गॉड आई लव दिस गाय, इसको तो ओके तो उसके पीछे में लग गया, यार इसको बेस्ट डायलॉग देता है, इसको कुछ देता हूँ, इसको यहाँ देता हूँ, इसको यहाँ कुछ करता हूँ, यहाँ कुछ क्या करता बात है। और ये हंसते खेलते, मतलब राइट, जैसे मेरे बेडरूम में मेरा सेटअप है राइटिंग का, तो मैं वहाँ अकेला दरवाजा खुला खोल के बिल्कुल बैठा रहता हूँ, चाय पानी आती है, मुझे एक नैप लेना है तो नैप भी ले लेता हूँ, खाना ले, घूमते फिरते लिख देता हूँ। Nothing that I'm feeling very lonely while I'm writing or something. Nor do I have to go very deep into concentration. कुछ नहीं, they are very easy. थोड़ी सी समझ लो, एक बार समझ जाओ, अपने तरीके से उसको लिख दो। मेन थिंग एज आई सेड कि इंडियन जिनके लिए ये फिल्म डब होगी, उनको ये समझ में आनी चाहिए, उनको इस पे हंसी आनी चाहिए, उनको इस पे रोना आना चाहिए, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। पर आप लिखते रहते हो कॉन्स्टेंटली, कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब उन्हें आपको, जैसे कल शानूर इज हियर, शानूर अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं बोल पा रहे, सुनाई दे रहा है, अच्छा वहां पे वो जो माइक का बटन है उसको आपने म्यूट करके रखा है नीचे, अच्छा आप सुन पा रहे हो मेरी बात? हाँ, लेकिन हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे शानूर। कितनी ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा जल्दी से वो सॉल्व कर लो माइक का इशू ना, वहां नीचे देखो एक माइक का बटन है आपकी स्क्रीन पे, अगर आपने उसको म्यूट कर रखा है तो फिर शायद Can you बातें try it नहीं with your phone? Can you try it with your phone? Trying with his phone only, yes. Okay. ओके, रोना मत,
आ रहे हैं जल्दी से जल्दी से मिलेंगे। Get some help, तो शानू। हाँ, गेट सम हेल्प ना, जल्दी से, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आप तो, मैं तो इतना लिखा है, इतना आप बोलते हो, तो मैं आपसे बहुत बेताब थी बातें करने के लिए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तेरे हिस्से के जैसा सारे जवाब देने पड़ रहे हैं। अमर जी, जैसा आपने कहा कि आप लिखना बहुत एंजॉय करते हैं, है ना? तो शुमी, आप क्या कैसे करती हो? मतलब ये क्या आपको लगता है ये बिकॉज आपका पहले तो हाँ आया था, हाँ लोनली जॉब है, बिकॉज लोनली यस, है. I do हाँ, agree to it ओके, because you need a kind of motivation to do it continuously because I have been a dubbing director also. तो वहाँ पे जो interaction होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ और स्टूडियो हाँ, इंजीनियर के साथ, तो उस समय कई बार बहुत अच्छी चीज़ निकल आती है और वो हाँ, the entire process is very enjoyable. और राइटिंग में कभी-कभी ऐसा होता है कि if I am writing something that I don't enjoy writing, हर तरह का जॉनर आता है लिखने के लिए. हाँ, I love हाँ, writing हाँ, songs. सॉन्ग्स के समय मैं कभी लोनली फील नहीं करती. एंड और अगर मैं कोई कोरियन स्टफ लिख रही हूँ विच आई लाइक वॉचिंग, सो आई डोंट फील ओके, लोनली व्हेन आई एम राइटिंग देम. अगर नॉन फिक्शन हो तो मैं तो एक्चुअली लिटरली छोड़ दिया है नॉन फिक्शन लिखना because I अच्छा, don't enjoy watching non-fiction, so that is why I don't enjoy writing non-fiction. तो मैं non-fiction avoid करती हूँ और कभी अगर कोई insist कर रहा है लिखने के लिए तो मैं लिखती हूँ, but that time I find it very boring actually. So I don't get that kind of motivation to write non-fiction. तो fiction because I enjoy watching fiction, so I enjoy writing fiction. और अगर वो वाह, मेरे genre का है तो फिर I absolutely enjoy writing it, स्पेशली सॉन्ग्स. तो दैट इज ओके, लाइक माय न्यू फाउंड लव. किसी को भी मैं यही कहती हूँ कि आप पहले मुझे गाने दीजिए. अगर कोई ऐसी मूवी है जिसमें गाने हैं, आई वुड लव टू राइट देम फर्स्ट. उसके बाद अगर देखते हैं कि टाइम बचता है तो कुछ और कर लेंगे. सच में तो बहुत मजा दैट इज रहता है व्हाई गाने लिखना, उन्हें गाने लिखना यू नो वो इंग्लिश से उसका फ्लेवर हिंदी में ले आना, हिंदी में ले बहुत आना. मजे की। आई थिंक अमर जी, आपने पहला काम वही किया था, सॉन्ग जी, राइटर, है जी, ना? जी। तो आप शायद दोनों ये ज्यादा पसंद करते हैं गाने लिखना, तो बाकी तो है ही, मतलब वो तो इट जस्ट फ्लोड कि आप Yes, लिखते जाओ, उसको लोकलाइज करते जाओ। तो yes. आप अमर जी, आप आपने मुझे कहा कि आप तो बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर थे, जी, है ना? तो जी. राइटिंग में कैसे आ गए? मतलब कैसे हुआ ये? It all started from my school time. जब ओ, मैं स्कूल में था तो मुझे लिखने का शौक था. बहुत सब सारे ड्रामेटिक्स में मेन एक्टर मैं ही हुआ करता था. स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, म्यूजिक में. तो इस तरफ मेरा ध्यान थोड़ा खिंचाव ज्यादा ही था शुरू से. And I used to enter probably all the elocution competition which I used to win also. The biggest one was at the Lions Club, Bandra. Mark Anthony's funeral oration जब मैंने ओ, बोली थी वहाँ पे. तो खिंचाव 100% इसी तरफ था. But when I grew up, so we were not very rich. The family was not very rich. So first I thought probably कि कोई profession अपने लिए एक बनाया जाए. उसके बाद then I हेलो, continued profession. आ गए, ये नाउ वी कैन हियर How यू. we can यस, अब भाई सुनाई दे रहा है सॉरी मैं सभी। इंटरप्ट कर रहा हूँ सर. मेरे कोई साथ ये नहीं, हमेशा होता है. मैं चाहे इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊँ, यूट्यूब पे जाऊँ, मेरा आधा पौना घंटा ऐसे ही वेस्ट होता है. कोई नहीं, हम आपसे तू जुड़ेंगे जानबूझ के करता है जल्दी। बचने के लिए. मेरी कुंडली में कुछ है, ज्यादा गैजेट्स में घुसता हूँ ना, इसलिए. अच्छा, Yeah, so I was शानूर, saying that हमें अमर जी बता रहे थे कि that's how उन्होंने it all started. कैसे ये काम शुरू किया। आई कम जी टू जी यू। जी, सुना मैंने. जी जी जी. हाँ, So जी, that's how I started. And then finally I had a friend of mine. With him I started a small studio where we used to do only songs. I used to write a lot of lyrics, compose the songs, sing them. उन दिनों एल्बम्स का जमाना चलता था तो मैं अपनी एक एल्बम निकालना चाहता था. मी मुंबई का नाम से, जो अब जाके रिलीज अच्छा, हुई. तब से अभी ओ, तक तो हुई भी नहीं थी. ओ, तो वहीं पे मिस्टर शब्बीर कुमार के बेटे मेरे पार्टनर से कीबोर्ड सीखते थे. तो वो अच्छा, मुझे देखते थे लिरिक्स लिखते हुए. एंड ही वाज वेरी क्लोज टू ब्रिज. तो ही सेड कि अच्छा, सर अगर आपको कोई राइटर चाहिए तो मैं आपको बहुत अच्छा राइटर दे सकता हूँ. बिकॉज ही वाज ओ, ऑलवेज इन नीड ऑफ, क्योंकि कार्टून नेटवर्क में बहुत सारे म्यूजिकल्स होते थे उस जमाने में जी, और जो सारे डब करने पड़ते थे. जी, तो वो मुझे ले जाके उन्होंने मिलवाया ब्रिजी से. और फिर एक के बाद एक एंड देन ही प्रॉब्ली सॉ माय
talent in writing, and then he encouraged me to write scripts, and that's how it all started. Then the studio closed, the gang split up, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, and then I stuck to him only. फिर उसके बाद वहीं मैंने डिस्कवरी में तो खैर इतना काम किया, डब डायरेक्शन में भी मैं, जैसे मैंने कहा, 5 times in a row द बेस्ट डबिंग डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला मुझे, एंड लिखने में तो 500 600 700 पता नहीं कितने प्रोग्राम्स लिखे होंगे, फिल्में भी आती थी, म्यूजिकल्स बहुत आते थे। तो जैसे एक जापानीज म्यूजिकल आया था कार्टून नेटवर्क में 110 एपिसोड्स का, जिसमें 95 एपिसोड में सिर्फ गाने थे। तो जब हमने जापानीज ट्रांसलेटर को बुलाया वो गानों को ट्रांसलेट करने के लिए, तो दे वर चार्जिंग पर वर्ड, and it was like a bomb what they were charging. Absolutely. मैंने उनसे कहा भैया आप लोग जाओ, and I spoke to Bridgie and ma'am. I said इनको जाने दो, ये सारे गाने मैं लिख दूंगा, आप चिंता मत करो। आप कैसे लिखोगे, आपको थोड़ी जापानीज आती है। मैंने कहा कहानी मैंने लिखी है, मुझे पता है कि कहानी में क्या हो रहा है, तो ये सिचुएशनल गाने, मैं बस विजुअल देखूंगा और गाने लिख दूंगा, परफेक्ट मीटर पे उसको बिठा दूंगा, आप गा लेना, ठीक है। It just went off very smooth. So that's how, क्या बात, ऐसा होता क्या। अच्छा, शानूर जो आ गया, शानूर मुझे याद है आप गोली के नाम से एक छोटे बच्चे स्टूडियो में आते थे, फटाफट डब करके बहुत प्यारा डबिंग करके चले जाते थे, पर आज आप इस पैनल पे हैं एक राइटर, वेटरन राइटर के हिसाब से आज आप यहाँ पे हो, तो मुझे बताओ आपकी ये जर्नी कैसे और कब शुरू हुई? ये मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई थी कि जैसे अमर जी ने बताया, वो एक सीरीज थी, तो उसमें हम मिलके डायलॉग्स बनाते थे। फिर ऐसी कई जगह होता था जहाँ पे मैं कुछ फनी डायलॉग्स बना लेता था या बेटर अडेप्टेशन कर लेता था। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि ट्रांसक्रिएशन और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है, तो मुझे हमेशा ट्रांसक्रिएशन में इंटरेस्ट आता था, और मुझे लगता है कि गूगल ट्रांसलेट करता है और राइटर्स ट्रांसक्रिएट करते हैं, तो यही फ़र्क है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन में। तो मैं काफ़ी सारे डायलॉग्स बना लेता था, करता था, तो मुझे कहा कि आप लिखोगे तो अच्छा होगा। तो मैंने ऐसे ही एक आध मूवीज़ लिखी और वो बहुत अच्छी लगी। एक वाई हिम थी जो साउंड एंड विजन में आज भी लोग बात करते हैं कि बहुत ही कॉमेडी थी, उसके डायलॉग्स भी याद है उन्हें आज तक। ऐसे में लिखते गया और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वॉइसिंग से तो ठीक था, मतलब वो तो बचपन से करता ही था, पर राइटिंग करने का मुझे लगा कि इसमें कुछ है मेरे अंदर जो उसमें मैं कर सकता हूँ। तो मैंने प्रोफेशनली सीखा सब कुछ, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे स्क्रीन प्ले होता है, क्या होता है ह्यूमर। और उसके बाद मैंने एक सीरीज लिखी थी कार्टून नेटवर्क के लिए शारिब हाशमी के साथ, जो फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी के साथ थे, तब वो राइटर थे, और उनके साथ बहुत कुछ लिखा मैंने। एक राखी का शो था, उसमें मैं गैग्स लिखता था लाइव उसी वक्त 5-10 मिनट में। फिर मैंने बिंदास प्ले जो एक चैनल था, उसके लिए फुल फ्लैश फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्शन से 3 साल तक 2 शोज लिखे। तो उससे मेरे मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत नाम हो गया, और इस तरह फिर सब चलने लगा। कितनी इंटरेस्टिंग रही ये बात शानूर, आपसे सुनने में बहुत अच्छा लगा कि आप एक आर्टिस्ट से, क्या आप तीनों को लगता है कि अगर आप अच्छे राइटर तब बन सकते हो जब आप एक अच्छे वॉइस एक्टर भी हो, क्योंकि स्क्रीन पे जो हो रहा है, जो कैरेक्टर बोल रहा है, जिस हिसाब से बोल रहा है, उसका जो मीटर है वो तो टोटल फॉरेन है, फिर वो तो स्पेनिश हो, वो जापानीज हो, वो इंग्लिश हो, उसका मीटर अलग है। लेकिन क्योंकि कई बार एज अ डबिंग डायरेक्टर मुझे ऐसी स्क्रिप्टें आती थी जो ट्रांसलेटेड थी, जिसका कोई मैच वहाँ पे होता नहीं था। इट यूज्ड टू बी सच अ पेन। उसमें हमारा स्टूडियो टाइम, जैसा मैंने कहा, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो वॉइस एक्टर, डायरेक्टर, इंजीनियर सभी बहुत खुशहाल होते हैं, क्योंकि भाई अभी इसने लिखी है, हमें आंख बंद करके इसको डब करना है, क्योंकि वो मीटर में लिखी है। तो शानूर, आप कैसे ये काम करते हो कि एज अ वॉइस एक्टर आपको इससे फायदा होता है? यस, बहुत हेल्प मिलती है मुझे। जैसे कई बार होता है जो लिप्स कहीं बंद, हम हिंदी में हम कह रहे हैं और इंग्लिश में या किसी भी साउथ में कोई भी लैंग्वेज का अगर लिप्स ओपन है, तो उसमें क्योंकि आप आर्टिस्ट है तो आपको पता है कि आपको ओपन लिप पे बंद करना है, तो आप वैसा एक वर्ड कॉइन कर सकते हैं जिससे कि वो जेस्चर पे सूट करे, और जो भी एक्सप्रेशन है, बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन जो है, जो आईज है, उनको मैच करने वाले डायलॉग ही आप लिखें। तो वॉइसिंग का आइडिया हो तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप स्टूडियो में जाते हैं तो सिर्फ आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है और बाकी सब ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होता है। बिल्कुल। शुमिता,
क्या आपको लगता है कि वॉइस आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है फॉर अ राइटर? वॉइस आप तो खुद आर्टिस्ट कभी का, हाँ, मैं बचपन में मैं आई आल्सो यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वॉइसिंग, सो आई नो द ओके। आर्ट की, मतलब मुझे पता है कि कैसे वॉइसिंग होती है, कैसे की जाती है। और तो वो एक नॉलेज होना, इट डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज वेन एवर वी राइट स्क्रिप्ट और हम सिंक चेक कर रहे हैं, पॉजेस मार्क कर रहे हैं, तो हम बोलकर चेक हाँ। करते हैं कि वो बराबर मीटर में फिट हो रही है या नहीं, वेदर द प फ ब भ म ओ लिप्स वहाँ पर हाँ। वही वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं जो इंग्लिश में, ताकि अदरवाइज इट साउंड्स वेरी ऑड, स्पेशली इन लाइव एक्शन। अगर उसका ओ लिप है और आप वहाँ पर कोई और ऐसे सिंपल वर्ड रखेंगे तो इट विल साउंड वेरी ऑड। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखने, बीइंग अ डबिंग डायरेक्टर आल्सो डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज मैंने डबिंग यस। डायरेक्शन के पहले कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी थी, और डबिंग डायरेक्शन करने के बाद जब मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी, आई सॉ अ वास्ट डिफरेंस इन माय ओन स्क्रिप्ट्स। तो बिकॉज वो परफेक्ट। जो ऑन द वहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में रहकर देखना कि काम कैसे होता है, हाउ अ स्क्रिप्ट, व्हेन यू गेट अ स्क्रिप्ट, हाउ इज इट डब्ड, हाउ डज द वॉइसिंग आर्टिस्ट डब इट, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ डबिंग डायरेक्टर, तो यू अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से और बेटर लिख सकते हैं। एंड व्हेन आई वाज अ डबिंग डायरेक्टर, मैं आई यूज्ड टू गेट सम वेरी पुअर स्क्रिप्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं स्क्रिप्टिंग करूँ तो बस कोई मुझे गाली ना दे, एटलीस्ट इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख दूँ कि गाली ना पड़े, कि मतलब अरे क्या स्क्रिप्ट लिखी है। सो दैट इज हाउ व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस, कि मतलब ठीक ठाक स्क्रिप्ट लिख दूँ कि मतलब कोई ये ना बोले कि अरे यार क्या स्क्रिप्ट लिखी है। अमर जी, आप खुद जी वॉइसिंग करते हैं तो जी डेफिनेटली ये आर्ट आपको लिखने में भी बिल्कुल मदद कर रही होगी, है ना? तो आप 100%। कैसे, डू यू एग्री टू इट, और आप मानते हैं कि एक वॉइस एक्टर अच्छा राइटर भी हो सकता है? जैसे अभी शुमी ने कहा कि डबिंग डायरेक्टर होना, वॉइस एक्टर होना आपको बहुत मदद करता है अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हो, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन करके तो कोई उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना, शानूर? तो आप जी जी। शानूर मुझे बताइए, आप वॉइस एक्टिंग ज्यादा पसंद करते हो या लिखना ज्यादा पसंद करते हो? मैं लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं अच्छा। लिख रहा होता हूँ तो मैं जो कैरेक्टर लिख रहा है, मेरा एक प्रोसेस है राइटिंग का, उसको मैं हम्म। मैरिनेशन बोलता हूँ। तो ओ, मैं जैसे मैं डायलॉग्स जब ट्रांसलेट हम नहीं करता हूँ। हाँ, खाने की तरह। तो मेरा प्रोसेस ऐसा है कि मैं डायलॉग्स ट्रांसलेट नहीं करता हूँ। मैं सीन्स है हम्म। ना, सीन्स को एक अपने देसी वर्जन में, जो अगर वो हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, तो अगर जो भी हो, इंग्लिश हो या साउथ हो, वो किस तरह होना चाहिए, जो कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने जो 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 टीचिंग मैंने ली है स्क्रिप्ट राइटिंग की, उसमें कैरेक्टर कहाँ से आता है, वो टपूरी है, वो बिजनेसमैन है, वो कहाँ से है, उसको ध्यान में रखते हुए वो मैं सीन्स को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और उसके हिसाब से फिर डायलॉग्स बनते हैं। भले इंग्लिश में हो सकता है कुछ और ही बोला हो, पर मैं हिंदी में ऐसा कुछ बनाता हूँ जो सीन को जस्टिफाई करे, और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है उसको उसको उनको एंजॉय पसंद है। करे। जैसे अभी मैंने जो ड्रैगन बॉल जी लिखी थी रिसेंटली, थिएटर रिलीज हिंदी में, उसमें फुल अडेप्टेशन था, और थिएटर में हम लोग जब बैठ के देख रहे थे तो पब्लिक बहुत खुश थी, बहुत हंस रही थी। उसका रिस्पॉन्स ही अलग था, क्योंकि वो सीन के मुताबिक डायलॉग्स थे, ना कि इंग्लिश में ये बोला तो उसी को सीधा सीधा ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट किया। तो कुछ जी। बताओ ना हमें कि ऐसा कुछ मजेदार लाइन जो आपने बनाया, जो जिसका आपको भी मजा आया और सुनने वालों को, देखने वालों को भी अच्छा लगा। ऐसे मैंने साउथ की लिखी कुछ पिक्चरें, लेकिन ज्यादातर जो मैं हीरो डब करता हूँ तो मैं अपने डायलॉग ही बनाता हूँ, स्क्रिप्ट ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। बोलो। तो उसमें एक विजय का डायलॉग मैंने बनाया था कि मैं सीधे काम भी टेढ़े तरीकों से करता हूँ। तो मेरे हम लोग के घर में एक छोटा बच्चा है, मेरे साले का बेटा, वो ये बोलते घूम रहा था, मैं सीधे काम भी टेढ़े तरीकों से करता हूँ। तो वो इतना लोगों को पसंद है, उस पर काफी टिकटॉक्स भी बने थे। तो मेरे कितना साउथ के डायलॉग्स कॉम्प्लीमेंट। काफी। हाँ हाँ। हाँ। क्योंकि वो तो बिल्कुल है। और जी साउथ का है ना, साउथ की फिल्मों का पहले तो इतना मैं खुद एंजॉय नहीं करती थी डब्ड वर्जन्स, लेकिन अभी तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें लोकलाइजेशन इतना नजर आता है ना, कि साउथ लैंग्वेजेस का अपना एक लहजा होता है, जी चेस के जी बाद। जी तो उसको लेकर आप जो लाइंस बनाते हो, जैसे फ्लावर जी। ऐसा ये जो है, हम्म। तो उसमें आप उसको वो मैं कई बार जब डबिंग को जाती हूँ तो कान में स्पेनिश सुनाई दे रही होती है, तो मुझे शुरू शुरू में ना, मैं वो ही लहजा पकड़ के बात करती थी, मतलब जी जो वो जी जी। सुनाई दे रहा है ना, अच्छा वो तो वैसे बात कर रही है, तो
कल्पेश या चारू ये सब मुझे तब बताते थे कि स्वाति जी आपको वो एक्सेंट नहीं पकड़ना है, आपको हिंदी रखना है या आपको इंग्लिश साउंड करना है। तो ये बात मुझे आजकल बहुत ही पसंद आ रही है कि आप सारे राइटर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वो कभी-कभी तो ओरिजिनल कंटेंट से भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे अमर जी से ये बात पूछनी है कि आप अगर कोई कंटेंट लिखते हो तो जब स्क्रिप्ट लिखते हो या किसी और की स्क्रिप्ट एज अ वॉइस आर्टिस्ट पढ़ने जाते हो तो आपको लगता है कि वो सही ढंग से नहीं लिखी, क्या वॉइस वर्कशॉप्स होने, राइटिंग वर्कशॉप्स होने, स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप्स होने जरूरी हैं? क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्टें अभी भी आती हैं जो लिटरल ट्रांसलेशन वाली होती है। मेरा ख्याल है जरूरी है। तो जैसे वॉइस वर्कशॉप्स होते हैं वैसे मुझे लगता है ऐसे वर्कशॉप भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, है ना? जी, तो मैं कुछ कह सकता हूँ इस बारे में? बोलो। देखिए क्या होता है कि ये जो डबिंग का काम है ना, लोग इसको बहुत हल्के में लेने लगे हैं कि बोलने के पैसे मिल जाएंगे, इंग्लिश में बोला कहा वो वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो लिख दिया, गो बोलो तो जाओ लिख दिया। पर ऐसा नहीं है, आपको अपनी जो प्रोफेशन है जो आप कर रहे हो उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और राइटर एक ऐसी चीज है, राइटर के पास इतनी पावर होती है कि वो सालों से समाज बदल सकता है, लोगों की सोच बदल सकता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल काम भी है एक तरीके से। अगर उसको सीरियसली नहीं लेंगे ना तो नहीं होगा। तो वो समझने के लिए अगर जैसे वर्कशॉप्स हो, या ज्यादातर मैंने तो देखा है कि लोग ना राइटर को लिखने के लिए टाइम नहीं देते हैं। जैसे मुझे कई बार लोग कहते हैं कि 5 दिन में चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ यार मैं राइटर हूँ, माइक्रोवेव नहीं हूँ। टाइमर सेट किया और उतने देर में गर्म करके मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम सब सीख भी जाते हैं ना, उसके बाद भी जो वक्त जो है ना वो इतना कम मिलता है, तो फिर जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये ट्रांसलेशन है। क्यों? क्योंकि वीडियो देख के नहीं लिखा गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल ये बात I would also like to add something to this कि सीरियसली जो लेना चाहिए उस बात को लेकर, बिकॉज इवन व्हेन आई से समबडी कि आई एम अ राइटर लाइक फॉर लोकलाइज्ड कंटेंट, सो अच्छा राइटर व्हाट डू यू राइट? ओके, द इंग्लिश मूवीज दैट कम इन थिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आई राइट देम इन हिंदी। अच्छा, इंग्लिश टू हिंदी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन आई गेट। मतलब वो सबटाइटल नीचे जो आते हैं वही ना, सबटाइटल लिखते हो, सबटाइटल। बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ, बिकॉज मैंने स्टूडियो में देखा है राइटर को फोन जाता है, अच्छा ये फिल्म आई है कल चाहिए, यू नो। तो मैं हमेशा वही कहती हूँ कि इतना आसान नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को कल चाहिए बोल के, तो वो फिर आपके पास वो उतनी ही बुरी स्क्रिप्ट आएगी, ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट ही आएगी। तो मुझे लगता है राइटर को वक्त देना, उसे प्रॉपर, हाँ होता है यू नो, वो प्रेशर होता है कि ये रिलीज है, वो जाना है उस दिन को। तो आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? जैसे अभी शानूर ने कहा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्या आप ऐसे अमर जी आप बोल देते हैं सीधा कि भाई 2 दिन में तो मुझसे नहीं होगा? और ऐसे प्रोजेक्ट गए हैं आपके? नहीं, अगर ऐसे इम्पॉसिबल टाइम दिया जाए कि बिल्कुल यानी 2 दिन में, तो जब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। I mean, you can't accept it. How can you? If you're not able to deliver on time, so then you shouldn't take the project. करेक्ट। पर वो जो पैसे कमाने की जो होड़ लगी हुई है कि भाई लिख के छाप दो। मुझे that is not kind of the world now, और आगे भी आएगा ना कुछ ना कुछ। वो फिर थोड़े टाइम वो हर जगह, वो तो हाँ, वो सिर्फ थोड़े टाइम, वो राइटर सिर्फ थोड़े टाइम तक लिख सकेगा, फिर वो उसका लॉन्ग रन में तक नहीं चलेगा। मेरे पास पुष्पा आई थी और मुझे कहा गया था 5 दिन में लिखने के लिए। मैंने हाथ जोड़ लिया था, बोला तो साउथ की मूवी ऐसे ही डिफिकल्ट होती है और वैसे ही मैं स्लो हूँ बहुत। मतलब अमर जी, सुमिता वगैरह ये लोग तो बहुत फास्ट। अमर जी तो खड़े खड़े स्पॉन्टेनियसली मस्त से मस्त डायलॉग बना लेते हैं। मुझसे वो नहीं होता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा घुसना पड़ता है मुझे। फेयर इनफ। नहीं, वो तो गॉड गिफ्ट होती है जो कोई जो बिल्कुल यू नो ऑन द स्पॉट लिख देते हैं, बोल देते हैं। पर मुझे लगता है राइटर को वक्त देना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। जैसे आपने कहा, आप सब मानते हैं, क्या कोई आप में से कोई राइटर्स वर्कशॉप फ्यूचर में लेना चाहेगा, करना चाहेगा? तो I wouldn't mind. तो शुमी, आपकी क्या एडवाइस होगी एक जो नया राइटर इस फिल्म में स्क्रिप्टिंग के लिए जो आना चाहता है, तो आप उसे क्या एडवाइस दोगी?
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश जो बोला जा रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या हाँ क्रिएटिव इंटेंट है, उसका इंटेंट क्या है। कई बार वहीं पर वही अगर सही नहीं हो तो आगे तो मतलब, और आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो उसमें आपका कमांड होना, जैसे अगर हिंदी लिख रहे हाँ हो तो हिंदी में, या आप किसी भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उसमें आपका कमांड होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें, और प्लस थोड़ा-सा ड्रामा का जो ड्रामा नॉलेज की, जो ड्रामा हाँ है वो उसको किस तरह से रेप्लिकेट किया जा सकता है लैंग्वेज में, क्योंकि वही ड्रामा, वही ह्यूमर आना चाहिए आपके कंटेंट में, एंड दैट विल नॉट कम विद ट्रांसलेशन, यू विल हैव टू अडैप्ट इट। तो वो थोड़ा बहुत अगर आप में है, वो ड्रामा सेंस है, तो आई थिंक देन यू कैन बी ट्रेन्ड टू बी अ राइटर फॉर लोकलाइज्ड कंटेंट। फिर वो लिप सिंक, वो जो टेक्निकलिटीज है, प फ ब ब म ओ, या फिर लिप सिंक, या फिर उसको किस तरह से लिप में फिट करना है, पॉजेस कैसे मार्क करने हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से फॉलो करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जा सकती है। बट अगर कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ है और हिंदी सही नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो मतलब आपको एंड अंग्रेजी भी प्लस उतनी उनको, स्ट्रांगली, हाँ अंग्रेजी एग्जैक्टली, भी समझ में आनी चाहिए। एंड स्टूडियो में सेशंस होने चाहिए कि उनको जाके दिखाना कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट डब होता है। दैट नॉलेज इज हाँ ऑल्सो वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, कि आप जाके उनके दिखाएं कि आप जो स्क्रिप्ट लिखेंगे वो किस तरह से डब हो रही है, किस तरह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑन द टेबल इट्स इनएविटेबल। अच्छे से अच्छे राइटर की स्क्रिप्ट में राइटर खुद अगर डायरेक्ट करेगा तो भी चेंजेस करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होते हैं, वो तो होते हैं, वो हम भी करते हम्म। हैं कि थोड़ा चेंज करते हैं। शानूर, आपको क्या लगता है कि मतलब आप मुझे कैसे मुझे ऐसा लगता है कि वर्कशॉप्स को हम लेकर? लोग बहुत किसी नए को अगर बताना सिखाना, तो जब अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो हम लोग बहुत प्रिपरेशन लेके, जैसे मैं 15-20 दिन लेता हूं, उसके बाद जब डिलीवर करने जाते हैं ना, तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, जो क्लाइंट को चाहिए ना, वो अलग ही होता है दुनिया से। एग्जैक्टली। जैसे मुझे एक बार किसी ने लाजवाब डायलॉग में लिखा था, कुछ था ये लाजवाब है, तो मुझे पूछा कि कौन बोलता है लाजवाब आजकल, ये ओ कौन सा वर्ड होता है। हम्म तो अब ऐसे ऐसे ऐसी बार, कई बार ऐसा होता है, तो हमको स्पॉन्टेनियसली उसको चेंज करना होता है कि लाजवाब नहीं, ठीक है चलो, अभी हो सकता है ये कोलोकियल नहीं है, जो एक ज्यादा जो सिटी में लोग हैं वो लाजवाब नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मस्त है या अच्छा है। और दूसरा, कमाल है। जब हाँ से डिज्नी थिएटर रिलीजेस करने लगी है, तब से बहुत बड़े बड़े फिल्म के राइटर्स इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे मयूर पुरी साहब है, मनोज मुंतशिर हैं। तो जंगल बुक जब लिखी थी मयूर सर ने, तो उसके बाद नेक्स्ट मूवी आई थी ब्यूटी एंड द बीस्ट, और बहुत कम टाइम था उनको, और कोई अच्छा राइटर चाहिए था, तो उन्होंने मुझे समझा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो क्या मुझे बात। दी गई मूवी। तो हुआ क्या है कि अब जब हम लोग कम से कम मैं जब एक नरेशन देना, हम एक स्क्रिप्ट रीड करते हैं, तो वो भी ऐसे रीड करते हैं जैसे कि ये नई पिक्चर है और अब ये जाके सेट पे बनने वाली है। तो हाँ उसका वो हाँ डायलॉग और वो इमोशन, और यहाँ से या यहाँ से है, एक ये चीज आ गई है, और अच्छी और वैल्यू भी बढ़ गई इनके आने से। ये तो ये सब चीजें होती है। और जैसे मुझे याद है कि प्रियंका चोपड़ा का एक पोर्शन पार्ट था मैट्रिक्स में, तो उसके लिए गाइड ट्रैक करते हैं हम लोग, एक कोई और आर्टिस्ट करता है जिसको बाद में फॉलो करते हैं, तो उन्होंने वो डायलॉग अच्छे से सिंक में कर लिए। पर जब प्रियंका की बारी हुई एंड शी वाज सिटिंग विद मी, और जब डिस्कस कर रहे क्या डायलॉग, तो उनका ठहराव, एक एक्टर का डबिंग, और हाँ डबिंग हाँ आर्टिस्ट थोड़ा सा सिंक के लिए भागता है, ऐसा नहीं वो खराब काम कर हाँ रहा है, पर वो टेक्निकल में ज्यादा रहता है, और जो एक्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस में ज्यादा जाते हैं। तो राइटिंग का ऐसा काम है ना कि क्लाइंट, माहौल, आर्टिस्ट, सबके हिसाब से वो चेंज होते रहता है। तो आप वर्कशॉप में सिखा सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें, पर जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो आपको अंदर से ही लानी पड़ती है, एक सेंसिटिवनेस लानी होती है कि जो कैरेक्टर को समझ सके, उसकी बातें समझ सके। जैसे डीसी के मैं लिखता हूँ, जो साइंस फिक्शन होती है उसको इजी हिंदी करना पड़ता है, तो वो सब चीजें जो है वो एक्सपीरियंस से ही आती है। अमर जी, जी, आप बताइए कि कैसे आप वॉइस वर्क राइटिंग वर्कशॉप को आप कितनी अहमियत देते हैं? मैं अहमियत तो जरूर देता हूँ, मगर खुद ऐसा करना नहीं चाहूंगा। मुझसे झेला नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे भी तो राइटरों मुझे के ऐसे भी राइटर्स हैं जो वे टू गो को जाने का रास्ता लिख देते हैं। I've come across a lot of guys like this. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी तो इतने सालों बाद इतनी स्क्रिप्टें दूसरों की लिखी हुई पढ़ते पढ़ते, मतलब आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टॉलरेट एनी मोर। मेरा तो यही कहना है।
आई रिमेम्बर आई वुड नॉट लाइक टू नेम द प्रोजेक्ट, एक डिज्नी का प्रोजेक्ट था जिसमें लाफ्टर ट्रैक्स थे, एंड दैट टाइम आई वाज डबिंग डायरेक्टर। तो जो राइटर के लाइंस थे उनमें मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि लाफ्टर ट्रैक को जस्टिफाई करने वाले लाइंस होने चाहिए। अभी हंस रहे बैकग्राउंड में, तो वो अगर जस्टिफाई नहीं होगी लाइन में, तो मैंने सिर्फ राइटर से ये कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इस बात का कि लाफ्टर ट्रैक्स जस्टिफाई नहीं हो रहे, ह्यूमर नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो डबिंग डायरेक्टर और वॉइसिंग आर्टिस्ट कर देते हैं ना। और जब करते तभी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो हो जाता है। एंड देन आई वाज लाइक, वाओ। मेरे पास बोलने के लिए और कुछ बचा नहीं था। आई सेड ओके फाइन। और कभी कोई आर्टिस्ट होते हैं, उनके उनके थोड़ा बोलने का रिदम थोड़ा कभी स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, सबका हाँ, अपना अपना एक लहजा है। अपना वो अपना। छोटा हो गया तो हाँ कभी फोन बिल्कुल। करता है, अरे डायलॉग सिंक में नहीं आ रहा, तो उसको सिंक में लाना पड़ेगा। अभी हर सब कुछ स्क्रिप्ट में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। एग्जैक्टली। शानूर, आपके करियर हाइलाइट्स क्या हैं एज ए राइटर? करियर हाईलाइट जैसे मैंने आज वही आज अगर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है, दिस वाज माय बेस्ट शॉट, कि मुझे पता है और भी होंगे, पर अब तक का आपका बेस्ट काम क्या रहा? अब ये मैं कैसे बोल सकता है, तो किसी और को बताना अरे चाहिए। नहीं, वो तो बताएंगे, पर अपने आप को खुद को लगता है ना कि जैसे जैसे मुझे लगता है मैंने कोई मेरिल स्ट्रीप की फिल्म डब कर ली, तो मुझे लगता है ओ गॉड जी यस आई हैव डन इट, यू नो। जी जैसे मैंने अभी उनके हाल ही में डोंट लुक अप की, जिसमें वो प्रेसिडेंट जी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो मुझे लगता है अरे ये मेरा करियर हाईलाइट है, मतलब मैंने उनको डब कर हम्म लिया, मैंने रेवती को डब कर लिया, बस दीज आर हम्म माय करियर हाइलाइट्स। दूसरे तो कहते ही हैं, पर अपने आप को खुद को भी तो लगता है, तो ऐसा आपको कब लगा है? ऐसा अभी रिसेंटली मैंने जो ड्रैगन बॉल जी बताए लिखी थी, जो कि एक एनिमे कम्युनिटी है अपने इंडिया में, और जो बहुत ही एंथुजियास्टिक है उसके बारे में। तो बहुत प्रेशर भी था कि उनको जो है वो खुश रखना है, जापानीज कल्चर को भी इंटैक्ट रखना है और किसी को हर्ट नहीं करना है। तो और उस पे बाकायदा एक मेरे इंस्टाग्राम पे थिएटर के रिएक्शंस भी हैं, जो लोग हैं जिन्होंने देखा, उन्होंने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे। तो रिएक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि वो शायद होगा, वरना मैं तो हर एक काम को अपना बेस्ट ही देता हूँ और चाहता हूँ कि वो बेस्ट ही हो। डेफिनेटली। अमर जी, आपने तो इतना सारा काम किया है, पर ऐसे कोई जो दिल को छूने उसको वो आप हमेशा याद रखते हैं कि भाई वो काम मेरा सबसे बढ़िया था? बिल्कुल, बताइए। ऐसी एक ही फिल्म है जिसका मुझे 2 बार डब करने का मौका मिला, और अच्छा। दोनों ही बार शानूर वाज अ पार्ट ऑफ इट। फिल्म का नाम था द नटी प्रोफेसर। पहली बार मैंने ब्रिजी के स्टूडियो में की थी, एंड आई वाज वेरी लकी कि both the times to dub for Eddie Murphy I had 2 fantastic artists with me. पहली बार दमन सिंह बग्गा था और दूसरी बार साहिल वैद। तो उसमें जो हमने इंडियनाइज्ड कॉमेडी डाली है, दैट वाज समथिंग लाइक मैं खुद अपना पेट पकड़ के एंड आई थिंक शानू, इफ यू रिमेंबर, शानू अगर तुझे याद हो तो खुद ऑनलाइन हमने क्या तमाशा किया था उसमें। लोग लौट गए थे नीचे पेट पकड़ के, इतना वो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट था। बाकी तो हमको जो भी कंटेंट मिलेगा हमको तो वही लिखना है, बट ये जो मिला 100% इसमें हमने मतलब आग लगा दी थी। शुमी, आप बताओ। आज की तारीख में अगर देखा जाए, अमर जी, हाँ, अभी जैसे ओटीटी का इतना ये बोलबाला है, तो अभी तो वो एक वो तहजीब का दायरा भी खत्म हो गया है। अभी तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल। अब उसमें एक अलग क्रिएटिविटी है, मतलब जो हमारी नॉर्मल अब्यूजेस हैं, तेरी माँ का, बहन का, ये सब तो बहुत कॉमन चीज हो गई। अब उसमें भी क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, गालियां क्रिएट करनी पड़ती हैं अब। तो इसमें ये लोकलाइज्ड, मतलब जो एमपी यूपी जो डायलेक्ट है, उसमें जैसे हम मराठी में भी काफी सारे भक्त हरामी नाही तर त्याला आणखी अबे भाड़े जा रे भाड़िया, यू नो, सो ये सारे शब्द यूज हो सकते हैं। तो ये एक अलग ही मजा रहा है, जो कस वर्ड्स जिन्हें पहले एकदम बाप रे, मतलब नहीं वो सब नहीं बोलना है हमें, तो उसे यू नो बहुत अच्छे ढंग से, तो अरे वहां पे तो वो सारी बी की गालियां दे रहा है, लेकिन आप वहां पे कुत्ते कमीने बस वहीं पे रुके हुए हैं। पर अभी बहुत कुछ ओपन
बिल्कुल वो बैरियर हट गया। शुमी, आप बताओ आपका जो सबसे बढ़िया जो यादगार रहा भाई कि ये अब तक का मेरा बेस्ट है। मैंने अभी जो एनकांतो फ़िल्म आई थी उसके लिए जब गाने लिखे थे, नॉर्मली हमारी फ्रेटर्निटी में लाइक द म्यूज़िक डायरेक्टर, द टीम, द डिज़्नी टीम और द नेटफ्लिक्स टीम, वहाँ से तो मुझे एप्रिसिएशन मिलता ही था गानों के लिए। बट दिस टाइम आई गॉट इट व्हेन आई वेंट टू यूट्यूब एंड आई सॉ द कमेंट्स कि नॉर्मली लिरिक्स राइटर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है कि अच्छा बहुत अच्छा लिखा गया है। नॉर्मली सिंगर्स को कहा जाता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो कमेंट्स में व्हेन आई सॉ दैट कि लिरिक्स को एप्रिशिएट किया गया है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली लव्ड हिंदी वर्जन्स ऑफ दोज सॉन्ग्स, सो आई फेल्ट वेरी नाइस कि नहीं दे फाइनल रिकॉग्निशन एंड फॉर इन ऑन इंस्टाग्राम आल्सो पीपल अप्रोच्ड मी कि आपने एनकांतो के गाने लिखे हैं, दे हैव टर्न्ड आउट वेरी, दे आर साउंडिंग वेरी नाइस एंड हाउ डू यू राइट इट एंड यू नो वी लव द सॉन्ग्स, ऑल these kind of reactions I've got for Encanto and for Stranger Things. And Stranger Things ka the best part Stranger is my Things. son is also a teenager now, so Yes. he is very excited to tell his friends that my mother is writing Stranger Things season 4 when I was writing the season 4. तो मतलब उसके फ्रेंड्स उससे पूछते थे कि ask her how is it. So my son also was felt proud कि बताने को कि अपने फ्रेंड्स को कि you know my mom is writing this, my mom is writing that. और अभी लाइल लाइल क्रोकोडाइल करके मैंने एक थिएटर रिलीज सोनी पिक्चर्स की, उसमें गाने और डायलॉग्स लिखे हैं। तो उसके गाने आदित्य नारायण ने गाए हैं, उदित नारायण जी वाह। के बेटे ने। तो उस तरह का रिकग्निशन उस प्रोजेक्ट को मिला है, उसका प्रमोशन हुआ है। तो इट फील्स नाइस व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद अ फिल्म लाइक दिस, जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसको मतलब बीइंग अ डब्ड लोकलाइज्ड वर्जन इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि उसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट किया गया। इंडियन आइडल पे प्रमोट किया गया था और कपिल शर्मा शो पर प्रमोट किया गया था एज अ प्रोजेक्ट। सो यू फील नाइस व्हेन यू हैव वर्कड फॉर सच प्रोजेक्ट्स। तो Recognized. अच्छा लगता है दैट हाँ। रिकग्निशन बियॉन्ड द इंडस्ट्री से तो मिलता ही है, लेकिन जब बाहर वालों से भी मिलता है तो यू फील कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड तो थोड़ा ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि अदरवाइज हाउ आई टोल्ड यू वही चलता है कि अच्छा इंग्लिश टू हिंदी ओके फाइन, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। जैसा एज अ वॉइस आर्टिस्ट मुझे पहले कहा जाता था कि अच्छा डबिंग करती हो, अच्छा 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 अच्छा, पर तुम दिखती नहीं हो, तुम तो एक्टर हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती, तुम्हें इसमें क्या बड़ा मजा आता है। तो अच्छा लेकिन अभी सिनेरियो इतना चेंज। अच्छा यूर अ वॉइस, मतलब परसों भी मुझे ऐसे फोन आया था, ये बड़ी अजीब। ऐसे आपको आते हैं क्या जैसे हम वॉइस आर्टिस्ट को आते हैं कि हेलो स्वाति, मेरी आवाज़ अच्छी है सब कहते हैं और मुझे वॉइसिंग करनी है, अभी ना मेरे पास फ्री टाइम है तो क्या मैं कर। अब भी परसों फोन आया था तो मैं उनसे वही सोचती हूँ उस वक्त की दिस इज अ वेरी सीरियस जॉब वी आर डूइंग। ये कोई ऐसे ही स्टूडियो में, क्योंकि हर दिन नया दिन होता है हर आर्टिस्ट के लिए, हर प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट होता है आपके लिए। तो क्या आपको भी ऐसे फोन आते हैं क्या एज अ राइटर शानूर? अरे मुझे यार तो मुझे दोनों थोड़ा दोनों में होता है। वॉइस राइटर का तो इतना नहीं वॉइसिंग है, के लिए तो वॉइसिंग आते में ही तो हैं। देखो मेरी आवाज पतली होती है फिर मोटी कर दो, मेरी आवाज मोटी होती है मैं भी कर सकता हूँ। उनको लगता है बस आवाज मोटी कर ली पतली कर ली तो हो गया। और बिल्कुल जैसे बिल्कुल डिस्कवरी बिल्कुल। में जब भी अनिल कपूर का आता है कोई शो तो मैं मिमिक्री करता हूँ अनिल कपूर की और उसको हाँ। इंग्लिश में डब करता हूँ। तो एक बार वो आ रहा था शो स्टार वर्सेस फूड, तो वो देखा उन्होंने और बहुत अच्छा लगा और मैंने ऐसे प्ले किया था वो लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मैंने किया, उनको लग रहा था अनिल कपूर ही बोल रहा है। हाँ पर उसके हाँ बाद हाँ। उनका सवाल था इसने क्यों नहीं किया खुद, आपने क्यों किया? तो वो समझ तो में नहीं वो आता लोगों को बुद्धि कि से दैट इज और योर। सबसे या राइट और सबसे जरूरी बात ना लोगों को ये काम बिल्कुल समझ में नहीं आता जो हम लोग करते हैं। उनको पता बिल्कुल नहीं है कि इसकी जरूरत क्या है। उनको लगता है हम लोग हिंदी डब कर रहे हैं ताकि जिस ओरिजिनल इंसान ने बनाया है प्रोजेक्ट ना उसका हम मजाक उड़ाएं, जो कि बिल्कुल नहीं है। हिंदी डब एग्जैक्टली। उनके लिए होता है जो कि इंग्लिश से इतने फेमिलियर नहीं है, इतने वर्ड्स को नहीं जानते हैं। जैसे जब भी कोई वर्ड्स होते हैं, कोई कोई भी मूवी हो, वॉर को जंग किया या कुछ कोई भी वॉर का को किया तो लोग बोलते हैं ये क्या कर दिया। वो आपके लिए नहीं किया, जिसको इंग्लिश आती है जिसको पता है वो उनके लिए नहीं है। हाँ वो एक हाँ हाँ। ऑडियंस है और वो बहुत ही वफादार लॉयल और बहुत बड़ी ऑडियंस है बिल्कुल हमारे बिल्कुल। देश के बीच में, जो कि जो कि उसको पसंद करती है।
तो लोग ये नहीं बिल्कुल। समझ पाते कि वो जो वर्ड उन्हें अटपटे लग रहे हैं ना हिंदी के, वो उनके लिए नहीं है क्योंकि उनको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, वो इंग्लिश वालों के बिल्कुल। लिए नहीं है, वो हिंदी वालों के लिए है। तो उन पे सवाल एग्जैक्टली। उठाना ऐसा है कि उनके इंटेलेक्ट पे सवाल उठाना कि यार ये तो क्या ऐसा क्या बोल रहे हैं, ये क्या वर्ड, इतना हिंदी कौन बात करता है, करते हैं लोग अभी भी जिनके लिए ये काम एग्जैक्टली। होता है। बिल्कुल शानूर, आपने बिल्कुल अभी सही कहा कि वो उसने आपसे पूछा कि वो अनिल कपूर ने खुद क्यों नहीं खुद किया, क्यों पर नहीं उसे ये नहीं पता कि ये आपकी क्रिएटिविटी है या आपने लिखा किया। है, राइट। यू नो। राइट। तो अमर जी, आपको ऐसे आते हैं फोन कि अरे आप इतना लिखते हो, जरा एक स्क्रिप्ट हमें भी दे दीजिए, हम भी लिखना जानते हैं, हम हिंदी राइटिंग जानते के लिए हैं, भी आते या हैं हम और वॉइसिंग के लिए भी आते हैं। वॉइसिंग के लिए तो आते ही हैं, माय बहुत गॉड, आते हैं, बहुत आते ही मैसेजेस आते हैं। हैं, सर आई एम सो एंड सो, ये मेरा वॉइस सैंपल है, मैंने ये किया है, मैंने फलाना किया है। मैं सीधा लिख देता, आई एम नॉट इनटू डबिंग एनी मोर, आई एम ओनली राइटिंग राइट नाउ। बोले सर मैं राइटर भी हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। ले। तो हाँ, अब मतलब आप कहाँ कहाँ अवॉइड करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल। कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा करके टालना पड़ता है और क्या करें, otherwise they don't leave me। कोई कोई ये नहीं समझता कि बहुत ही सीरियस काम होता है। हम Exactly। स्टूडियो में, मतलब ऐसे लगता है राइट। कि अच्छा डबिंग करने जा रहे हो, कितना 1 घंटे में आ जाओगे। अच्छा, वो 1 घंटे में हम क्या क्या कर रहे हैं, वो 1 घंटे के पीछे वो डबिंग डायरेक्टर काम कर रहा है, साउंड इंजीनियर काम कर रहा है, उससे पहले तो राइटर ने उस पर सारा बहुत कुछ काम करके काम रखा किया हुआ हुआ है, प्रोड्यूसर ने उसको वक्त दे रखा है कि इस टाइम बाउंड्री में आपको वो खत्म करना है। तो ये सारी चीजें एज अ वॉइस आर्टिस्ट भी हमारे दिमाग में होती है। तो राइट। जितना लगता है उतना आसान नहीं और है ना जैसा शुमी, इंग्लिश में क्या ना कभी आप? कभी, इंग्लिश में कभी कोई कुछ रेफरेंसेस होते हैं ना, उनको वैसे का वैसा नहीं रखा जा सकता, वो कई कई बार एक्सप्लिसिट होते हैं। थिएटर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सेंसर इंटरवीन जी करता है, क्योंकि जी हिंदी में जी। तो साला भी आप नहीं बोल सकते हैं, बाकी गाली हाँ, तो दूर की थिएटर बात है। थिएटर तो उसको जब, और कुछ थिएटर साइंटिफिक चीजें इंग्लिश। ना, जहां तक हॉलीवुड का सवाल है, वो लोग इतना लिबर्टी लेते हैं, जैसे मैं स्टार वॉर्स लिखता हूँ या हाँ जो भी साइंस फिक्शन वाली है, इतना लिबर्टी हाँ। लेते हैं कि अगर आपने उसकी 30 साल पुरानी पिक्चरें सारी नहीं देखी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब रेफरेंस। हम लिख रहे हैं, ये बिजनेस है, मूवी एक बिजनेस है, जो अगर फर्स्ट टाइम कोई थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट भी किसी मूवी का देख रहा है, तो उसको उसी पिक्चर को देख के समझ में आना चाहिए क्या हो गया। इसलिए हाँ। डायलॉग्स को अडेप्ट करना पड़ता है, टोटली चेंज करना पड़ता है, जो कि इंग्लिश से अलग है। कई बार लिटरल भी हम्म। रखते हैं, क्योंकि वो जो डायरेक्टर का एक रहता है, मीनिंग रहता है। जैसे सुसाइड स्क्वाड में एक हाँ, सबटाइटल था, तो वहां से एलए से मिलाया था कि इसको वैसे जैसा है वैसे ही रखो, क्योंकि उससे उनका कनेक्शन था काफी इयर्स का। जो कि फैंस बिल्कुल। होते हैं, डीसी के फैंस है, मार्वल्स के फैन है, वही हाँ समझते हैं। पर जो हाँ, देसी मार्वल के। आदमी देख रहा है ओहो। टिकट लेके हिंदी में, इंटीरियर्स में वगैरह, तो उसको तो पता नहीं है फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था या क्या होने वाला है। उसको हम्म। इसी पिक्चर में पूरा मजा चाहिए। तो उसको अगर हम चेंज बिल्कुल। नहीं करेंगे तो तो पता कैसे चलेगा बात उसे। नहीं बनेगी, बात राइट। नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। शुमी, आपको आते हैं ऐसे फोन कि एक स्क्रिप्ट इन हम भी ट्राई हाँ, करते हैं, लिखना आते आता हैं, है, मेरी हिंदी आते अच्छी हैं। है। हाँ, और आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट। मुझे मतलब मोना दी और सबने ये कहा है कि लेट्स मेक अ टीम, ट्राई मेकिंग अ टीम, सो दैट हाँ यू हाँ। यू ट्रेन सम राइटर्स अंडर यू एंड देन यू क्यूसी द करेक्ट। स्क्रिप्ट। एंड तो उस सिलसिले में मैंने किसी को स्क्रिप्ट का सैंपल दिया था लिखने के लिए। उन्होंने 2 हम्म। दिन बाद स्क्रिप्ट लिख कर दिया, और एकदम ही मतलब बच्चों वाला शो दिया था जस्ट टू बिगिन विथ, और उनको ब्रीफ भी किया था कि कैसे क्या लिखना है। और तो हम्म। मुझे जो स्क्रिप्ट आई, वो जब मैं देखने बैठी, तो मैंने बहुत ही वियर्ड ट्रांसलेशन था, एक तो ट्रांसलेशन था और वो भी बहुत ही वियर्ड। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि एक-एक वर्ड उन्होंने पूरा पैराग्राफ उठा के गूगल ट्रांसलेट पर डाला है और वो वाओ। उठा के लिख के दे दिया है। दैट इज़ हाउ द राइटर हैड और उनका कहना था कि हम मैं बहुत पोएम्स लिखती हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और ये हाँ, वो मैं बहुत अच्छा लिख लूँगी। तो दिस इज़ हाउ सीरियसली दे टेक इट, एंड दिस इज़ हाउ दे राइट व्हेन वी आस्क देम टू राइट अ डब्ड लोकलाइज्ड स्क्रिप्ट। लोकलाइज तो स्क्रिप्ट, मतलब बिल्कुल मेरी सही कहा। वो जो कोशिश है अभी तक मतलब नहीं कर पाई हूँ मैं, कि जितने भी लोगों को दिया है मैंने, आई कुडंट रियली फॉर्म अ टीम, कि बस कि कोई वो ऐसा हमारा ही मिल काम जाए बढ़ा देते जिससे हैं। मतलब एग्जैक्टली। हम्म। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मोना से ये भी कहना चाहूंगी, जैसे मोना ने कहा कि ऐसे वर्कशॉप्स होने ज़रूरी है, तो आई थिंक शी शुड सीरियसली, सारे स्टूडियोज को ये सीरियसली बात लेनी चाहिए कि राइटर्स के वर्कशॉप लें, क्योंकि उससे स्टूडियो टाइम, उससे आर्टिस्ट का टाइम बहुत 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 बचेगा। बहुत क्योंकि अगर बचेगा। जी। लिखा हुआ सही हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसे मतलब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल
आराम से सेल हो जाएगा, है ना? Right. और कभी ऐसे हुआ है शानूर कि जी आपने लिख दिया, स्क्रिप्ट चली गई और जी स्टूडियो से फोन आया कि हम्म कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसे कभी हुआ है? हम्म। हाँ हुआ है, कई बार राइट। हुआ है ऐसा। हाँ, तो आप पर उस वो सिचुएशन को कैसा हैंडल करते हैं? क्योंकि उस कई सारे सिचुएशन को मैं प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे। जी, हम्म। क्या होता है अक्सर ये जो मुझे कॉल्स आते हैं ना, वो उन उनसे आते हैं जिन्हों जो या तो उसको इतनी इज्जत नहीं दे रहे जो काम है। मतलब हम सीमेंट या पुट्टी नहीं भेज रहे स्टूडियो में जो आपने लांबी में लगाया और वो चिपक, भर दी। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो जो बिल्कुल। कुछ है जो मेहनत नहीं करते, कुछ है जो कि परफॉर्मेंस को ना समझ नहीं पाते। जैसे पॉजेस जो है मार्क किए हुए, एक तो हर किसी का ठहराव अलग अलग होता है, तो कभी कभी वो मैच नहीं होते। तो मैं अगर मेरे पास वक्त होता नहीं, अगर मेरे पास होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडियो जाके उसको सॉर्ट आउट कर दूं, या फोन पे समझा देता हूँ कि देखो ये फील है डायलॉग का, इस हिसाब से अगर हाँ, इसको बोला जाएगा तो आपसे ठीक ठीक वो बैठ जाएगा लाइन में। और दूसरा, ज्यादातर दिक्कत मेरे साथ ये आती है कि मैं देवनागरी में लिखता हूँ स्क्रिप्ट, क्योंकि वो मुझे बारी। इंग्लिश की स्पेलिंग हिंदी में आती नहीं है। तो कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो बिल्कुल। पढ़ ही नहीं पाते। अरे ज्यादातर जो अरे हम अरे, आजकल आजकल सेलेब्स और टीवी के जो एक्टर्स यूज करने लगे हैं, तो बहुत टाइम लग रहा है नहीं डबिंग नहीं में, नहीं, बोलते अरे क्या लिखा है तूने। तो मैं देखा नहीं एक नहीं, बार जाके क्या लिखा है मैंने, तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हिंदी वो में, हिंदी पढ़ देवनागरी नहीं पा में। रहे। हाँ, वो बिल्कुल। हिंदी पढ़ ही नहीं पाते। नवाजुद्दीन जी ने ये बात एक फिल्म को लेकर कही थी कि फिल्म हिंदी में बन रही है, मेरे हम्म। पास स्क्रिप्ट वो रोमन में फोनेटिक्स आई में है। आई है जो मेरी फोनेटिक्स कुछ में आई समझ है। पल्ले नहीं पड़ रही है, और जी। सारी जो आसपास लोग हैं वो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो मेरी हम्म। समझ में नहीं आ रहा है ये लोग हिंदी फिल्म क्यों बना रहे हैं। तो मुझे मुझे खुद को भी जो हमारी आर्ट फिल्म्स की या जो छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स आती हैं, वो सारी फोनेटिक्स में लिखी हुई होती है और उसे पढ़ने में इतनी तकलीफ, क्योंकि वो का की, क्योंकि के ई लिखा है, अभी वो के है या की है, ये समझना बहुत मुश्किल। मैं अपनी स्क्रिप्ट अभी भी खुद लिखने की कोशिश देवनागरी में लिखती हूँ। सो शानूर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आप हो जितना हो सके देवनागरी में आप आपकी जो लिपि है उसमें लिखे जी। तो पर एज यू से कि बहुत से आर्टिस्ट वो पढ़ नहीं पाते। हाँ, और मैंने नोटिस की देवनागरी में अगर आप स्क्रिप्ट भेज दो तो जो पहले क्यूसी होता है ना, वो हाँ, उसमें करेक्शन भी कम आती है, क्योंकि जो वहाँ होता है उसको उसको भी हिंदी पढ़नी नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो Guys, I'm शिवी enjoying क्या, this so much. I think everyone is enjoying this so much. I didn't दर्पण want इज to. हियर, हाय दर्पण। I I did not want to butt in, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसक्रिएशन और राइटिंग फॉर डब्ड कंटेंट को लेकर बड़े इट्स अ पिटी कि कभी किसी मंच पर बातें हुई नहीं हैं, जबकि बिल्कुल। इतनी बातों की ज़रूरत है। इतने आप लोग तजुर्बेकार लोग हैं जो ये काम करते हैं, और आज शायद हम सब की जो एक पेंट अप वो था कि वी वांट टू this craft to be spoken about. I think that is करेक्ट। erupting and which is so important. I hope कि एक बहुत। वक्त ऐसा आए जब बहुत रेगुलर बेसिस पर writing for dubbed content should become as integral a part of it is mind you, इट but it इज, should इट be इज। perceived. I think the time that should come is that people start perceiving writing for dubbed content to be as mainstream as speaking for dubbed content. And what is एब्सोल्युटली। amazing is मैं बहुत ध्यान से सारी बातें सुन रहा हूँ, और आई मस्ट अप्रिशिएट, देखिए आप में से कुछ तो हैं जो 20 25 30 साल से इस काम को कर रहे हैं, but someone like Shanur, obviously he's been a part of the industry for more than 2 decades now, but fairly young, or the kind of mature, यस। insights that he was giving. और अमर जी, उनका उनका जो तजुर्बे का जो भंडार है, फ्रॉम बिल्कुल। उसमें से जो एक नगेट्स ऑफ विजडम निकल रहे हैं, even Sumita, so amazing amazing things that you shared. स्पेशली मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सुमिता, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, विच आई टोटली अग्री, क्योंकि मैं वॉइस एक्टिंग, क्योंकि मैं तो प्राइमरीली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, पर ट्रेनिंग आपको आपके अंदर वो कॉम्प्रिहेंशन, जैसा आपने कहा, इफ़ यू डोंट हैव कॉम्प्रिहेंशन, इफ़ यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ लैंग्वेज, देन नो ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू। उसी तरह हम वॉइस एक्टिंग के लिए मैं हमेशा एब्सोल्युटली। कहता हूँ कि
आवाज अच्छी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी आवाजों को माइक के सामने धराशायी होते हुए देखा है, हर रोज देखता हूँ, बिल्कुल और ये हम सबके साथ होता है। जैसा स्वाति जी आपने कहा कि यार मेरे दोस्त कहते हैं अच्छी आवाज है, तो क्या मैं वॉइस बोलना ही तो है, इसमें क्या है, आवाज अच्छी है। और शानूर ने बहुत अच्छा कहा, आवाज मोटी कर ली, पतली कर ली, हो गया। इफ ओनली मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं ये देता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप कितने लोगों को जानते हो जिनको बोलने के पैसे मिलते हैं, वॉइस एक्टिंग के पैसे मिलते हैं। यूजुअली अगर मैं 100 लोगों की भीड़ में पूछूं तो एक बंदा भी ऐसा नहीं होता। एक बंदा होता है जिसके कोई दोस्त का भाई कोई रेडियो जॉकी होगा। तो मैं उनसे जी कहता हूँ कि अगर बोलना इतना ही आसान होता, वॉइस एक्टिंग, देन एवरी अदर पर्सन वुड बी डूइंग इट। Every third person is a doctor, every fourth person is a CA, every second person is a management graduate. But how many people can become voice actors? And I think हम जिस फोरम में हैं, ये फोरम हमारा है, ये कला हमारी है, बिल्कुल हमारा एक बहुत, हमें बहुत गुमान है इस बात पर कि बिल्कुल इतनी कॉम्प्लेक्स कला है वॉइस जी एक्टिंग। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10 एक सालों में ट्रांसक्रिएशन हैज एब्सोल्युटली लीप्स एंड changed बाउंड्स leaps and bounds from the time of चिपकली, जब हम डायनासोर को चिपकली, बड़ी मकड़ी या बड़ी चिपकली कहते थे, to today where you guys have literally transformed the entire the language, the entire grammar, the dynamics of content. मैं देख रहा था किसी ने कमेंट लिखा था कि अरे आप लोग इंग्लिश में चेंज क्यों कर देते इंग्लिश टू हिंदी। तो आई थिंक शानूर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत सटीक, बहुत ऑन पॉइंट, बहुत विजडम भरा जवाब दिया कि बिल्कुल अगर आपको इंग्लिश इतनी पसंद है तो आप इंग्लिश में देखिए ना, आपके लिए है ही नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका है, करोड़ों लोग हैं भाई, 150 करोड़ की आबादी है, करोड़ों लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं, जिनको एंजॉय करना है उसको हिंदी में देखेंगे, तमिल में देखेंगे, या जो भी है। तो बिल्कुल आई थिंक दैट इज वेरी 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 वाइज, एंड this is, I think it is just the beginning for content localization, and I think the time has come। जैसे आप लोग कह रहे थे कि वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, होंगी, कोर्सेज होने चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ साल 2 साल 3 साल की होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों में इतना अभी इतना दे हैव नॉट रियली पेशेंस बॉट नहीं इनटू दिस क्राफ्ट कि ये प्रोफेशन है। जैसा आप में से किसी ने कहा कि बहुत सीरियस काम है भाई, स्वाति जी बहुत सीरियस काम है, बहुत प्रोफेशन सीरियस है, बिजनेस है 24/7 ये फ्री टाइम। मुझसे कोई कहता है, मैं कहता हूँ मुझे 25 साल हो गए ये काम करते हुए, मुझे आज तक तो मुझे इस काम से फ्री टाइम मिला नहीं है। तो मुझे आज बिल्कुल तक इस काम से फ्री टाइम नहीं मिला है, पता नहीं आप किस फ्री टाइम में ये काम करना चाहते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, और आप लोग जो काम करते हैं, मुझे लगता है आप लोग का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि यू कैन एब्सोल्युटली चेंज द एक्सपीरियंस ऑफ अ वॉइस आर्टिस्ट इन द वॉइस या बूथ। यू कैन एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगता है, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, बट people think of the writer, unfortunate बात है, the artist usually thinks of the writer when something is wrong, when things are very fluid। जैसे वो कहते हैं ना, टेक्निक, जो कंपनी में टेक का बंदा होता है उसको कोई नहीं जानता जब तक कि आपका कंप्यूटर काम करना कंप्यूटर बंद नहीं खराब कर नहीं दे, होता। तब बोलते हो नहीं कि नहीं कौन नहीं है नहीं कम नहीं वक्त, उसको पकड़ के लाओ। और जब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, nobody thinks of you। नहीं नहीं दर्पण दर्पण आई डिफर हियर बिकॉज अच्छा, अच्छी स्क्रिप्ट जब आती है तब भी मुझे याद है मैं राइटर को फोन करके कहती हूँ एज जब मैं डब डायरेक्टर भी होती हूँ मैं पूछती हूँ किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट और मैं जरूर उनसे फोन करके बात कि बहुत मजा आया है ना वो जो एक्सपीरियंस होता है वो जो शब्द मिलते हैं एज एन आर्टिस्ट आई नो, बोलने के लिए नहीं नहीं, यू आर उसका एक राइट, मजा ऐसा होना बहुत ही अलग चाहिए। होता आई है जस्ट होप और कि अगर देयर वो आर ना मेनी बोले मोर तो पीपल लाइक मैं यू। और सुमिता सुमिता कई बार हम लोग एक दूसरे की कोई मूवी देखते हैं तो वो मुझे भेजती है यार ये डायलॉग तूने अच्छा लगा, मैं भी हाँ उसको भेजता हूँ यार ये हाँ बहुत कमाल का किया तूने, हम लोग एक दूसरे को वो कमी हम पूरी कर देते नहीं शानू, हैं। मुझे लगता है यही, दिस द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन instead of या competition, I think that is the true spirit that I'm really looking at us as an industry cultivating in times to come। एब्सोल्युटली क्योंकि आज तक एब्सोल्युटली हमारा हम एक बहुत बड़े क्रैब मेंटालिटी वाले दौर से गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह के मंच, ऐसा एक मंच है आज, ये बहुत बड़ा मंच हो गया। बड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि साइज में बड़ा हुआ है, बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि हम जैसे लोग इससे जुड़ रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना एक स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन आएगा। आज 4 लैंग्वेज ट्रांसक्रिएटर्स बैठ के अपने क्राफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस 4 शुड बिकम 400 इन टाइम्स टू कम। एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे मंच होने चाहिए, और हम सबको जब भी ऐसा कोई मंच हो, आई थिंक वी शुड ऑल एनकरेज एंड वी शुड ऑल टेक पार्ट इन इट, क्योंकि धीरे धीरे ही हवा बदलेगी।
आई अंडरस्टैंड हम में से बिल्कुल बहुत लोग सिनिकल हो गए हैं और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सैकड़ों लोगों के साथ जुड़ता हूँ इस मुहिम के जरिए। तो कई लोग हैं जो सिनिकल हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता यार इस इंडस्ट्री में, क्या है यार, ये सब छोड़ो यार, हम तो इतने टाइम से हमारा कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ यार, नहीं डोंट गिव अप, डोंट लीव होप। धीरे धीरे हवा बदलेगी। आज या इतने बड़े बड़े या दिग्गज हैं, हम हर साल कोशिश करते हैं उन स्टॉलवर्ड्स को हम रिकग्नाइज करें, हम उनको फेलिसिटेट करें, हम उनको सेलिब्रेट करें। और इस तरह से ही, चाहे वो यंग हो या जो 25 30 40 साल से हो। सो आई एम होपिंग कि इस तरह से ये जो हम कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। आई होप दैट इन टाइम्स टू कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप 4 लोगों को इसके बारे में बताएंगे, वो शायद और 4 लोगों को बताएंगे, और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। और आई थिंक दैट बिल्कुल वुड बी, इस डेफिनेटली। लाइफ टाइम में अगर हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी। बिल्कुल दर्पण होगा। Darpan, so I must say in just one line that hats off to ये जो मुहिम आपने शुरू की है, it is absolutely I'm speechless कि आपने इतना कुछ सोच के, आप शुगर मीडियाज, आपकी जो टीम है उनको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, हाउ क्योंकि स्वीट, इतना थैंक यू। अच्छा आपने काम कर रहे बहुत हैं। प्यार दिया है बिकॉज स्वाति ये जी, इतना हमेशा। बिखरा हुआ, हमारी बिखरी हुई इंडस्ट्री है, इन सबको साथ में ले आना, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हैं। एंड हाँ आई जी। रियली ब्लेस यू फॉर दिस। बस ये काम ये करते रहो। दिस लव इज व्हाट इज आवर फ्यूल। हम लोग पिछले 5 महीने से इस आई संस्करण के लिए ब्लेस यू लगे टू हुए हैं। दर्पण। तो आई सेड बस आई ब्लेस यू टू। how sweet. So यस यस these यस blessings, this love is the fuel, Amarjeet. This is it. This is all. I think this makes it all worth it. कभी कभी जब बहुत थक जाते हैं, और क्योंकि हम सब, ये हमारा काम नहीं है, दिस इज नॉट आवर बिजनेस। हम कोई इवेंट जी मैनेज करना हमारा काम नहीं है। हम एक प्रोडक्शन हाँ कंपनी है, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। मेरी टीम जो है, उनका एक डे जॉब है जो शुगर मीडियाज में काम करते हैं। ये हमारा काम नहीं है, पर हमने खुद को झोंक दिया है इसमें। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा एब्सोल्युटली था पहले दिन, मैंने कहा कमबख्त मैंने ड्रीम देखा, इसके चक्कर में सबकी, मेरे टीम में सबकी रातों की नींद उड़ाई है। तो बट उनको बड़ा अच्छा लगता है जब लोग उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। तो आई थिंक दैट इज बिल्कुल ऑल दैट मैटर्स, एंड इन द एंड इट इज लव इज एब्सोल्युटली ऑल दैट काउंट्स। सो थैंक यू ऑल फोर ऑफ यू, यस Thank यस थैंक यू you. फॉर Thank you जॉइनिंग थैंक्स so अस फॉर much टुडे। for हैविंग this अस। एंड थैंक opportunity. यू प्लीज थैंक आप यू सब लोग 11 थैंक यू तारीख को शानूर, बिल्कुल सुमी, आइएगा। अमर जी, थैंक यू थैंक सो यू Thank you, थैंक यू मच। थैंक Swati यू। Di. थैंक यू Thank you, सो मच। everybody. थैंक यू। It was 11th lovely. को I'm going to see you please on the 11th, Sure. and I'm looking forward to इंशाल्लाह। see all of you on the at the grand finale at Rang Sharda, 4 p.m. यस Try to reach a little earlier, and it'll be one beautiful evening, 4 p.m. to 8 p.m. followed by एब्सोल्युटली dinner. All of you are invited. Please join us, Thank you. and डेफिनेटली। let's थैंक थैंक यू। यू meet in Definitely. person. इस यस यस कंप्यूटर के की सरहद को लांघ कर हम मिलेंगे पार रूबरू। करके बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मिलते हैं थैंक नई यू स्क्रिप्टों के साथ। ओके Thank you. नई स्क्रिप्टों के साथ। यस यस शानूर बाय थैंक यू बाय। बाय बाय बाय। बाय। Oh my God, this was such an absolutely, ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे कहते हैं इस रात की सुबह नहीं, कभी लगता है इस शाम की रात ना हो। पर रात होने को है, और 10 बज रहा है, एंड इट हैज बीन सच अ वंडरफुल इवनिंग। आई थिंक वक्त बहुत हो गया, पर ये जो बातें हुई हैं, दिस इज गोइंग टू बी विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड इन टाइम्स टू कम पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस स्ट्रीम, एंड पीपल विल समवेयर bless all of us, that all of us came together, and हमने कोशिश की इन तजुर्बेकार लोगों को साथ लाकर इस कला के बारे में बातें करने की। मुझे ऐसा लगता है किसी भी कला, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, वॉइस एक्टिंग हो, आई थिंक हम जो तजुर्बेकार लोग हैं, उनको अपने तजुर्बे को शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। ये उनका फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, जो उभरते हुए कलाकार हैं, वो हमसे 4 बातें सीख पाएँ, हमारी सफलता को भी समझें, और हमारी असफलताओं से भी सीखें। तो आई थिंक हमारे संघर्ष और हमारी सफलता दोनों ही हमारा हिस्सा हैं, और इन दोनों हिस्सों को मिलाकर ही बनता हमारा किस्सा है। सो आज की शाम यहीं तक। कल, tomorrow is going to be day 4, and जाते जाते I am going to play the schedule for tomorrow. So tomorrow 6 p.m. log in to indiavoicefest.com, India Voice Fest का YouTube चैनल। सॉरी, थोड़ा सा थक गया हूँ, इसके लिए आई थिंक थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ। बट थैंक यू ऑल ऑफ यू जो अब तक जुड़े हुए हैं। आपको मेरा मतलब सादर प्रणाम है, और वो है साष्टांग प्रणाम है कि आप लोग अब तक जुड़े हुए हैं,
और अब जाइए, खाना वगैरह खाइए और सो जाइए, क्योंकि कल फिर से हमको जुड़ना है। तो कल शाम को फिर 6 बजे मुलाकात होगी ऑन द यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट। एंड जाते जाते आपको कल की एक झलक दिए जा रहा हूँ। टिल टुमारो, गुड नाइट। ये है इंडिया वॉइस फेस्ट 2022 और यहाँ पर आवाज़ें बहुत जल्द मिलने वाली हैं।